Hello everyone, I am Stutee Madam and I welcome you to Rayacademy IAS. So today's video is all going to be about space missions, especially space missions of ISRO, Indian Space Research Organization, right? So we all know Subhranshu Shukla just came back from the space, right? So obviously it is in news. Space is in news, was in news, and will always be in news. It is a part of our prelims under the science and technology part. So it is very important to know and understand everything about the space, right? Starting from what is orbit, what is a satellite, what are the missions that ISRO has done till yet, and what are the upcoming missions of ISRO. Everything needs to be studied, right? So we'll start with today's class, all important space missions of ISRO. So we'll be starting from very basics, like if a student who is not from the technological background and he is having trouble in understanding the technological parts, he or she can easily understand what I am going to teach today. Okay, so we'll be starting from very basic. What is orbit? What are the types of orbit, right? What is a satellite? Types of satellite. What are the types of launching vehicles? Directly jumping into the important missions of ISRO will not be beneficial for us. Please understand. We have to understand these basic terms that are involved to understand. Okay, when I will teach you all these things, you will realize how important is knowing all these things to actually understand this thing. Are you getting me? Okay, so a सब जिनस न जानिले we will be माने डिलेमा रहिबो आम भितरे कि ए सब वर्ड्स मैम कोन कहउचंदी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट माने कोन पोलर ऑर्बिट माने कोन सो कांसेप्ट क्लैरिटी तेबे आसीबो जेबे हमर फंडामेंटल स्ट्रांग थिबो जेबे हमर बेस स्ट्रांग थिबो राइट बेस ता सेबे स्ट्रांग हबो व्हेन वी स्टडी अबाउट द बेसिक थिंग्स हला तो स्पेस माने कोन तो ये बेसिक जिंस गुडा जानिले ही आमे इंपोर्टेंट मिशंस पूरा फटक से हमर मन रहि जिवो I hope I am loud and clear. Okay, chalo. So we'll be reading the basic things, then we'll jumping into the important missions. Ame jani cho what are the missions of ISRO important? Chandrayaan, Mangalyaan, Gaganyaan, Shukrayan, etc. So is ko kaun? We will be also dealing with that. All the important satellites of ISRO. What are the satellites that are placed in ISRO? So if you do not know what is a satellite mean, what does a satellite mean? If you do not know that, can you relate with what kind of satellite is present in space by ISRO? Right? So it is very important. Therefore, I said it is very important to understand all these things. Okay. Then we will be also doing the PYQs of OPSC as well as UPSC, especially those that has been asked from the space technology part. Okay, it can be any question, not only involving ISRO, but any and every question that has been asked from the space technology part in OPSC and UPSC will be dealing that here. Yeah, okay. So let us begin. This is our space. This is our solar system, right? We have been reading it from our childhood. There were 9 planets. Now there are how many planets? Now there are 8 planets. Now there are 8 planets. Okay, Pluto is out of the list now, right? So we only have now Mercury, Venus, Earth, Mars. Then we have Jupiter, Uranus, Neptune, Saturn is a book. And you can see some asteroid belts is also there, right? So in the center we have Sun, and all the planets are revolving around the Sun. Earth is also a part of this planet, and we are in the Earth now, right? Great. So you can see that every planet is following a particular path, isn't it? Is Mars going here, or is Saturn going out here? No. Every planet is following a particular path.
right? That particular path is known as your orbit. That particular path is known as your orbit. Okay, so what is an orbit? A orbit is a regular repeating path that one object in space takes around another one. Okay, orbit is nothing but a path. जो path गोटे रास्ता रे गोटे planet move होउची, planet हो any object that moves in a regular repeating path. Say path रे ही repeatedly movement करिबा, then say path ताको we term it as what? Orbit. Clear? Orbit is a regular repeating path that one object in a space takes around another one. Okay. An object is in an orbit is called a satellite. So orbit जान लो. Orbit है path. Say path रे किसी भी object जदी बुलिला ताको हमें term करिबा satellite. An object in an orbit is called a satellite. Very simple meaning. तो ଏବେ तमे clear satellite माने कौन? जोटा कि orbit रे बोलथबो. Okay. तो Earth is also satellite ना? Earth is also a satellite because it is revolving in a path. It is revolving in an orbit, right? Okay. So a satellite can be natural like our Earth and the Moon. Moon also revolves. Earth revolves around Sun. Moon revolves around Earth. Right? So these both are our natural satellites. Natural satellites. We made these satellites? Did we made Earth? No, no. So those are natural satellites. Then it can also be a man-made satellite. The satellites that we are making, satellites made by the man, are man-made satellites, such as International Space Station. So where did Subhanshu Shukla go? माने कोठी जाइथिला से जाइथिले से. Who was Subhanshu Shukla? I hope everybody must be knowing by now. So se कोठो को जाइथिले, space रे कोठो को जाइथिले. He went into the International Space Station. कोथिरे जाइथिले और कोथिरे आस्थिले. मते कमेंट के सेटा कहिबा तमे हला. I am not writing a hint तो देई भी देली. But कोथिरे जाइथिले and कोथिरे आसिले. कोठिको जाइथिले. He went to the International Space Station, which is in the space, and it is a satellite. International Space Station is a satellite. Therefore, मैं ISS भी कहूँ. Okay, this is not made by India. It is इधर बाहर. हला कोठू कौन and को vehicle रे Subhanshu Shukla went into the ISS. You answer me in the comment. Planets, comets, asteroids, ये सब हमारा orbit around the sun. Sun around रे बुलंते हमारे समझते, right? So this is our Earth. I hope you can see this. देखो, this is our Earth. This is our Earth, right? And these are some orbits. Okay, ये गुड़ा का orbits. ये गुड़ा का orbits. The path, regular continuous path, है ना? Regular repeating path को हमें orbit कहूँ तो इटा गुटा हमारा orbit. So ये orbit रे किछटा object move कले ताको हमें कहूँ satellite. Satellite कोठी revolve होती in the orbit. Orbit था around our Earth, है ना? Okay. So it केतरे terms लिखा है जी. Sun synchronous, elliptical, geosynchronous, है ना? Polar, equatorial, ये सब कौन हमें एबे पढ़ीबा in the next slide. देखो ता पूर्वरु आउ गटे जिंस हमको पढ़िया पड़िबो. बहुत टेक्निकल जिंस, छोटो जिंस, इजीली हमें बुझी जिबा. Orbital period माने कौन? Orbital period माने कौन? The orbital period is the amount of time a given astronomical object takes to complete one orbit around another object. गोटे राउंड मारिया को ताको केति की समय लागिबो हैला गोटे ऑब्जेक्ट को. That object, obviously if an object is moving around the orbit, we term it as
सैटेलाइट तो गोटे सैटेलाइट को गोटे राउंड मारिया को हेले गोटे कंप्लीट राउंड लाइक इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन अगेन इट विल बी बैक टू हियर राइट इस टोटल राउंड मारिया को ताको कितनी की टाइम दरकार ताको हमें कहू ऑर्बिटल पीरियड ओके ओके सो देखो एटा केमते हम बुझिबा एटा कोन हमर दिस इज आवर अर्थ एटा हला हमर अर्थ हला तो जनवरी रे we know earth revolves around the sun January 3 रे earth was here हला एमती गला हला March 20 रे earth was here then again June 21 रे earth was here July 4 रे earth was here and again back here in September 22 again December 21 and again back to the same position from where it started on January 3rd the next year right so ए गोटे टोटल ताको हमें कहिबा अर्थ रो ऑर्बिटल पीरियड great okay also you notice the distance सब to highest distance from the earth to sun the maximum distance of the earth to sun is this जोटा कि हमें July 4 रे देखिया को पाऊ हला and the minimum distance is just this जोटा हमें January 3 रे देखिया को पाऊ so the time taken by the earth to complete one revolution is its orbital period तो हमको कितने दिन लगे अर्थ रो ऑर्बिटल पीरियड कितने 365 days right January to January गोटे वर्ष we completed one round of the sun गोटे वर्ष हे जाय right so 1 year at 365 days is the orbital period of earth is a natural satellite सेमती अन्य जो मैनमेड सैटेलाइट थिबो से मानको केते टाइम दरकार पड़े गोटे रिवोल्यूशन लगिया को ताको कहा जीवो ऑर्बिटल पीरियड क्लियर ओके अच्छा सेमती देखो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ वेरियस प्लैनेट्स जति कि भी हमर प्लैनेट्स अछि समस्तंगर ऑर्बिटल पीरियड देखो as we have already discussed earth ro orbital period hela 365 days right and mercury ro hochi 88 days only venus ro 225 days mars ro 687 days and jupiter ro orbital period is 11.9 years Saturn ro 29.5 years Uranus ro 84 years and Neptune ro 165 years बुझि परछ सो जत्ते प्लैनेट्स हमरो दूर दूर को जाउछंती ऑब्वियसली टिके दूर को पळेले सन ठो ना तो तांको राउंड मारिया को एबे बहुत टाइम लागिबो तो जेहेतु ये नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट हला तो ताको लागि जाय 165 इयर्स टू गुड सन रो गोटे चक्कर लगेया को ताको लागि जाय 165 इयर्स इंटरेस्टिंग ओके ताको कुहा जाय ऑर्बिटल पीरियड जोटा कि अर्थ रो 365 days as we all know okay so we discussed about orbit any regular repeating path is called as orbit what are the types of orbit बुझिबा बहुत important why as I said मु तुमको कहिबी like एटा गोटे होची ए सैटेलाइट ता ओनली पोलर ऑर्बिट को ही जाय परिबो जदि तुम जान नथिबो व्हाट इज अ पोलर ऑर्बिट कैन यू रिलेट कि एक्चुअली माने कोन से सैटेलाइट दार काम कोन पोलर ऑर्बिट माने कोन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेति पे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हमको पढिबा भी निहाती दरकार ओके सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट polar orbit or sun synchronous orbit transfer orbits and geostationary transfer orbit हला सो देखो फर्स्ट एटा हमें देखिबा लो अर्थ ऑर्बिट लो अर्थ माने कोन एटा बाय एल्टीट्यूड माने बाय हाइट हला सो बाय हाइट रे जदि हमें देखिबा अर्थ रो किते हाइट रे गोटे ऑर्बिट अछि बहुत पाख माने अर्थ बेसी दूर रे नहीं फॉर एग्जांपल अप टू 2000 किलोमीटर भीतर रेंज रे अछि हला गोटे ऑर्बिट देन ताको हमें कहबा लो अर्थ ऑर्बिट माने बेसी दूर रे नहीं अर्थ टू हला लो लेवल रे अछि लो एल्टीट्यूड रे अछि लो हाइट रे अछि फ्रॉम अर्थ रो से ऑर्बिट रो डिस्टेंस ता बहुत कम अछि
सो सेटा हि जिवो हमरो लो अर्थ ऑर्बिट हला बहुत सैटेलाइट्स हमरो लो अर्थ ऑर्बिट रे ही रुहंती बेसी ऊपर को जांती नहीं आ टिके ऊपर को जदी हमें जिबा देन विल बी रीचिंग अप टू मीडियम अर्थ ऑर्बिट हला actually it is not 10,000 kilometer medium earth orbit amaro 35,800 kilometer पाखापाखी रहे हैला up to sea level जाए 35,000 kilometer earth ru दूर जाए जदी गोटे ऑर्बिट रहिला that will be medium earth orbit हैला ताठ ऊपर गला 35,800 किलोमीटर हे गले सेटा हे जिबा हमरो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैला तो अर्थ रु केते दूर देखि परछ अर्थ रु केते दूर एटा अर्थ रु दूर हला एतिकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट एटा अर्थ रु दूर हला एतिकी लो अर्थ ऑर्बिट हला लो अर्थ ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट माने देखिबो से बहुत दूर रे अर्थ रु केते दूर रे अराउंड 35,800 किलोमीटर दूर रे ए ऑर्बिट ता लाई करे हला देन व्हाट इज पोलर ऑर्बिट What is polar orbit? देखो this is the equator एटा हमरो अर्थ इक्वेटर तो इक्वेटर सहित पैरेलली जो ऑर्बिट बुले इक्वेटर सहित जदी पैरेलली ऑर्बिट मोर बुले ताको कहा जाय जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बट तार परपेंडिकुलरली जदी गोटे ऑर्बिट बुले इक्वेटर रो परपेंडिकुलर ऑर्बिट दिस इज आवर इक्वेटर हला तो ता सहित जदी गोटे ऑर्बिट परपेंडिकुलरली बुले ताको हमें कहू पोलर ऑर्बिट ओके तो गोटे हला हमरो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट व्हिच रन्स पैरेलली विथ द इक्वेटर आ गोटे हला 90 डिग्री टू द इक्वेटर इज आवर पोलर ऑर्बिट तो नॉर्थ पोल साउथ पोल केमती ऊपर तळ को थाए तो पोलर ऑर्बिट भी हमरो समिति बोले व्हिच इज 90 डिग्री टू द इक्वेटर now you are clear about polar orbit and geostationary orbit okay चलो low earth orbit low distance रे low altitude रे earth to high medium earth orbit geostationary orbit हला आउरी भी केतना स्लाइड अछि देखो so here you have geostationary orbit and geosynchronous orbit हला geostationary orbit हमें पढ़िलु if this is our equator then equator रो parallelly टा move होची so this is geostationary orbit but जदी जने कहे geosynchronous orbit ता माने कोन ता माने से गोटे किछि एंगल रे बोलुची polar orbit तो 90 डिग्री रहिला but ता मझा मझी जदी किछि ऑर्बिट रहिला polar orbit आउ geostationary orbit मझी रे जदी किछि ऑर्बिट रहिला that will be termed as geosynchronous orbit हला तो किछि एंगल रहिला ना हला एटा हमर एंगल केते यू कैन से इक्वेटर सहित आर एंगल कोन 0 डिग्री हला एटा किछि गोटे एंगल तार रहउची फॉर एग्जांपल सेटा तो किछि एंगल रे जदी मूव होची दैट इज ए geosynchronous orbit please remember geostationary orbit is also a form of geosynchronous orbit jahar angle of inclination is 0 degree geostationary orbit ro angle of inclination is 0 degree but it is also a type of geosynchronous orbit only किछ अलगा नो हला चलो next one of the important thing is Lagrange point but आउट जिंस दीटा important terms हमको मन रखिया को पड़ेबो गोटे इमेज देखैथिली एठी देखो एटा हला एठी देखियो दीटा वर्ड लिखा अछि पेरिहेलियन आउ एफेलियन पेरिहेलियन आउ एफेलियन so मते कहि परिबो the farthest point of earth from the sun is termed as aphelion the farthest point eta farthest point namaro July 4 रे हमको देखियो को मिले so the farthest point रो ना अछि aphelion आउ nearest point is perihelion ए छोटो जिंसटा हमको मन रखिया को पड़िबो हला ओके
Now coming to the Lagrange points. देखो, Lagrange points are 5 locations where gravitational pulls from the earth, moon and sun cancel each other out. ହେଲା कौन हे पारे देखो मन कर गोटे आम सैटेलाइट पठेलु कौन हम केमिति तमे ग्यारंटी दे परिबो कि से सैटेलाइट ता हमर सेठी रहिबो. It can be anything, any satellite that we are sending हैला सेटा जो लोकेशन को हमें पठौजु से लोकेशन रे ही रहिबो बिले हम केमिति ग्यारंटी दे परिबा. How can we guarantee that? देखो कहीं ग्यारंटी दे परिबानी दीटा जिनस दीटा फोर्स मन रखिबो. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउ ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हैला. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु जो सैटेलाइट हमें पठेबा सन रो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु तार चांसेस अछि से ताको ठेली दबो एंड इट विल कम बैक जोडू से जाइथिला. ग्रेविटेशनल भी अछि, सन रो भी ग्रेविटी अछि, अर्थ रो भी ग्रेविटी अछि. तो ग्रेविटेशनल पुल जोगु मनगर हम एठी पठेलो गोटे जिंस तो ग्रेविटेशनल पुल जोगु अर्थ ताको टाणी के रखिबो एंड से ता जगह को ता डिजायर्ड लोकेशन को जाई परिबोनी. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु भी जाई परिबोनी रही परिबोनी गोटे जगह रे, ग्रेविटेशनल फोर्स जोगु भी रही परिबोनी. बट जदी हमें से दीटा जिंस बैलेंस कर दलु ग्रेविटेशनल फोर्स आउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हे गला हैला इक्वली बैलेंस हे गला कि दे कैंसिल आउट ईच अदर देन से केस रे हमर बॉडीटा सेठी स्टैग्नेंट रहइबो, static रहइबो. the body the satellite that we are sending will not move. तो एमिति किछटा पॉइंट्स हमको बाहर करिया को पड़िबो जोठी ए सब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल आउट हे जिवे एंड हमर बॉडीटा सेठी स्टैग्नेंट रहि परिबो. से पॉइंट्स को कहा जाय Lagrange points. Lagrange points are 5 लोकेशन, 5टा लोकेशन ऑलरेडी अछि. Lagrange जे एरा डेवलप करथिले इन्वेंट करथिले तांको ना हला Lagrange, सेति पे तांको ना रे दिया हे जी Lagrange points हैला. तो an object located at any of these points, 5टा पॉइंट्स अछि हैला. तो any of these points से जदि हमें गोटे ऑब्जेक्ट को लोकेट करिबा then it will remain in the same location relative to the earth. It will remain same location relative to the earth even as the earth moon system and the satellite itself revolve around the sun हैला. आउट के डीपली जिनसला बुझिबा. एठी देखो मु जहा कहली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु से जदि हम किछ गोटे जिंस पठेबा से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु हमको बाहर को पके दबो. सन रो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु हमें टुवर्ड्स आउटसाइड हम से पठेबा मु से सेठी रहिबा को दबनी हैला. ग्रेविटेशनल सन रो ग्रेविटेशनल पुल जोगु एठी देखो सन रो ग्रेविटेशनल पुल जोगु भी से तळ को खसी जाय परिबो हैला. अर्थ रो ग्रेविटेशनल पुल जोगु भी से तळ को खसी जाय परिबो हैला. तो जदी मु एठी कोठी उठे रखिली एठी कोठी उठे मु मोर सैटेलाइट टा को प्लेस करली तो से चांसेस अछि से एठी खसी जाय परिबो, से याड आसी जाय परिबो, से याड आसी जाय परिबो, से याड आसी जाय परिबो हैला. तो हमको गोटे एमिति पॉइंट्स किछटा बाहर करियर अछि जोठी हमर किछ मूवमेंट होबनी एंड दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज योर Lagrange पॉइंट हैला. एगुडा को हला हमर Lagrange पॉइंट, एगुडा को हला Lagrange पॉइंट. दिस इज एठी देखो एटा हला हमर अर्थ बाय द वे एटा हला अर्थ हैला. तापरे एटा हला Lagrange पॉइंट 1 जाको हम L1 कहू. दिस इज L2. सो अर्थ इज इन बिटवीन L1 एंड L2. L1 L2 हैला. देन 3 4 5 कोटा हमरो एटा हला 3 4 5 हैला. 3 4 5 L5 L4 L3. तो L1 L2 आदित्य L1 सुनी थिबो
व्हाट इज दैट L1 माने L1 Lagrange पॉइंट रे सेटा जीवो कि अछि व्हाटएवर तो एटा हला किछटा पॉइंट जोठी से किछ मूवमेंट करबनी सेति पय त ना है कि पार्किंग स्पेसेस ऑफ द स्पेस Lagrange पॉइंट्स को हमें कहू पार्किंग स्पेसेस ऑफ द स्पेस बिकॉज़ सेति किछ मूवमेंट होएनी हला पूरा फिक्स्ड ना से याडे होबो ना से याडे आसीबो ना याडे आसीबो ना याडे आसीबो एगोडा को पूरा फ्लैट सरफेस दिस आर ऑलरेडी प्रूव्ड हला तो एठी L1 L2 ए सब जगह रे ही हमर स्पेस स्टेशंस गुडा को बना जाय सो दैट से माने से जगह रे ही रहिबे अदरवाइज से कोड के से पळाइबे हला बिकॉज़ ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर Lagrange पॉइंट्स अच्छा सो सैटेलाइट आमे पढिलु कि एनी माने गोटे ऑर्बिट रे जदी किछि ऑब्जेक्ट बुलिला तकु आमे कोन कहबा सैटेलाइट राइट sorry so a satellite is a body that orbits around another body in space hala the prakar satellite as we have already discussed there can be natural satellite there can be man made satellite natural satellite ko guda ko earth and moon naturally they revolve in their own orbits the earth rotates around the sun and the moon rotates around the earth man made satellite is a machine obviously that is made by the man launched into the space and orbits around a body in space man made satellite ro kichita example hela amaro Hubble space telescope Hubble space telescope hela eta मन रखिबो Hubble space telescope and international space station एगुडा कोन एगुडा को सैटेलाइट man made satellites that are present in the space which are sent by us right तो टेलीस्कोप माने कोन बुझिचो टेलीस्कोप माने से स्पेस टा को ऑब्जर्व करेबे पूरा क्लियरली आमे एटू जो टेलीस्कोप देखुछु आमे कोन पूरा स्पेस टा को देखि दउछु क्लियरली नाही ना आमे देखुनु राइट आमे देखुनु तो सेमिति एते क्लियर देखा जीवनी ना तो पूरा क्लियर इमेजेस पाई किछटा टेलीस्कोप हमरो अछि जेम्स वेब टेलीस्कोप अछि हबल स्पेस टेलीस्कोप अछि हला तो ए टेलीस्कोप गुडा को स्पेस रे अछि कोउट ऑर्बिट रे से माने अछंती को ऑर्बिट रे दैट विल बी डिस्कसिंग हला तो कोउट ऑर्बिट रे से माने अछंती से ऑर्बिट से माने स्पेस टा को ऑब्जर्व करछंती हबल स्पेस टेलीस्कोप काहे की इंपोर्टेंट बिकॉज़ ओपीएससी दी थरा क्वेश्चन पचारछि रिपीटेडली रिपीट करछि क्वेश्चन रिलेटेड टू हबल टेलीस्कोप हैला तो सेटा हमें देखिबा से क्वेश्चन टा भी देखिबा सो ये सब गुडा का हमर कोन सैटेलाइट्स हैला सो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देयर कैन बी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट देयर कैन बी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट एंड सर्वे करिया पे जो सैटेलाइट ताको हमें को रिकॉग्नाइजेशन सैटेलाइट हैला तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट माने Hubble telescope these satellites are used for observation of distant stars and other objects space रे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार को हमको ऑब्जर्व करियार अछि then we use this telescope हैला then communication satellite हमें फोन रे कथा होछि how can we easily communicate because of the satellites ना सैटेलाइट न हले हमें मोबाइल नथु एंड हमें क्लास देखि परिबने जो माने ऑनलाइन देखु छ राइट so everything is possible because of the satellites 70 earth observation satellite astronomical satellite almost same but eta kono focus rahila हमरो earth observation माने earth ऊपर केमिति हमरो agriculture water resource हला urban development होउची तो एई सबरो डाटा कलेक्शन पे एई सबरो डाटा meteorological डाटा हम कलेक्ट करू के पानी बागो केमिति रहबो so everything is due to the satellite right then you have reconnaissance satellite which is also called as spy satellite हमें ताको कहू spy satellite भी कहू deployed for military or intelligent applications हला बहुत प्रकार satellites we send into the space for different purposes
right? Okay. Acha dekho, this was the question that was asked in OPSC in 2019. Also in 2016, same question was repeated. Dekho, instrument used to observe changes in a solar system. Very easy actually. जो माने टिके हुए हमें जानवे हमें हबल टेलीस्कोप पढ़ेलु ना तो हमें जानिलु. अदरवाइज भी तमे माने गुडे कॉमन सेंस हमें लगे परिबा. माइक्रोस्कोप रे देखि परिबो कि सोलर सिस्टम रे चेंज देखियार अछि. माइक्रोस्कोप रे देखि परिबो नाही. तो जदि माइक्रोस्कोप रे देखि परिबोनी ए दिरा तो कटि गला. बीएनसी अछि ना ए दिरा तो कटि गला. सी जदि नाही तो एटा भी नाही. एंड बाकी रहला तमर इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप एंड हबल टेलीस्कोप. इलेक्ट्रॉन रे तमे स्पेस इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप रे तमे स्पेस रे देखि परिबो कोन चेंजेस होची नाही. राइट. सो एटा भी कैंसिल आउट. सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ हबल टेलीस्कोप. सेम क्वेश्चन रिपीटेडली पचारा जायतिला हला. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज हबल टेलीस्कोप. ओके चलो नेक्स्ट देखो एगुड़ा को हला हमर रॉकेट्स के लॉन्चर्स हमको सैटेलाइट पठेबार अछि. हमें केमिति पठेबा सेटा देखिथिबा तमने कि पीएसएलवी रे पठाला जीएसएलवी रे पठाला. तो इन डिटेल हमको पढ़िया को पड़िबो पीएसएलवी कोन जीएसएलवी कोन ए सब डिटेल रे जदि न पढ़िबा हम केन जानिबा. राइट. सो स्टार्टिंग हेथिला एसएलवी रो हला. एटा थिला हमर फर्स्ट जनरेशन. एएसएलवी सेकंड जनरेशन. पीएसएलवी जोटा में मोस्टली यूज करछो एटा हला हमर थर्ड जनरेशन. जीएसएलवी होची पीएसएलवी रो एडवांस्ड वर्जन हला. तापरे अगेन जीएसएलवी MK2 अछि जीएसएलवी MK3 अछि हला. तो एसएलवी टा कोन हमरो मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट में हला. तो देखिबो बहुत छोटियाटे एटा हमें लो अर्थ ऑर्बिट को पठे परिबा. एएसएलवी तापर आसिला ऑगमेंटेड व्हीकल सेटा हमरो सेटा भी लो अर्थ ऑर्बिट रे हला. देन कमिंग टू योर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एएसएलवी रो बड़ भाई हला. तो सेटा तमे देखि पारथुबो दैट यू कैन सेंड इनटू पोलर ऑर्बिट. आको हमें पोलर ऑर्बिट रे पठे परिबा. आउ जेतु त ना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल त नाटा होची पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो दैट मींस वी कैन सेंड इट टू पोलर ऑर्बिट. वी हैव डिस्कस्ड पोलर ऑर्बिट माने कोन हला 90 डिग्री टू द इक्वेटर जो ऑर्बिट मूव करे दैट इज पोलर ऑर्बिट हला. तो पीएसएलवी टा हमें पोलर ऑर्बिट को पठे परिबो. आल्सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टा को भी पठे परिबो हला. एंड जीएसएलवी भी आसले तमरा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पढ़ाइथिला. तो सही ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को पठेबा को हेले वी कैन गो फॉर जीएसएलवी MK2. तापर आसले जीएसएलवी MK3 हला. तो एथरे हमें एटा भी हमें जीएसओ को पठे परिबा माने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को पठे परिबा हला. तो मोस्टली तमे जानि थिबो मोस्टली हमर ए दिटा जिंस यूज वे पीएसएलवी जीएसएलवी MK2 जीएसएलवी MK3 ए दिटा एते वर्तमान नाही. राइट. अच्छा आउटे जिंस देखो किए केते की लोड नै परिबो. आगुरो कोन होतला जो एसएलवी गुडा को थिला 40 केजी एटा 40 केजी नै परथला एटा 150 केजी नै परथला. तो जो पेलोड जो हमें जहाँ पठेबा स्पेस को सैटेलाइट हो किछि भी हो तो से तारो ओजन टा केते से ओनली 40 केजी नै परिबो. ये ओनली 150 केजी नै परिबो. ये ओनली केते 1860 केजी पर्यंत नहीं परिबो. आ जीएसएलवी MK2 टा 2200 केजी जाय नहीं परिबो. एटा हमरो 4000 केजी जाय नहीं परिबो. 4000 केजी जाय मार्क 3 MK3 जीएसएलवी MK3 4000 केजी रो पेलोड निज संगे नहीं परिबो टू द स्पेस हैला. दैट इज व्हाई दैट इज इंपोर्टेंट. कैन यू टेल मी नाउ कैन यू टेल मी हमरो चंद्रयान 1 को लॉन्चिंग व्हीकल ला में पठैथिलु एंड चंद्रयान 2 को लॉन्चिंग व्हीकल ला में पठैथिलु. भाबो जदी जानि जे संगे संगे कमेंट रे करो हैला. चलो सो पीएसएलवी रो फुल फॉर्म कोन
polar satellite launch vehicle कौन polar satellite launch vehicle right. It is the third generation launch vehicle. First generation कौन first generation कोड थिला we have discussed SLV, second generation ASLV, third generation PSLV, fourth generation GSLV है तो PSLV third generation launch vehicle and it is the first Indian launch vehicle to be equipped with liquid stages. Please remember liquid stages. So either we can go for solid stage or we can go for liquid stage. है तो PSLV हमरो इंडिया रो first launch vehicle थिला which was equipped with liquid stages after its first successful launch in October 1994 है तो एटा मन रखिया को पड़िबो PSLV रो first launch हमें केबे करथिलु October 1994 and as we have discussed third generation vehicle four stage launch vehicle चारिटा stage आरो if you can see here एटा हला stage 4 हला एटा हला stage 1 एटा हला stage 2 just a second एटा लिखे दबा एटा हला stage 1 एटा हला stage 2 एटा हला stage 3 एटा हला stage 4 तो टोटल चारिटा stage रे PSLV बनावे हला सो सेटा पे हमको मे बी मन रखिया को पड़ी पारे वी डू नॉट नो क्वेश्चन केमती आसीबो स्टेटमेंट बेस्ड रे आसीबो जेतोला हम क्वेश्चन डिस्कस करबा यू विल गेट टू नो दैट राइट तो स्टेटमेंट बेस्ड जानले हमको पूरा डिटेल न जानले हमें एलिमिनेट करि परिबानी राइट तो इट इज अ फोर स्टेज लॉन्च्ड व्हीकल हला लिक्विड स्टेजेस यूज होची large solid rocket motor forming the first stage रे solid rocket motor अछि second stage रे liquid अछि हला earth storable liquid अछि third stage रे again solid rocket अछि और fourth stage रे we have a liquid stage हला तो चारिटा stage रे हमरो PSLV ता बनावे तो this is PSLV C35 PSLV C35 को व्हीकल माने को सैटेलाइट को हमरो नै की जायथिला मते कमेंट रे कहो C35 स्पेशली हला so this was all about polar satellite launch vehicle and as we have already discussed polar low earth orbit को जाय परियो polar orbit को भी जाय परियो polar orbit माने 90 degree to the equator always remember that okay some more important points कोन केते पेलोड नहीं परिबो we have already discussed right about 2000 से नहीं परिबो 16 केते थिला एटा ए लिखिथिले मु 1860 पर्यंत से पेलोड नहीं परिबो हला तो 1680 केजी जदि तमरा किछि वेट अछि पठेबार अछि देन सेटा तमे पठे परिबो थ्रू PSLV दिस इज स्टेज 1 एटा हला स्टेज 1 ए पोर्शन तो देखुचो इट इज स्टेज 1 जो लोअर पोर्शन का देखि परथु स्टेज 1 हैला आल्सो STSC श्रीहरिकोटा एटा कोन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रे अछि सेटु ही ऑलमोस्ट सब लॉन्चेस हमर हुए हैला सो चंद्रयान 1 मंगलयान एस्ट्रोसैट आदित्य L1 ए चारि मिशन रे हमरो PSLV काम आछि तो PSLV यूज करी कि हमें चारटा मिशन करैतिलु कोन कोन चंद्रयान 1 नॉट 2 ओनली चंद्रयान 1 मंगलयान एस्ट्रोसैट और आदित्य L1 तो इंडिया रो फर्स्ट लूनर प्रोब लूनर माने मून मिशन हैला ओके लूनर माने मून सो फर्स्ट मून मिशन हमर कोटा चंद्रयान 1 was it successful or unsuccessful? It was unsuccessful. So it was first lunar probe mission, India's first interplanetary mission Mangalyaan. Interplanetary माने आमे आउ गोटे प्लैनेट को स्टडी करिया में पठेइथिलु एंड आमे सक्सेसफुल हेइथिलु
इंडिया प्रथम थर पठेइथिला एंड प्रथम थर रे ही से सक्सेसफुल हेइथिला बहुत कम बजेट रे हेइथिला दैट वाज मंगलयान मूवी भी अछि मंगलयान ताकू हमें आ गोटे ना रे भी कहू मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन और ताकू हमें कहू मॉम MOM है तो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो MOM हो मंगलयान हो दैट वाज एवरी माने से नेम ता गोटे माने मिशन ता गोटे थिला कि हमें मार्स को स्टडी करिया पे गोटे सैटेलाइट पठेइथिलु हला थ्रू कहा द्वारा GSLV रु ही हमें मार्स मिशन सक्सेसफुल हेथिला okay so it was India's first interplanetary mission India's first space observatory astrosat स्पेस ऑब्जर्वेटरी काम कोन स्पेस रो को ऑब्जर्व करबो तो इंडिया रो फर्स्ट कोटा एस्ट्रोसैट सेटा भी PSLV रु ही लॉन्च हेथिला एंड इंडिया's फर्स्ट सोलर मिशन सोलर यानी सन तो फर्स्ट सोलर मिशन हला आदित्य L1 चंद्रयान 1 तो मून मिशन सोलर मिशन मंगलयान एवरीथिंग हमें PSLV रु ही करथिलु हला क्लियर ओके एटा होछि किछटा तमे देखि परथबो इवन वी हैव डिस्कस्ड कि मैक्सिमम 1680 पर्यंत पेलोड नहीं पारिबो तो PSLV CA रे हमें अप टू एति की पेलोड नहीं पारथिबो तार किछि स्ट्रैप ऑन मोटर्स न थाए PSLV DL जो वर्जन अछि सेतरे दीटा स्ट्रैप ऑन मोटर्स थाए आ एति की केजी रो पेलोड हमें नहीं की जाय परिबा एथरे PSLV QL रे चारटा स्ट्रैप ऑन मोटर्स थाए PSLV XL रे 6टा मोटर्स थाए आ एथरे हमें अप टू एति की पेलोड नहीं परिबा हैला सो दिस एटा एते टेक्निकल हमको जानिबा दरकार नै बट टिके आईडिया तमर थाउ हैला तो एटा देखि परथबो दिस इज PSLV हिंदी रे लिखा अछि एंड एठी लिखा अछि C50 सेटा थिला C25 जोटा मु तुमको क्वेश्चन पचेरथिली एंड कमेंट रे मते आंसर कहइबो C25 PSLV C25 रे को सैटेलाइट हम लॉन्च करथिलु हैला चलो सो एटा देखथबो जो अलग अलग स्टेजेस हमें डिस्कशन करथिले अलग अलग स्टेजेस पड़ गला एटा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 हैला तो एटा हला स्टेज 1 हैला ए फिगर ता देखिबो एटा सबडु तळो हमरो फिगर माने PSLV रो लोअर पोर्शन ता स्टेज 1 देन वी हैव दिस इज स्टेज 2 हैला आ एटा हला तमरो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 पूरा अपर पोर्शन जोटा रहला हैला स्टेज 3 एंड स्टेज 4 क्लियर तो एमिति बना जाय हमरो PSLV ओके ना कमिंग टू द GSLV PSLV तो थिला तो हमें GSLV पाको को कोन में आसिलु PSLV थिला तो हमें GSLV पाको कोन में आसिलु PSLV जदि थिला तो हमें GSLV पाको कोन में आसिलु जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दीटा ऑर्बिट हमें पढ़थिलु पोलर ऑर्बिट आउ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट हैला तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट रे जति मते जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को मते जति किछि व्हीकल माने सैटेलाइट पठेबार अछि देन PSLV मे भी कामरे न आसी पारे सो वी वांट फॉर GSLV PSLV रो हायर वर्जन PSLV was third generation GSLV was माने GSLV is a fourth generation launch vehicle हैला PSLV was fourth stage राइट हम डिस्कशन करलु फिगर रे भी देखिलु कि चारटा स्टेज GSLV is a 3 stage vehicle with 4 liquid strap-ons हैला
सो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट रे पठिया रही सेति पे ता नाटा भी पढिला सेमती जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK2 अछि MK3 अछि हैला इट इज द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इंडिया तो जदी क्वेश्चन आसे व्हिच इज द लार्जेस्ट लॉन्चिंग व्हीकल इट्स ऑलवेज GSLV माने लार्जेस्ट कोन पे बिकॉज़ से बहुत ओजनिया जिंस गुडा को नै परिबो PSLV 1680 kg जाय नै परिबो GSLV ताठो अधिक ओजन नै परिबो अप टू केते अप टू 4000 kg अप टू 4000 kg स्पेशली MK3 टा 4000 kg पर्यंत नहीं परिबो पेलोड दैट इज व्हाई बहुत हेवी सैटेलाइट्स माने भी हमें अबे पठे परिबा विद द हेल्प ऑफ GSLV ओके फोर्थ जनरेशन व्हीकल 3 स्टेज व्हीकल इंडिजिनसली डेवलप्ड माने इंडिया ही डेवलप करछि ऑब्वियसली क्रायोजेनिक अपर स्टेज क्रायोजेनिक माने कोन क्रायोजेनिक माने हला लो टेम्परेचर हला स्पेस रे टेम्परेचर बहुत हाई था माने गोटे जिनस हम पठेबा तो जोडा सेठी रहिबो से जिनस रो टेम्परेचर टिके लो रहबा दरकार हला तो लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक फर्स्ट टाइम हमें बनैथिलु इट वाज इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज व्हिच इज फ्लाइट प्रूवन फॉर्म्स द थर्ड स्टेज ऑफ GSLV MK2 हला तीनटा स्टेज रे बनाबे जो थर्ड स्टेज यानी कि जो अपर स्टेज ता हमरा क्रायोजेनिक तो सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक तीनटा स्टेज हे परिबो it was only cryogenic and baki kono will see hala GSLV MK3 was chosen to launch Chandrayaan 2 spacecraft Chandrayaan 1 ta PSLV Chandrayaan 2 GSLV MK3 not 2 please remember GSLV MK3 was chosen to launch Chandrayaan 2 okay chalo so this is the figure of your GSLV and it is also from Sriharikota so sabu launches amara Sriharikota ru pray hoy okay and sabu testing जो missile testing pray sabu Chandipur रे हुए but satellite launching sabu Sriharikota रे हुए हला इंडिया रो GSLV the geosynchronous satellite launch vehicle project was initiated in 1990 हैला it was initiated in 1990 PSLV के बेइतला 1994 सो सेटा भी तमको मन रखे पड़िबो ऑब्जेक्टिव कोन थिला objective of acquiring an Indian launch capability for geosynchronous orbit रे ଗୋଟେ satellite जीवो तार ना कोन geosynchronous satellites को पठेया पे इंडियन माने उद्यम करथिले टू डेवलप GSLV which were successful हैला तो हमें again आत्मनिर्भर भारत we were not dependent कि रशिया हमको दबो किछि तार व्हीकल जो व्हीकल रे हमें हमरो सैटेलाइट को लॉन्च करि परिबा to the geosynchronous orbit no we made our own GSLV for it हैला जो GSLV uses major components which are already proven in the PSLV रे जो component हिथिला GSLV रे भी से गुडा को माने यूज हे छि in the form of एटा not needed solid rocket booster and liquid fuel विकास इंजन रो ना हला विकास आ विषय भी हम इन डिटेल पढिबा नेक्स्ट स्लाइड्स रे सो विकास इंजन यूज हे छि जोटा कि हमरो GSLV रे यूज हे छि ड्यू टू द थ्रस्ट रिक्वायर्ड फॉर इंजेक्टिंग द सैटेलाइट इन ए geostationary transfer orbit हला geostationary geostationary transfer orbit माने कोन geostationary transfer orbit माने कोन geostationary orbit बुझिलो हला आउट एमती थाए केमते बुझेबी स्पेस नहीं मते बुझे पे ओके ठीक अछि इन बुझे दवा हला तो देखो एटा हला हमरो geosynchronous orbit हला फॉर एग्जांपल दिस इज योर geosynchronous orbit डायरेक्टली तो हमरो सैटेलाइट सेटो जाई परिबोनी हमको किछि गोटे आ गोटे ऑर्बिट को ताको पठिया को पड़िबो जे तुमको ट्रांसफर करिवो ताको से सैटेलाइट ताको टू द geosynchronous orbit हला एटा जदी GSO
देन आउ गोटे ऑर्बिट हमको यूज करिया पड़िबो जार हाइट बेसी दूर नथिबो जीएसओ टा हमर बहुत दूर रे थाए 35700 किलोमीटर ताठू 200 किलोमीटर कम बेसी नहीं ताठू 200 किलोमीटर कम आउ गोटे ऑर्बिट को हम सैटेलाइट पठेबा जाको हमें कहू जीटीओ तो सी कौन करे तार काम है जस्ट टू ट्रांसफर द सैटेलाइट टू द जीएसओ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है तो ताको हमें कहबा यो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड जदि एंगल दिया है जियो स्टैटिक और जियो स्टेशनरी is a type of geosynchronous as I have already said खाली geostationary रा angle of inclination 0 geosynchronous रा किसी उटे angle of inclination थिबो तो geostationary हो geosynchronous हो both are same only angle of inclination नगर अलगा आउ सेठ को पठेया पे गोटे ट्रांसफर ऑर्बिट हम यूज करू ताको कहै छै geostationary transfer orbit and due to the thrust required for injecting the satellite in a GTO the third stage was to be powered by a cryogenic engine है तो solid booster liquid engine आउ cryogenic engine तीनटा जिंस यूज हेते GSLV रे solid booster liquid engine और cryogenic यूज हेतले कि PSLV रे नहीं so now you are clear PSLV GSLV भितर हमने डिफरेंस टा बुझी गलु okay also which at time India did not possess or had the technology to know how to build one cryogenic engine केमती बना जाए आम पाखरे किछि नॉलेज नथिला still we had built this okay so it is also a great achievement building GSLV was a great achievement for India PSLV तो अच्छी but GSLV भी चामे बनैलु बहुत अधिका heavy weight रो सामान नबा पई satellite नबा पई to the space was a remarkable achievement of ISRO okay GSLV rockets using the Russian cryogenic stage are designated as the GSLV Mark 1 while versions using the cryogenic upper stage are designated as Mark 2 है ना तो Mark 1 रे we only use माने हमें Russian रो cryogenic stage use करू तांको सहित पे हमर गोटे डील हेतिला तो GSLV Mark 1 रशिया रो cryogenic यूज हेतिला बट Mark 2 रे हमें जो अपर स्टेज ता cryogenic यूज करथिलो it was indigenously made by India and ISRO only all GSLV launches have been conducted from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota so you do not have to remember this because obviously sabu as I said sabu launches हमरो Sriharikota ru ही हेथाय okay chalo so now that you have studied about PSLV and GSLV so can you answer this question it was asked in UPSC 2018 PSLV launched the satellite useful for earth resources monitoring whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites PSLV माने खाली अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग पे यूजफुल हे पारंती PSLV जो लॉन्च करे सैटेलाइट मानको आ GSLV खास एथि पे डिजाइन हे कि से कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लॉन्च करि परिबो नेक्स्ट स्टेटमेंट हला satellites launched by PSLV appear to be remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on earth third question है GSLV is a 4-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stages using the liquid rocket engines now ए तीनटा statement भितरु कोटा ठीक कोटा भूल comment रे please reply करिवो okay देखिए किए ठीक आंसर दे पारछ अदरवाइज जदि करि पारनो प्लीज रिवाइंड करी कि प्रीवियस पोर्शन टा देखि दबो अदरवाइज आई विल आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस आउट के परे किछटा अलगा स्लाइड्स रे ओके चलो अच्छा गोटे जिंस देखो एठी मन रखिबो PSLV कोन थिला PSLV थिला हमरो 4 स्टेज हैला GSLV केते स्टेज थिला 3 स्टेज
PSLV 4 स्टेज रे कौन थिला सॉलिड लिक्विड हैला whereas GSLV रे हमर थिला सॉलिड लिक्विड आउ क्रायोजेनिक right and GSLV is the heaviest of all this जितकी भी ओजोनिया सैटेलाइट्स थिबो सब किए नै कि जाई परिबो स्पेस को GSLV हैला एति हमें पढी थिलु बट एबे रिसेंटली आउट न्यूज़ आसथिला कि इसरो is building its heaviest rocket which is LMLV PSLV GSLV आउट से वर्तमान बनौछि LMLV रो फुल फॉर्म हैला lunar एठी लिखा हिथिबो ए आर्टिकल टा पढी दब हैला lunar module launch vehicle हैला lunar module launch vehicle so after PSLV GSLV now LMLV जोटा की heaviest rocket वर्तमान इसरो बनौछि बनेनी ए पर्यंत and it is expected to come in the market by 2035 हैला so it is expected to be ready by 2035 तो आ रिगार्डिंग किछरे जिंस हमको मन रखे को पड़िबो जेमति कि एटा केते दूर जाय परिबो ना GSLV हमें देखिथिलु ए फिगर रे भी तमे देखिथिबो GSLV तार ओजन केते एंड बेसिकली से हमरो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट को सैटेलाइट नै कि जाय क्लियर नाउ LMLV कथा जदि हमें देखिबा प्लीज रिमेंबर इट कैन कैरी अप टू 80 टन्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट lunar module launch vehicle it can carry up to 80 tons to the low earth orbit और moon को से कितने नहीं परिबो 27 tons to the moon now if something we are designing के से satellite गुड़ा को से moon को नहीं परिबो so that means we are more focused upon the Chandrayaan missions or moon रो missions ऊपर हमरो एटा focus करिके बना जाई छी राइट जेमिति कि फ्यूचर रे हमरो प्लान अछि by 2040 we are going to be the we are going to send human to moon okay amaro first plan human mission plan hai ki achi to the moon by 2040 so a LMLV will be helpful to take our satellites to the moon also we have also planned ki amaro gote bharatiya अंतरिक्ष स्टेशन सेटअप हबार करिवार प्लान अछि स्पेस रे हला वर्तमान अछि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वी हैव प्लान्ड कि हमर इसरो रो इंडिजिनस BAS माने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमें स्पेस रे सेटअप करिवु तो से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सेटअप करला ले बहुत सारा जिंस हमको एठु नबा को पड़िबो स्पेस को बहुत हेवी जिंस भी नबा को पड़ी पारे तो सेति पे हमको GSLV टू बी हेवियर आउट के माने GSLV रो बड़ भाई दरकार व्हिच इज LMLV okay so LMLV is developed or is in the developing phase of ISRO and which is expected to be ready by 2035 and ए फिगर देखो छ it is आरो हाइट ता देखो गोटे 40 स्टोरीड बिल्डिंग रो जति की हाइट LMLV रो हाइट सेति की हबा को जाउची हला बहुत लंबा so it will dwarf out the GSLV माने GSLV ता सामने रे बहुत छोटो लागिबो तो टिल नाउ वी हैव सबुटु बडो आम पाखे रॉकेट अछि GSLV ताठु भी बडो रॉकेट वर्तमान बना होची सो इट विल ड्वार्फ इसरोस करंट हेवीएस्ट रॉकेट LVM3 which is nothing but the GSLV 3 okay तो एटा मन रखिबा खास करिकि इट कैन कैरी 80 टन्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट हमें पढ़थिलु कि 400 किलोमीटर पर्यंत खास करिकि लो अर्थ ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा को कहबो पढ़ी आछे बे नाउ लो अर्थ ऑर्बिट को ये नहीं परिबो केते 80 टन्स which is very huge but जदि मून को नबार अछि किछि सैटेलाइट then maximum 27 tons it can take to the moon also जदि हमें देखिबा मु कहली तुमको PSLV 4 stage GSLV 3 stage LMLV is going to be a 3 stage design तीनटा स्टेज रे कोन रहइबो सॉलिड रहिबनी हैला PSLV रे सॉलिड थिला GSLV रे भी सॉलिड थिला बट एथिरे ओनली लिक्विड प्रोपेलेंट्स रहिबो फर्स्ट दीटा स्टेज रे थर्ड स्टेज रे हमर रहिबो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोजेनिक माने लो टेंपरेचर
है तो गोटे जिनस जदि क्रायोजेनिक इट इज नॉट ए प्रोपेलेंट खास करके बट आम कहीपर इट इज ए स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज रे कौन हुए कि आम फ्रोजेन फॉर्म अति लो टेम्परेचर माने कौन फ्रोजेन फॉर्म रे आम फ्यूएल पठेबा जोटा कि परे हमको सेठी दरकार पड़ले वी कैन ऑक्सीडाइज इट है किंतु ये जो फ्रोजेन फॉर्म रे पठेबा तो हमको कौन जगह टिके कम मिलबनी कि गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रो पानी अच्छी लिक्विड फॉर्म रे से पानी तमे फ्रोज कर दबो तो स्पेस हमर कमी जीवो वॉल्यूम कमी जीवो तो जी अधिका स्पेस रे हम आउ किछि जिंस पठे परिबा बुझि पालो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्रायोजेनिक कि सी एते जगह ऑक्युपाई करबनी और ता जगह जो खाली जगह रहला सेथरा हम आउ किछि जिंस पठे परिबा आउ केतरा पेलोड पठे परिबा दैट इज द मेन एम ऑफ यूजिंग क्रायोजेनिक हेलो सो एठी थर्ड स्टेज रे क्रायोजेनिक यूज हेछि फर्स्ट दीटा स्टेज रे लिक्विड प्रोपेलेंट यूज हबो कोथरे एलएमएलवी कथा हमें वर्तमान डिस्कशन करूछु क्लियर चलो सो मेन पर्पस कोन टू सपोर्ट फ्यूचर लूनर मिशंस हैला तो मून पय जत्ते कि मिशन ताको सपोर्ट करियो सेति पे नाटा भी सेमती लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल हैला including human landing on the moon by 2040 next is to carry heavy spacecraft obviously which will be required for भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो कि आउ किछि भी मिशन पई हो जोथि हमको हेवी स्पेसक्राफ्ट नबा को पड़ी पारे नाउ दिस इज आल्सो बी गगनयान विषय भी हम पढ़िबा ए वीडियो रे ही तमे देखिबो गगनयान विषय हमें पढ़िबा जोथि कि human beings will be going into the space and that is by that mission is also by ISRO but Gaganyaan तो एबे ही हे जिवो हला ना एटा रेडी होबा को 2035 लागिवो सेतोले हम पाखरे आहुरी बहुत सारा मिशंस थेबो तो ता पय एटा बहुत हेल्पफुल हबो ओके एंड as I said essential for deploying modules भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जेतोले हम सेटअप करिबा गोटे घर बनैला लकु इटा दरकार हमको बाली दरकार गोडी दरकार बहुत सारा जिंस दरकार तो से सब पई हमको कोन बहुत हेवी हेवी इन व्हीकल्स हम यूज करूछु हमरो जिंस गुडा पानिया पे ला लोडिंग अनलोडिंग पे तो सेमिति जेतोला हमें स्पेस रे गोटे जिंस बनेवा पे प्लान करिए तो हमको बहुत सारा जिंस स्पेस को नबा को पड़िबो तो ता पे दिस एलएमएलवी will be helpful okay so please remember this now that you have understood what is LMLV can you answer this it is ISRO's heaviest rocket under development yes it is correct vartaman under development achi designed to carry up to 80 tons to the low earth orbit it is also correct 80 tons up to low earth orbit aw moon ku kete ton nei paribo 27 tons to the moon हैला its design include 3 stages एति पर्यंत तो ठीक कि तीनटा स्टेज तो अच्छी but it is all powered by cryogenic propellants that is wrong हैला first दीटा स्टेज रे हमरो अच्छी liquid third stage रे अच्छी cryogenic हैला first दीटा रे अच्छी liquid third रे अच्छी cryogenic so this statement is wrong so only one is the correct answer okay chalo now you have to understand the difference between कि मु बारंबार कहूची कि PSLV solid use कला फिर liquid use कला फिर solid use करची फिर liquid use करची GSLV solid liquid cryogenic use करिवो LMLV दीटा liquid then cryogenic use करिवो so what is the difference between all these three हैला तो केमिति काम करंती सब देखो सॉलिड फ्यूल रे गोटे फिगर तमे देखि परछो एंड लिक्विड फ्यूल रे गोटे फिगर देखि परछो सॉलिड फ्यूल रे कोन होची सॉलिड फ्यूल आ ऑक्सीडाइजर मिसी के अछंती गोटे जिंस गोटे पाखरे गोटे जगह रे मिसी के अछंती लिक्विड रे जदि हमें देखिबा लिक्विड फ्यूल रे ऑक्सीडाइजर अलगा अछि आ तमरो फ्यूल लिक्विड फॉर्म रे फ्यूल अलगा अछि एठी फ्यूल ता को फॉर्म रे अछि सॉलिड फॉर्म रे एठी फ्यूल ता को फॉर्म रे अछि लिक्विड फॉर्म रे हैला नाउ ए फ्यूल आ ऑक्सीडाइजर सेपरेट हेके अछंती कंबशन चैम्बर रे से माने मिक्स हेबे मिक्स हला परे कोन फॉर्म करिवे कंबशन हबो कंबशन जगु हमरो यू नो थ्रस्ट डेवलप हबो and due to this thrust this rocket will move upwards same with this
सॉलिड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर अछंती से माने कंबशन चैम्बर रे आसीकी ऑक्सीडाइज हेबे कंबशन हबो देन एठी तमरो थ्रस्ट जनरेट हबो एंड ड्यू टू जनरेशन ऑफ थ्रस्ट द रॉकेट विल बी पुश्ड अपवर्ड्स हैला तो एठी तमे देखि परथबो ऑक्सीडाइजर काम कोन जो ऑक्सीडाइजर काम हला कि सी ऑक्सीजन दबो कंबशन करिया पे तो कंबशन में हमको ऑक्सीजन दरकार बट जेतोल हमें स्पेस को पळेबा सेठी ऑक्सीजन हमको इजीली अवेलेबल मिलिबनी सेथि पे ऑक्सीडाइजर हमरो पठा हुए फ्यूल सहित लिक्विड फ्यूल हो कि किंबा सॉलिड फ्यूल हो ऑक्सीडाइजर पठा जाय बिकॉज़ स्पेस रे हमरो ऑक्सीजन रो अभाव थाए तो ये ऑक्सीडाइजर से फ्यूल सहित मिसिला परे कंबशन हबो कंबशन परे थ्रस्ट जनरेट हबो एंड एठू से रॉकेट टाको ऊपर को ठेलिबो ना एठी तमे देखिथबो किछटा एठी स्पार्क काइंड ऑफ जनरेट हबो सॉलिड फ्यूल रे गोटे स्पार्क जनरेट हबो एंड यू आर सीइंग दिस एरो व्हिच इज पुशिंग डाउनवर्ड्स तो एठू स्पार्क हैला परे तळ आडू को से स्पार्क टा इग्नाइट हे आसीबो एंड फाइनली एठी तमरो कंबशन हबो एंड एठी गोटे बहुत हेवी प्रेशर डाउनवर्ड्स को आसीबो व्हिच इज नो नथिंग बट द थ्रस्ट हैला ए थ्रस्ट एते जो निया बाहर देखु तो जतले हमरो सैटेलाइट गुडा को लॉन्च हुए निया बाहर धुआं बाहर किछि देखा जायनी से थ्रस्ट जनरेट हुए निया बाहर एंड से प्रेशर जो यू नो रॉकेट मूव्स अपवर्ड ओके दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर सॉलिड फ्यूल एंड जेतु से सॉलिड फॉर्म रे अछि सो इट इज इजियर टू स्टोर राइट इजियर टू मेंटेन एंड इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एज वेल liquid form रे it is also easier and quicker to develop but storage आरो टिके असुविधा हबो liquid केते बेले कोन हबो माने कोठी तमरा कोना हे गला देन बहुत रिस्की जिंसटा राइट बाहरी पड़िबो कोठू कि काहा सत कोन मेसेज जीवो बहुत सारा जिंस हेवी भी हे जाय जेते बेले हम लिक्विड यूज करू गोटे जिंस ओदा थिला बेले केमते लागे गोटे जिंस ड्राई थिला बेले केते ओजन थाए जानि परथबो तुम कपड़ा जेते बेले तुम धुओ धोइला पर तार ओजन टिके बढ़ी जाए ना तो लिक्विड जति हमें पठेबा टिके ओजन भी बढ़ी जाए से केस रे तो सॉलिड टा टिके ओजन कम थाए हैला किंतु लिक्विड रो भी बहुत सारा बेनिफिट्स भी अछि हैला एमति नो कि वी हैव ओनली कॉन्स ऑफ लिक्विड एंड आरो खाली प्रोस अछि दी जंकर प्रो सब कॉन्स अछि एंड दैट डिपेंड्स कि को सिचुएशन रे हमें को सैटेलाइट यूज करिवे नाउ एलएमएलवी रे हमें सॉलिड टोटली यूज करूनु वी आर ओनली यूजिंग लिक्विड हैला दीटा फर्स्ट स्टेज रे हम लिक्विड यूज करछु बुझपल तो एठी दीटा टैंक रे अलगा अलगा फ्यूल ऑक्सीडाइजर थिबे देन विथ द हेल्प ऑफ पंप्स दे कम इनटू द कंबशन चैम्बर आ एठी टिके टाइम लगे हैला जेतले हम सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करबा एठी तमे पढो ए पॉइंट फ्यूल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर रेडी फॉर इमीडिएट लॉन्च but एठी कोन हुए launch preparation can take hours as fueling is needed before use हैला तो एटा टिके टाइम एठी लागि जाय बट सेटा जल्दी हे जाय okay so this is the difference between the solid fueled engine and the liquid fueled engine now I hope you are clear okay and cryogenic रे कोन हुए as I said frozen form रे में fuel टा को पठाओ okay low temperature cryogenic माने low temperature मन रखिबो now can you answer this do you know the name of India's first satellite India रो प्रथम satellite कोटा थिला satellite पढिलो satellite हमें कहा को कहबा orbit कहा को कहबा तो India रो first satellite कोटा कमेंट रे को ओके चलो वेरी गुड आर्यभट्ट ओके आर्यभट्ट जोटे हमर फेमस मैथमेटिशियन थिले आर्यभट्ट तांको ना रे हमर फर्स्ट सैटेलाइट बना जायथिला आर्यभट्ट नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर की है आर्यभट्ट it was completely designed and fabricated in India but it was launched by ए सोवियत यूनियंस रॉकेट हैला सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट यूज करा जायतिला ताको लॉन्च करिया पे बट तार सब पार्ट्स गुडा को इंडिजिनियसली दे वर मेड इन इंडिया
बट लॉन्च करिया पे आम पाखे सेतबेले लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज नथिला तो सेदी पे लॉन्च पे वी यूज्ड सोवियत कॉस्मिस रॉकेट एंड कोठु लॉन्च करा जायथिला कापुस्तीन यार व्हिच इज अगेन ए मिलिटरी आर्मी बेस ऑफ सोवियत यूनियन कापुस्तीन यार रो आर्यभट्ट 1 लॉन्च हेथिला केबे on April 19 1975 है ना so this is the image of the आर्यभट्ट सैटेलाइट so एठी तमे देखि परथबो कि तार मिशन लाइफ थिला almost 17 years okay and तार launch mass ता थिला 360 kg it was an experimental satellite ISRO was the manufacturer okay now after आर्यभट्ट हमरा आसी गले भास्कर 1 and भास्कर 2 so soon after आर्यभट्ट 2 experimental remote sensing satellites went into space Bhaskar 1 in 1979 and Bhaskar 2 in 1981 तो आर्यभट्ट रु हमर स्टार्ट हैला गोटे पर गोटे हमें सैटेलाइट बनया को स्टार्ट करलु आर्यभट्ट बनैलु तापर भास्कर 1 भास्कर 2 this spacecrafts laid the foundation for Indian remote sensing satellite system हैला a series of earth observation spacecraft built by ISRO तो एठु स्टार्ट हैला तमरो remote sensing satellite system एठु स्टार्ट हैला then we have the INSAT series सुनिथिबो INSAT है ना INSAT which is nothing but the Indian National Satellite System तो 1981 रे another Indian spacecraft was launched okay तो एठी तमे देखिलो 1981 रे भास्कर 2 लॉन्च हैला तो तापरे आ गोटे इंडियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हैला which was an experimental communication satellite called APPLE Aryan Passenger Payload Experiment so Indian spacecraft was launched but ताको Aryan रो ना दिया गला Aryan ता हमर इसरो रो नुह तो मन रखिबो इनसैट रो जति के आई थिंक 2000 आई डोंट रिमेंबर 2016 रो पूर्व रो जति के भी इनसैट रो hundreds of INSAT satellites we have sent into the space हैला तो आगुरु जति की भी हमें INSAT पठौथुलु सेथरे कहार न कहार गोटे कंट्रीब्यूशन नथिला पूरा इंडिजिनियसली इंडिया बिल्ड करना थिला कि इंडिया रु लॉन्च हे नथिला सेमति थिला हैला मिक्स एंड मैच थिला 2016 परे हमें हमर निजरो INSAT बनेबा स्टार्ट कोलु लॉन्च कोलु जोटा तमे बे पढुथबो नाविक सिस्टम अछि हैला ए सब इंडिया रो wholly they are of India but ए गुडा को जो गुडा पढुछ तमे these are all properly माने प्योरली इंडियन हमें कहि परिबानी जेमति कि एप्पल हे गला 1981 रे हला जेटा एप्पल हेल्प्ड इंस्पायर द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम ए सीरीज ऑफ मल्टीपर्पस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स मल्टीपर्पस इनसैट ता मन रखिबो इनसैट रो को गोटे पर्पस नथिला तार बहुत काम थिला हैला कम्युनिकेशन भी देखिबो तापरे गोटे ऑलरेडी खराब हे कि पड़छि सैटेलाइट तमे ताको आनियार अछि कि ताको रिपेयर करियार अछि से काम भी इनसैट सैटेलाइट करिवो तो एटा गोटे मल्टीपर्पस सैटेलाइट हैला बहुत काम रे लागुथला सेति पे बहुत गुडे सैटेलाइट्स इनसैट सैटेलाइट्स एंड दे आर एम टू मीट द टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग मेट्रोलॉजी एंड सर्च एंड रेस्क्यू नीड्स ऑफ इंडिया हैला तो ई गुडा को तारो फंक्शंस गोटे इनसैट सैटेलाइट रो एते गुडाय फंक्शन टेलीकम्युनिकेशन रे भी तारो काम रही छी ब्रॉडकास्टिंग रे भी तारो एम रही छी मेट्रोलॉजी सर्च एंड रेस्क्यू एज आई सेड के कोठी फसी गला ताको रेस्क्यू करिया भी या फिर कोटे सैटेलाइट खराब हे गला ताको नै कि आनिया पे ए सब काम करे कि इनसैट सीरीज although the first few INSATs were built by Ford Aerospace in the US जेमति में कहले पुरना जति कि भी US माने INSAT गुडा को थिला US बनै थिला कि रशिया बनै थिला starting with the INSAT 2 series all satellite have been indigenously made more recently तमे देखिथिबो as I said नाविक आउ तमरो IRNSS जोटा हमें वर्तमान पढुछु Indian Regional Navigation Satellite System that is पूरा indigenous India ही बनै छी India launch करे सब करे हैला तो एटा हमरो most recent satellite mission or we can say NAVIC जोटा mainly हमरो navigation with Indian constellation एटा भी wholly India रो projects but INSAT तारो initial phase रे we took help of many countries to build to launch INSAT satellites now we have our own systems IRNSS and NAVIC system
Okay, chalo. Next, one of the most famous mission of ISRO, most renowned, most famous, आउ जितकी भी माने कोन वर्ड्स तमे यूज करि परिबो, सिनोनिम्स यूज करि परिबो, हाइलाइटर थिला, मूवी भी हेची, which is the Mangalyaan mission, which is also known as the Mars Orbiter mission. Hela. So Mars Orbiter mission मैंने obviously you know it कि इटा हमें मार्स को पठे थिलु बेसी बेसी तमे कौन जानथि हो मंगलयान केबे लॉन्च हेथिला हला कैन यू टेल मी को व्हीकल यूज हेथिला मंगलयान को लॉन्च करिया पे दैट आल्सो यू नीड टू नो कौन कौन पेलोड्स जाई पठाई थिला मंगलयान सहित केतेटा पेलोड्स पठाई जाइथिला से पेलोड्स रो काम कौन मंगलयान मिशन रो हमें हमर ऑब्जेक्टिव कौन थिला एंड फाइनली हमें कौन कौन अचीव करि पारिलु ये सब जिनस हमको टिके जानिया को पड़िबो डिटेल रे व्हेन यू आर डीलिंग विथ स्पेस टेक्नोलॉजी इट इज द और इट वाज द फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन हैला इंटरप्लानेटरी मिशन माने आ गोटे प्लैनेट को हमें फर्स्ट टाइम गोटे सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट हमें पठै थिलु हैला एंड was India first to send something to the Mars? Yes or no? Koiba mate comment re. Its mission is to investigate, explore, and observe Mars surface features. कौन ऑब्जेक्टिव थिला मेनली से एक्सप्लोर करिवो ऑब्जर्व करिवो मार्स रो सरफेस जेमति हम अर्थ रो सरफेस अछि तो मार्स रो सरफेस टा को ऑब्जर्व करिवो तारो मिनरलोजी को स्टडी करिवो कौन कौन मिनरल्स प्रेजेंट अछंती मार्स रे एंड एंटायरली आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड लाइफ विद इन मार्स मार्स रे लाइफ पॉसिबल कि नहीं जदि मार्स रे लाइफ पॉसिबल अछि तो ता रिगार्डिंग हमको किछि प्रूफ दरकार किछि साइंटिफिक एविडेंस दरकार for that we need some experiments to be done that can be done with the help of this Mangalyaan है ना तो mineralogy study करिबा surface feature को study करिबा and पूरा तारो atmosphere को study करिबा which is known as the Martian atmosphere ए तीनटा objective थिला Mangalyaan रो it was launched by PSLV मो तुम पचली को launcher use करा जायथिला PSLV C65 यूज करा जायथिला Mangalyaan पई केबे 2013 रे आ पूर्वरु चंद्रयान 1 लॉन्च हेथिला ता विषय में पढिबा नेक्स्ट स्लाइड्स रे तो चंद्रयान 1 जेतबळे हमर सक्सेसफुल हे गला हम पाखरे जोश आसी गला दैट वी कैन आल्सो सेंड आवर स्पेसक्राफ्ट्स टू मार्स एज वेल तो सही कॉन्फिडेंस का हम बरकरार रखी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन ऊपर काम करलु ओके एंड डू यू नो व्हाई इट वाज वेरी फेमस because of its cost इतने कम खर्च रे हमें मंगलयान मिशन पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करि पारथिलु सिंगल अटेम्प्ट दैट वाज आवर माने कोन कॉलर टिकी की चलीवार दिन थिला सेटा एंड बिकॉज ऑफ दिस मिशन इंडिया रो और खास करके इसरो रो हमरो सोलर सेक्टर रे वी केम इनटू द एलाइट क्लब because of all the missions that we are going to study in this video है ना so it made ISRO the fourth space agency तो मैं तुमको कहली it was not the first in the entire world जे कि मार्स को जाई परिला it became the fourth space agency to successfully launch a spacecraft into Mars orbit but गोटे क्वेश्चन हमें करिबा towards the end तमे सेठी मते सेठी जानिबा हमें आउट जिंस रिगार्डिंग दिस फैक्ट हैला एटा तमे वर्तमान मन रखो कि इट इज द फोर्थ एजेंसी जे मार्स को जाई परिला नो डाउट इट इज 100% करेक्ट आ गोटे जिंस जो थरे कि मार्स माने हमर मंगलयान मिशन पूरा वर्ल्ड को टॉपी देला काटी देला सेटा कोन थिला विल स्टडी one of its uniqueness is the observation of the far side of the Mars moon रो far side को से ऑब्जर्व करि पारि थिला बोला तो which was its uniqueness Deimos is the name of the far side of the Mars moon तो ताको for the first time Mangalyaan mission observe करि थिला हैला so in this figure you can see tryst with the red planet Mars को हमें पूरा red planet को because of
इट्स विजुअल अपीयरेंस राइट पूरा लाल हेकी देखा जाए तो ये तुम देखि पारथबो ये तुम देखि पारथबो केतेटा पेलोड्स यूज कराइछि व्हाट आर दिस पेलोड्स जेतबेले भी आमे गोटे स्पेसक्राफ्ट पठू टू एनी प्लैनेट और मून और टू द स्पेस ता सहित आमे किछिटा गोटे ऑर्बिटर पठाऊ जोटा कि तांगा ऑर्बिटर घूरी बुले आउ किछिटा ता सहित ऑर्बिटर सहित हो कि आउ कहा सहित भी हो आमे किछिटा पेलोड पठाऊ पेलोड इन द सेंस इंस्ट्रूमेंट्स पेलोड को हम इंस्ट्रूमेंट्स भी कहि परिबा तो से किछि इंस्ट्रूमेंट्स पठेले ही से माने ए जिंसटा को स्टडी करिवे ना नले केमति करिवे मार्स रो सरफेस फीचर को स्टडी करिवे कि तार फोटो उठे कि हमको पठेबे देन ओनली हमें एठी किछि गोटे तार फोटो रो एनालाइज करि कि स्टडी करि परिबा हां कि नै फोटो वीडियोस ए सब हमको दरकार पड़िबो स्टडी करिया पे तो से जिंस गुडा को के करिवो ए पेलोड्स गुडा को ता काम तांगा मान को काम हला सेटा तो इन डिटेल विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस पेलोड को पेलोड रो कोन फंक्शन अछि हला एंड कोन से माने ऑब्जर्व करिबा पई पठा जायथिला एंड कोन से माने ऑब्जर्व करले भी ओके चलो सो लाइमन अल्फा फोटोमीटर मीथेन सेंसर फॉर मार्स मेनका टीआईएस एमसीसी एगुडा को ना हला सो पेलोड्स जोटा हमें मार्स मिशन रे पठै थिलु ओके आई थिंक आई हैव मेंशनड एवरीथिंग अच्छा सो एठी तमे देखि पारथबो एग्जैक्ट डेट्स हैला तो एठी हमें कोन देखिलु कि नवंबर 2013 रे लॉन्च करला इसरो बट से एग्जैक्टली मार्स रे पहुंचिला केबे सेप्टेम्बर 2014 रे सो 2013 नवंबर रे से अर्थ रो बाहरिला परे से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को गला बुली बुली से अर्थ रो टिके टिके दूर ऑर्बिट्स को गला बुझ पेलो धीरे धीरे ग्रेजुअली इट मूव्ड टू हायर ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड तापरे गोटे ट्राजेक्टरी से नहीं की से मार्स रो ऑर्बिट को एंटर कला केबे 2024 माने ऑलमोस्ट ए ईयर पूरा गोटे वर्ष तो हेनी 300 दिन वी कैन से बिकॉज आ 2 मास हेले हे जाई थांदा गोटे वर्ष हैला तो गोटे वर्ष हबार 2 मास पूर्वरु से मार्स रो ऑर्बिट को एंटर कला ता सेटिक भितरे से हम चारि पाख ऑर्बिट रे बुलुतला धीरे धीरे दूर को जाई कि मार्स रो ऑर्बिट को एंटर कला आफ्टर ऑलमोस्ट 300 डेज ओके so the spacecraft as I said spent over 300 days in the deep space before entering Mars on September 24 2014 so November 5 2013 रे से बाहरिला इसरो रो आ मार्स रे से पहुंचला सेप्टेम्बर 24 2014 रे 300 दिन से बुलिला डीप स्पेस रे this was achieved in the very first attempt okay so as I said Mars को जिबा पई इसरो प्रथम नथिला इसरो was the fourth space agency which was able to get into the Mars hello Mars orbit but first attempt रे successful haba was an historic win for any Asian space agency hello it माने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली आगुरु जितिकी जण भी स्पेस एजेंसी मार्स को पठै थिले बहुत फेलियर्स से माने देखि थिले 13 14 अटेम्प्ट परे जाय कि तांगर सक्सेसफुल हेतिला बट आमे फर्स्ट अटेम्प्ट रे सक्सेसफुली मार्स ऑर्बिट को एंट्री करि पारलु तो इन दैट सेंस वी आर फर्स्ट बट आमे फर्स्ट मार्स को गलो सेमति नो बट आमे फर्स्ट अटेम्प्ट रे मार्स को गलो दैट इज करेक्ट क्लियर इनिशियली प्लान्ड एज अ 6-month मिशन इनिशियली प्लान करा जाइथिला मार्स मिशन टा 6 मासिया मिशन रहिबो बट टू बी सरप्राइजिंग मॉम कंप्लीटेड माने मार्स ऑर्बिटल मिशन कंप्लीटेड 8 years इन मार्स ऑर्बिट तो 6 मास पे प्लान करा जाइथिला बट से 8 years स्पेंड कर देला मार्स ऑर्बिट रे ऑन सेप्टेम्बर 24 2022 सेप्टेम्बर 2022 पर्यंत से मार्स ऑर्बिट रे बुलिला हमको इन्फॉर्मेशंस दउथला फोटोज दउथला एंड ता परे आई थिंक ऑब्वियसली आउ से चली पारलानी तो एतिकी वर्ष 8 वर्ष से बुलिला
and that too, what is surprising, as I said, the cost that we made. माने गोटे हॉलीवुड मूवी रे जति खर्च हबा ताटो बहुत कम खर्च रे हमें ए मिशन डिजाइन करथिलु एंड गोटे 6 मासर मिशन करथिलु बट इवेंचुअली से 8 वर्ष से सिटी रही पारला एंड थैंक्स टू आवर टेक्नोलॉजी. सो हमें कहू कि इट इज द चीपेस्ट मिशन माने हमें चीप एते चीप रे कलु बट चीप माने नुह कि हमें बहुत ही टेक्नोलॉजी आम खराब कि माने खराब टेक्नोलॉजी यूज कलु कि सस्ता मटेरियल्स यूज करछु कि कोन सेमते किछि नो जेहेतु सस्ता रे भी आमे भलो जिंस यूज करथिलु टेक्नोलॉजी हाई स्टैंडर्ड रो थिला सेति पे से 8 वर्ष बुली पारला ना इवन एट दैट कॉस्ट. सो दैट इज कमेंडेबल. एमती नो कि सस्ता रे जो हिनस्ता कहते सेमती नो हला सस्ता रे भी हम बढ़िया काम को कलु. So that is why it will always be remembered as a cost effective mission. Okay, and जति कि missions जदि हमें compare करिबा नासा रो कि जाक्सा रो कि सेमान को तुलना रे हमर इसरो जति कि missions they are cheaper than their missions but we never lack in technology. Okay, and this image you can see it was taken by the Mars orbiter mission hela Mangalyaan ru e picture ni aithala eta kahar picture. This is the picture of the earth, how earth looks from Mars, and you can see this is our beautiful India hela. To upuru mane Mars ru amaro India kemti dekha jay. This image was given by the Mangalyaan. clear chalo. So orbiter bisare ame पढ़िबा orbiter आउ payload कौन कौन देखिबा. सो ऑर्बिटर रो काम कौन से मार्स रो ऑर्बिट रे बुली थुबो. मंगलयान ऑर्बिटर weighed 1337 kg with a lift of mass of 1340 kg from earth hela. So here you can see in this image this is the orbiter. एठी तमे देखुथबो solar panels पठाइछ hela because एठी sunlight नथिले भी electricity generate kari paribo with the help of solar panels to facilitate power generation. So this is the orbiter you can see, and ei orbiter सहित आमे किछिटा payload पठाइथिलु which are this MCC payload, MSM payload, TIS payload, MENCA payload हैला. and एठी गोटे medium gain antenna अछि एठी high gain antenna अछि माने केतिकी दूर पर्यंत से information पठाइ परिबो antenna decide करिवो सेटा. but प्लीज रिमेंबर मंगलयान मिशन रे हमें केतेटा पेलोड पठाइथिलु ऑर्बिटर सहित 5टा पेलोड पठा जायथिला हैला टू कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. क्लियर कौन कौन थिले से 5टा पेलोड हियर इज द डिटेल्स. मार्स कलर कैमरा रो बुझुछु कैमरा माने कोन करिवो फोटो उठेबो. So to capture images and information about the Martian surface features and processes. So बहुत सुंदर सुंदर photos तमे देखी थीबो Mars रो. That is taken by whom? That is taken by the Mars color camera. हैला बहुत सुंदर सुंदर photos सब पठेबो and photos को हम analyze करिकी जानिबा कि कोठी valleys अछि कोठी craters अछि कोठी तमरा गड्ढा अछि and all कोठी कोन अछि eventually photos रो देखि के हमें जानि परिबा. Then comes your methane sensor for Mars. Methane sensor to detect the presence of methane which would provide evidence of Martian life. Now methane को study करिबा कोन पे important माने methane अछि कि नै जानियाटा कोन पे important because जदि methane अछि there is a chance that सेठी life presence हे परिबा. What is methane? CH4 is methane, गोटे atom of carbon, 4टा atom of hydrogen. Hydrogen ए जो methane टा बाहरिबो केते बडे either किछि organisms मानकर dead bodies रो बाहरिथिबो से माने मला परे तांकर decaying होला परे सेठु methane बाहरिथिबो right. otherwise तांकर किछि गोटे biological process हेथिबो सेठु methane generate हेथिबो. तो if some किछि organisms are present that means सेमान को पाखरे अछि ना ऑक्सीजन अछि बंचिया को से माने केमति बंचुथिबे लाइफ रो गोटे हिंट थिबो देन ओनली दे आर सर्वाइविंग और दे आर डेड. जदि से माने मरि जाउछन्ती देन सेठु मीथेन बाहरिबो. मीथेन बाहरला परे से एटमॉस्फेयर रे मीथेन थिबो. नाउ इफ with the help of Mangalyaan mission we are able to identify
presence of methane, that means there is a chance कि सेठी life ही परिबा. आउ गोटे condition हला कि volcanic eruption जोगु भी methane बाहरे. So that is the different story. But see case रे methane बहुत high quantity रे बाहरी थिबा, and I think volcanic eruption सहित तमरो methane भी बाहरे, carbon monoxide भी बाहरे. हैला. So that depends कि only methane हेले ही हमें कहबा अरे methane अछि माने सेठी life possible, हमें काली जाय कि सेठी रही जीवा मार्स रे. That is not possible. Methane सहित आहुरी भी बहुत सारा elements रहिबा दरकार. हैला. हाइड्रोजन अछि कि नाही, कार्बन डाइऑक्साइड अछि कि नाही, ऑक्सीजन अछि कि नाही, सब को जिंस हमको जाने को पड़िबो. Are all these present? But first indicator जदि हम अर्थ रो बाहरे को भी planet को जिबू, the first जिंस हमें देखिबो whether methane is present in that atmosphere or not. If it is present, there is a chance of life in that planet. Clear? Mars exospheric neutral composition analyzer. एटा आ गोटे payload थिला. ता काम कोन थिला? To study the composition of the planet's upper atmosphere. Planet रो upper atmosphere रे composition कोन कोन रुहे. हैला जेमते एबे आमे आमर अर्थ रो एटमॉस्फेयर टाको स्टडी करिचे. तमे पढिथिबो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो व्हाट आर द लेयर्स ऑफ मार्स एटमॉस्फेयर? कौन कौन एलिमेंट्स प्रेजेंट अछंती, कौन कौन गैसेस प्रेजेंट अछंती. तो एई जिंसटा के स्टडी करिवो? मेनका. मेनका माने मार्स exospheric neutral composition analyzer. Then comes your thermal infrared imaging spectrometer. ता काम हला to map surface composition and mineralogy of Mars. हैला. तो मार्स रे कौन कौन minerals available अछंती, what is the composition of the surface, ए सब स्टडी करिवो ए particular payload. Then comes your Lyman alpha photometer. तार मेन काम हला to measure the relative abundance of deuterium and hydrogen. Deuterium is a heavy isotope of hydrogen. Hello. It is also a heavy isotope of hydrogen and a stable isotope of hydrogen. भी हमें deuterium को कहि परिबा. Now hydrogen अछि माने पानी थिबो, maybe may not be. हैला. H2O हबा पई यदि deuterium मिली गला, then we can, or hydrogen मिली गला, then we can say hydrogen is present in that atmosphere. यदि hydrogen अछि तो पानी भी हे परिबो, थाई पारे. बुझ पालो. So this is done by the Lyman alpha photometer from Lyman alpha emission in Mars exosphere. तो पांचटा payload रो अलगा अलगा function सब थिला. Clear? So here you can see Mars color camera, Lyman alpha photometer, thermal red infrared imaging spectrometer, MENCA and methane sensor. ए पांचटा payload पठा जाय थिला. And stage 1 you can see the satellite takes several rounds of the earth and each time going farther from our planet. प्रति थर से दूर दूर को गला, then गोटे trajectory से एठी धरिला, then से मार्स रो ऑर्बिट रे पहुंचिला. हैला. तो एठी किछि लैंडर रोवर किछि यूज कराइथिला कि किछि नुह, ऑर्बिटर यूज कराइथिला, ऑर्बिटर रे पेलोड पठाइथिला. तो ऑर्बिटर ही बुलुथबे से माने सेठु सब एनालिसिस करिवे. हैला. मार्स रो सरफेस को जाइन हांती पर्यंत माने मंगलयान मिशन रे. सो स्टेज 3 हला, स्टेज 1 हला सेवरल राउंड्स नेला अर्थ रो दूर दूर को गला. स्टेज 2 रे से मार्स रो ट्रैजेक्टरी टाको धरला. स्टेज 3 रे से मार्स रो ऑर्बिट को एंट्री कला केबे सितंबर 2014 रे. हैला. एंड मु तुमको कहउतले जो लो एंटीना एंड मीडियम गेन एंटीना, लो गेन एंटीना रे से 7 मिलियन किलोमीटर पर्यंत सिग्नल ट्रांसमिट करि परिबो. हाई मीडियम गेन एंटीना रे से 200 मिलियन किलोमीटर पर्यंत सिग्नल ट्रांसमिट करि परिबो. एंड हाई गेन एंटीना रे से 400 मिलियन किलोमीटर पर्यंत सिग्नल माने दे परिबो. हैला. So this was all about your Mars mission. So कौन कौन फाइंडिंग्स ही थिला. तो ऑब्जेक्टिव्स हमें पढिलु, सरफेस टाको स्टडी करिवो, कौन कौन मिनरल्स अछि से सब स्टडी करिवो एंड ऑल. तो फाइनली कौन कौन से करि परथिला कि मीथेन डिटेक्शन हे थिला. हैला. मीथेन सेंसर मेड द फर्स्ट क्लियर डिटेक्शन ऑफ Martian methane, which is a potential indicator of microbial life. Clear?
and surface imaging high resolution images and केबे करथिला जेबे से एंट्री कला ऑर्बिट को तेबे ही सेही मासरे ही से यू नो डिटेक्ट कला कि मिथेन रो प्रेजेंस रहउची surface imaging is high resolution images तमे जोडा का देखिलो मार्स कलर कैमरा पठेथिला सेटा तो दैट वाज द विजुअल डाटा जे कि हम कहिथिला कि कोठी क्रेटर्स अछि कोठी वैलीज अछि कोठी ड्यून्स आइस कैप वेदर सिस्टम ए सब जानिबारे हेल्प करथिला हमरो मार्स कलर कैमरा हला टू अंडरस्टैंड द surface morphology and dynamics. Then is the mineralogical mapping. Thermal infrared manochi thermal infrared imaging spectrometer ame payload pathaythilo, so it generated mineral composition map. Mars ro mineral composition map generate करथिला जो थरे कि clay hematite silicates ए सब minerals पाइथिलु ame Mars surface रे. Okay, then upper atmosphere study भी थिला केतना layers of atmosphere and all. So MENCA जोटा use हेथिला it facilitated precise quantification of the extent of argon 40 देखिए को मिलथिला हमरो Mars atmosphere रे. So these are all the scientific observations of the payloads that we have sent with the Mangalyaan orbiter. Clear? Chalo. If you are so clear about the Mangalyaan mission, एटार आंसर कहला सॉरी एटार आंसर अरे कुआडे गला एटार आंसर को Mangalyaan was launched by ISRO. It is called the Mars orbiter mission. It made India the second country to have a spacecraft orbit the USA, orbit a Mars after the USA. It made India the only country to be successful in its very first attempt, which is correct. Obviously, we know this is correct. Mars orbiter mission को आजे, it's the question ही थिला. It made India the second country after USA. जेकी Mars को spacecraft पठे थिला. Is it correct? It is not. It made India the fourth country. हैला India पूर्वरो बाकी तीनटा country Mars को जाई पारथिले. But first attempt रे अब की जाई पारथिले कि first attempt रे India is the only country to be successful in its maiden attempt. So this statement is correct. This statement is correct. And this statement is wrong. So answer will be 1 and 3 only. Acha. So kichita movies bahar thila tamara Mangalyaan related. Onachi Mission Mangal, gote web series thila Mission Over Mars and Space Moms, Mission Mars. ए सब जिनस हमर bahar thila related to Mangalyaan. And आउट जिनस मन रखिबा. So mainly जदि आमे देखिबा बहुत कम खर्च रे almost 450 crore cost रे आमे ए बढ़िया प्रोजेक्ट को डिजाइन कर परथिलु and it brought us to the elite member club माने इसरो को गोटे elite club को नहीं आस्थिला because of the first attempt successful हेथिला सेति पे and it created a platform for advanced exploration हैला. तो एबे जेतु हमर मार्स 1 माने जो मॉम टा सक्सेसफुल हेतिला मार्स ऑर्बिटर मिशन, then we can think of future missions on Mars as well, which is under planning वर्तमान ता बिषय भी पढिबा and to master interplanetary skills. Now since it created a platform for advanced exploration, Mangalyaan 2 mission is planned to be launched at in to 2026 next year, but we do not know if it is going to extend because of the Gaganyaan. So extend भी ही पारे किसी particular date जाना नहीं, but we can expect maybe 2026-27 वालों को हमें देखी पारेगा Mangalyaan 2 mission है ना. So Mangalyaan 2 mission will carry 4 payloads: MODEX, radio occultation experiment, energetic ion spectrometer and LPEX. ये चारटा payload पठा जीवो Mangalyaan 2 रे, or you can say Mars lander mission तारा ना दिया जायची. Okay, the study will focus on the Martian atmosphere, environment and interplanetary dust. So जेतबले it launch हबो ए mission, then we can study in detail about all this. Now it is not needed, but जानी तो we have plans of
next phases of the Mongolian mission as well. Okay, jemti Chandrayaan 1 2 3 thila, the Mongolian ro bi second planning re achi. Okay, great. Coming to the Chandrayaan mission. So Chandrayaan 1 2 3 तीनटा मिशन ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିବ Chandrayaan series भी ଆମେ ତାକୁ କହି ପାରିବା Chandrayaan 1 ଆମର launch ହେଇଥିଲା 2008 ରେ Chandrayaan 2 launch ହେଇଥିଲା 2019 ରେ ମାନେ almost 11 ବର୍ଷ ପରେ of Chandrayaan and 4 ବର୍ଷ ପରେ we have launched Chandrayaan 3 which is the most successful mission ହେଲା So mane rakhibo when we are talking about this kind of missions there can be 4 kinds of mission hello gote amara hei paribo probe mission out hei paribo amara lander mission out hei paribo amara rover mission out amara hei paribo human mission now what are all this probe mission Chandrayaan 1 jota thila that was the probe mission हैला बिकॉज चंद्रयान 1 रे आमे किछि लैंडर रोवर ए सब किछि जिंस यूज कराय नथिला चंद्रयान 1 रे गोटे प्रोब यूज करायथिला ऑर्बिटर पठाइथिला ऑर्बिटर सहित गोटे प्रोब भी पठाइ जायथिला ऑर्बिटर सहित किछि पेलोड्स भी पठाइ जायथिला बट जो प्रोब रो काम हैला exactly if I name the probe it was moon impact probe हैला impact माने हमें कोन बुझुछु impact this is impact which one this is impact तो moon रो surface उपरे ए probe ता impact करिवो जाय कि it is already planned कि से जाय कि जो हमरो Chandrayaan 2 टा फेल हे जायतिला बो जने जानथियो because of the crash landing of the Vikram lander तो एठी crash landing plan हेतिला landing तो कहि परिबानी बट crash हबाटा planning करिकि ही पठा जायतिला सेति पे आमे पठैथिलु impact probe moon impact probe जे कि जाय कि impact दबो moon उपरे ना जेतबेले से impact दबो से कोन टिक्के भितरु जीवो निहाती moon रो टिक्के भितरु को जीवो एंड जेतबेले से impact दबो जो जेति कि भी डस्ट थिबो एटमॉस्फेयर रे moon रो से सब बाहर के आसीबो पूरा हाई फोर्स रे एंड जेतबेले से हाई फोर्स रे बाहर के आसीबो तो बाकी जो पेलोड्स हमें पठै थिबा ऑर्बिटर सहित से माने कोन करिवे सेही टाइम रे बहुत सारा स्टडी करिवे हैला with the help of the dust that is released in the atmosphere because of the impact probe also impact probe जेतु से टिके डीप को जीवो से भी किछरा जिंस स्टडी करिवो मून विषय तो मून विषय फर्स्ट टाइम हमें अटेम्प्ट करथिलु चंद्रयान 1 रे 2008 रे where we have sent orbiter and the moon impact probe orbiter सहित आहुरी भी पेलोड पठैथिलु जा विषय में डिस्कशन करबा एंड से पेलोड्स गुडा को अलग अलग कंट्रीज रु भी पठाई दिथिला ओके से माने तांकर एक्सपेरिमेंट करिए बेली दे टुक हेल्प ऑफ आवर चंद्रयान 1 and amoro ISRO ro indigenously developed moon impact probe was sent with the orbiter and say gote probe ही moon upare land करिवो माने क्रैश करिवो आ बाकी जिति के भी तमरो पेलोड्स थिला दे विल रिमेन इंटैक्ट विथ द ऑर्बिटर सेटा प्लानिंग थिला एंड इट वाज सक्सेसफुल एज वेल ओके तो कोन कोन मिली थिला सेठू तमे जानि थिबो डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन मून दैट वाज डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन मून हमें केबे देखिथिलु चंद्रयान 1 रो सक्सेसफुल लॉन्च रे माने सक्सेसफुल जो हला तबे हमें जानिलु कि मून रे पानी अवेलेबल अछि ओके बट एटा गोटे सेते बेले चली थिला ट्रेजिक यू नो गोटे डिबेट चली थिला
कि मून इम्पैक्ट प्रोब कहला कि इट फाइंडेड द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, which is correct. Moon impact probe jehetu it crashed on the moon, it found that there is presence of water in the moon's atmosphere or moon surface. But ये जो कहली बाकी देशर भी किछिटा पेलोड जाइथिले, से पेलोड भितर जो नासा रो पेलोड गोटे थिला M3 ता विषय में पढ़िबा, से M3 टा कोन गला से क्रेडिट नै गला ऑफ discovery of water in the moon, because से आगो तार आर्टिकल टाको पब्लिश कर देला, so it took the credit of discovery of moon. But in a way से माने जाइथिले कोठु चंद्रयान हमरो आम मिशन रे ही जाइथिले ना से माने, so we can take the credit in that way, किछ असुविधा नै. तो आर ऑब्जेक्टिव थिला टू स्टडी द मून्स सरफेस. ऑर्बिटर जाइथिला, ऑर्बिटर सहित बाकी पेलोड्स भी जाइथिले, मून इंपैक्ट प्रोब भी जाइथिला. इट कंफर्म्ड लूनर वाटर एंड केव्स एंड एक्टिविटी. एंड 312 दिन पर किछिटा कम्युनिकेशन इश्यूज देखिया को मिलेला चंद्रयान 1 रे हला. तापरे आ किछि हे पलाने. देन वी प्लान्ड फॉर चंद्रयान 2 हला इन 2019. बट रिमेंबर चंद्रयान 1 रे आमे को लॉन्चिंग व्हीकल यूज करथिलु, PSLV यूज करथिलु. क्लियर. चंद्रयान 2 रे जदि आमे चंद्रयान 1 विषय भी आमे डिटेल रे पढिया, डोंट वरी. नाउ कंपैरेटिव स्टडी करिया को ट्राई करो कि तीनटा मिशन रो डिफरेंस कोन थिला. ओके, तापर आमे डिटेल को जिबा. चंद्रयान 1 रे कोन थिला ऑर्बिटर आउ इंपैक्ट प्रोब, ता छडा लैंडर रोवर किछि थिला कि नै. When we come to the Chandrayaan 2, then we have the lander rover, हैला. विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर. विक्रम साराभाई को ना रे दिया जाइथिला ता नाटा विक्रम लैंडर. 2019 रे लॉन्च करा जाइथिला टू स्टडी द लूनर सरफेस एंड लैंड रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल. ऑब्जेक्टिव कोन थिला कि गुटे रोवर आमे पठेबा, से रोवर टे चलीबा दरकार हमर मून सरफेस ऊपर एंड हमें साउथ पोल रे लैंड करबा दरकार. दीटा मेन ऑब्जेक्टिव थिला. सो अनफॉर्चुनेटली आमे याको पूरा तो फेलियर कहि परिबानी, पार्शियल फेलियर आमे कहि परिबा. अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग टाइम रे जो क्रैश लैंडिंग हे गला, सॉफ्ट लैंडिंग हे पालानी. दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम. कोन तार स्टोरी टा भी आमे निहाती देखिबा फ्यूचर स्लाइड्स रे. It built upon Chandrayaan 1's water evidence. Now जेहेतु इठु हमें चंद्रयान 1 रु वाटर रो एविडेंस हमको मिले थिला, ताको बेस करी कि हमें चंद्रयान 2 प्लानिंग करथिलो आउ टिके भलो स्टडी करा जाय परिबो मून ऊपर सेमती. लैंडर क्रैश लैंडेड as we know because the rover was unable to operate. and launching vehicle कोन यूज करा जाय थिला, GSLV. चंद्रयान 1 रे कोन यूज करा जाय थिला, PSLV. चंद्रयान 2 रे GSLV Mark 3 हैला. एंड लैंडिंग साइट थिला लूनर साउथ पोल, माने साउथ पोल रे लैंडिंग करियार थिला, बट क्रैश लैंडिंग करि गला. देन वी हैव द चंद्रयान 3. सो आफ्टर सक्सेसफुल और यू कैन से पार्शियल फेलियर ऑफ द चंद्रयान 2, हमको निहाती दरकार थिला कि चंद्रयान 3 जीवो करियार अछि हमको प्लान बहुत जल्दी. So Chandrayaan 3 was planned to be launched in 2021, but due to COVID it got delayed, and finally 2023 रे successfully launch हेतिला Chandrayaan 3. तारो main objective was to demonstrate the landing capability. माने ए थरो लैंडिंग रे किछ भी प्रॉब्लम न होबा सेटा हमर मेन एम थिला. एंड एथरे हमें कोन पठेतिलु, प्रोपल्शन मॉड्यूल पठेलु, लैंडर पठेलु, रोवर पठेलु. तो एथरे हम ऑर्बिटर पठेनु, तुम देखि परथिबो कोन पे, because चंद्रयान 2 रे जो ऑर्बिटर हमें पठेतिलु that was intact. ऑर्बिटर रो लैंडर रोवर बाहर की जानती to land on the moon. ऑर्बिटर टा बुले ऑर्बिट रे, तो ऑर्बिटर वाज ओके, ऑर्बिटर पूरा हेल्दी थिला. तो ऑर्बिटर हमको आउथरे पठेबार किछ आवश्यकता नथिला. ऑर्बिटर कोन करबो, नै कि जीवो ऑर्बिट पर्यंत, ऑर्बिट रो से ताको डिटैच कर दबो लैंडर रोवर को. now सेही कामटा हे जायतिला. ऑर्बिटर वाज दैट, सेथिबे हम तुमको कहली इट वाज पार्शियल फेलियर बिकॉज़ हमें मून रो ऑर्बिट को तो पहुंच जायतिलु. चंद्रयान 1 रे भी हमें से कलो ना, चंद्रयान 1 रे भी हमें मून रो ऑर्बिट को पहुंचिलु, ओटो प्रोब टाको हमें फिंगी देलु, इंपैक्ट करिया पे फिंगी देलु टुवर्ड्स द मून. एंड सेम विद द चंद्रयान 2 कि हमें ऑर्बिट जाय पहुंची पालु, बट हमें सॉफ्ट लैंडिंग करि पालुनी. तो ऑर्बिटर थिला, बट हमको आउट जिंस थिला ए लैंडर रोवर को किया नहीं कि जीवो, प्रोपल्शन मॉड्यूल से डिजाइन करा गला से नहीं कि जीवो लैंडर आउ रोवर को, हैला.
तो कौन पेलोड्स थिला that will be studying in detail. Successfully landed on moon and will operate for one lunar day. So basically से जो rover थिला खास करके से one lunar day ही operate करी परियो. One lunar day is equal to 14 earth days. माने earth रो गोटे दिन माने 24 घंटा हला. तो 14 दिन earth रो जेतिकी सेतिकी दिन पर्यंत माने one lunar day पर्यंत ही से सेठी जहाँ भी करियार अच्छे करी परियो. जहाँ इनफॉरमेशन आनियार अच्छे आनी परियो. तापरे कौन है जे एक्चुअली जितेबाला मून रे राति हो जाए बुझिपाल जो मून रे राति हो जाए सर्फ माने तुम टेम्परेचर -200 केते डिग्री सेल्सियस पड़ाए तो से कौन से भी इंस्ट्रूमेंट काम करिवनी तो दैट इज व्हाई तार गोटे लूनर डे माने से डे रे ही से काम कर दो राति पर्यंत न जाओ मेन एम थिला से ओके सो इट आल्सो लैंडेड इन द साउथ पोल. And the major partner for the Chandrayaan 3 were Japan, NASA and European Space Agency. Japan amara help karthile lunar polar exploration mission re and we also got support from NASA and the European Space Agency as well. Clear? Chalo. So Chandrayaan 1 bisare jodi ame dekhiba already I said you कौन हेइथिला बस एटी टिके डिटेल रे लिखा हेछि. 2008 रे लॉन्च करा गला. इट वाज द इंडिया's first mission to the moon and it was launched from space Satish Dhawan Space Research Center from the Sriharikota. The spacecraft was orbiting the moon at a height of 100 km above the lunar surface to map the moon's chemical, mineralogical and photogeologic composition. माने मून रो सरफेस टू 100 किलोमीटर ऊपर से ऑर्बिटर घुरुतला ए सब जिंस ऑब्जर्व करिया पे तापरे तुमको मु कहली अलग अलग कंट्रीज रो भी हमें किछरे इंस्ट्रूमेंट्स पठेथिलु से इंस्ट्रूमेंट्स को हमें कोन ना देइछु पेलोड्स. तो 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से कैरी करके जाइथिला व्हिच इज नथिंग बट द 11 पेलोड्स. हमें आपको कहि परबो 11 पेलोड्स से नै कि जाइथिला built in India, US, UK, Germany, Sweden, Bulgaria ए समस्त किछरा इंस्ट्रूमेंट पठेथिले टू स्टडी द मून हैला. सो अच्छा तमे जाउ छ हमर इंस्ट्रूमेंट भी नै जाउ सेमती बुझिपालो. So after completing all the mission objectives the orbit was raised 200 km in 2009 हैला. तो जेते सब ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुल हैला परे 100 किलोमीटर रे थिले तापरे 200 किलोमीटर को पठे दिया गला स्पेसक्राफ्ट को. The satellite completed more than 3,400 orbits around the moon before communication with the spacecraft was lost on 2009 August. As I said एडी तुम देखिथिलो कि 312 दिन परे 312 days परे कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाइथिला. तो टिल देन से माने सेटी भितरे 3400 ऑर्बिट्स ऑलरेडी लगे सारथिला से सैटेलाइट. Okay, so what was the main objective as I said? To create a 3D atlas of the moon. Moon रो near side and far side. दीटा जेहेतु से 3400 ऑर्बिट लगे सारथिला मून रो तो से पूरा 3D मैप बनेवर कैपेबिलिटी भी थिला हैला. नियर साइड को भी स्टडी कर परियो फार साइड को भी स्टडी कर परियो मून रो. Also to conduct chemical and mineralogical mapping as I said जेहेतु से बुलुची पूरा केमिकल मिनरोलॉजिकल मैपिंग से करिवो लूनर सरफेस रो पूरा बढ़िया बढ़िया हमको इमेजेस दे परिवो हैला. कोन कोन मिनरल्स अछि कोन कोन केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट अछि मून रो एटमॉस्फेयर ऊपर से सब जिंस स्टडी करिवो. क्लियर. सो दिस आर द 11 पेलोड्स जोटा पठा जाइथिला चंद्रयान 1 रे. एंड एज आई सेड मून इंपैक्ट प्रोब इज मेन बिकॉज एटा ही प्रूव कला आ बाकी समस्त ऑर्बिटर सहित अटैच थिले बट मून इंपैक्ट प्रोब टा जाय कि इंपैक्ट देला मून रो सरफेस ऊपर हैला. आ ए जो कहउथले M3 एटा थिला तमरो नासा रो. तो इट टुक द क्रेडिट ऑफ द वाटर डिस्कवरी हैला. से फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश कर देला तो इट टुक द क्रेडिट ऑफ द वाटर डिस्कवरी. ओके. Next comes your Chandrayaan 2.
Chandrayaan 2 रे कोन हला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हला लैंडर रोवर पठेलु सॉफ्ट लैंडिंग हे परलानी बट डिटेल रे जो तमे एठी देखिबो श्रीहरिकोटा रु लॉन्च हला हला अप्रैल केबे 2019 रे लॉन्च हला कौन कौन थिला ऑर्बिटर थिले लैंडर थिले मून थिले देन इट वेंट इनटू द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट हला जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट को गला एंड देखो मून रो ऑर्बिट इज 3,82,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस एते दूर रे अछि सो फर्स्ट से ये एठु गला एठी फिर बुलिला किछटा राउंड्स नेला देन से मून रो ऑर्बिट को आसिला हला गोटे मास परे ओवर ए मंथ से मून रो ऑर्बिट को आसिला मून रो ऑर्बिट को आसिला पर एठी तमे देखि परथबो कि ऑर्बिटर एठी रहिला हला से ऑर्बिटर टा एठी रहिला एठु तमरो विक्रम लैंडर टाको ड्रॉप करिवार थिला माने लैंड करेवारो से सब कार्यक्रम थिला बट कौन हला कि जेहेतु से एते स्पीड रे बुलुथला ना एते दूर गोटे जिंस अछि से मासे भितर एते डिस्टेंस कवर कला ता माने से केते स्पीड रे जाइथिबो केते वेलोसिटी रे जाइथिबो बट जेतेबेले से ताको एठु रिलीज करा गला तो से स्पीड टा ताको कमेबार थिला सॉफ्ट लैंडिंग केतेबेला हम कर परिबा गोटे एरोप्लेन क्रैश केमती हे जिवो स्पीड टा जति कंट्रोल न कर पेलानी ब्रेक लागलानी सेतेबेले क्रैश हबो सिमिलर एठी भी हे गला किछटा टेक्निकल ग्लिच भी सॉफ्टवेयर ग्लिच भी थिला इसरो कहला एंड बट अगेन बहुत पाखरे जाई की आई थिंक 200 किलोमीटर पाख को जाइथिलु एंड सेठू से तारो डिस्टेंस टा भूली गला एंड दैट बिकेम ओनली बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी हमें कहि परिबा कि तार वेलोसिटी टा को से कंट्रोल करि पलानी जेतेबेले से तळु को आसीबो त धीरे धीरे स्पीड टा कमे बर अछि तो जेटा कि से कमे परलानी प्लस जो एंगल रे ताको लैंड हबार थिला से एंगल टा भी बहुत स्टिफ हे गला मेंटेन माने पूरा फ्लेक्सिबल न थिला तो से एग्जैक्टली से एंगल रे लैंड हे परलानी जोति पे कि से क्रैश हे गला तो स्पीड एंगल एमते बहुत सारा असुविधा हे गला लैंडिंग बेले बुझ परलो तो एठू ए फेलियर रो सिखि कि ही चंद्रयान 3 हमें सक्सेसफुल हे परछ जदी फेलियर हे न थांता देन हमें एते सारा जिंस सिखि न थांतु एंड जदी फेलियर हे न थांता देन हमें तो 2019 रु ही माने ऑलरेडी बहुत ना करि सारंतोनी ओके so after reaching the moon's orbit lander detached from the orbiter and soft landing रो टारगेट थिला को जगह रे साउथ पोल रे नाउ साउथ पोल रे जो थिला अच्छा आ गुड पॉइंट मु मिस करि गली ए जो मून इंपैक्ट प्रोब जो जगह रे माने गड्ढा कला ना बुझिपल जो जगह रे गड्ढा कला आई थिंक ताको जवाहर पॉइंट भी कुहा जे हला एटा भी केते बहुत थरो हमरो पचार दियंती एग्जाम्स रे तो जो मून रो गोटे सरफेस रे से जो प्रोब जाई की पड़िला क्रैश कला से पॉइंट रो जगह दिया ना दिया है कि जवाहर पॉइंट एटा मन रखिबो हला अच्छा सो ये साउथ पोल रे लैंड करियारो तार थिला बट हे पलानी ओके एंड आउट कोन असुविधा हला कि जो आमे देइथिलु आई थिंक 200 मीटर बाय 200 मीटर ही थिला कि सेटिके भितरे ही माने तारो लैंडिंग साइट आमे भी लिमिटेड रखि देइथिलु चंद्रयान 2 रे जोटा कि सेटा को रेक्टिफाई करा गला चंद्रयान 3 टाइम रे 4/2 किलोमीटर माने बहुत ह्यूज एरिया ऑलमोस्ट 40 टाइम्स अधिका तार दिया गला कि लैंडिंग साइट से जज करि परिबो से टाइम रे से जज करि परिबो त से जोठी लैंड करि परिबो एठी बहुत लिमिटेड स्पेस हमें दे देथिलु ताको जज करिया पे एंड ताको फोटो भी उठेबार थिला लैंड भी करियार थिला तो एमती ही कि चंद्रयान 2 रो लैंडिंग रे असुविधा हे गला हला देन एज आई सेड चंद्रयान 1 पे पीएसएलवी यूज हेतला चंद्रयान 2 पे जीएसएलवी यूज हेतला तो जीएसएलवी रे क्रायोजेनिक स्टेज यूज हेछि तमे देखि परथबो लिक्विड स्टेज सॉलिड स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज है तो एठी हमरो चंद्रयान 2 हमें पठेथिलु
warhead जोठी रहिबो क्लियर सो चंद्रयान 1 और 2 भीतर कौन डिफरेंस अगेन देखि पारथो तमे एठी हम 11 टा पेलोड्स पठैथिलु जो भितरु कि 5 टा इंडिया रो थिला 3 टा यूरोप रो थिला 2 टा यूएसए रो थिला गोटे बल्गेरिया रे थिला चंद्रयान 2 रे 13 पेलोड्स पठा जायतला किछि हे पालानी ऑर्बिटर रहिला तो लैंडर रोवर तो क्रैश हे गला तो ओनली ऑर्बिटर टा हमरो कंटीन्यूअसली बुलिला बट लैंडर रो काम माने लैंडर टा क्रैश लैंडिंग हे गला हला एंड इथरे हमें GSLV यूज करथिलु इथरे GSLV यूज करथिलु दी जन को ऑब्जेक्टिव्स वाज आल्सो डिफरेंट आरो मेन काम ये थिला कि गोटे रोबोट टा केमते चालू मून रो सरफेस ऊपर एंड सॉफ्ट लैंडिंग हमें करि परिबा साउथ पोल रे आरो अलगा ही ऑब्जेक्टिव थिला बुझ पालो तो बट दी जन को जदी हमें देखिबा ऑर्बिटर 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर सरफेस डिजाइन हे थिला हला चलो So Chandrayaan 2 केबे लॉन्च हेतिला 22nd July 2019 रे by the GSLV from the Satish Dhawan Space Center Sriharikota. Now after a series of earth-bound maneuvers, the spacecraft entered into the lunar transfer trajectory on August 14. So July 2019 रे सेठो बाहरिला एंड तमे एठी देखि पारथबो एटी देखो एटी फेजेस कोडा को लिखा है अर्थ बाउंड फेज ट्रांसलूनर इंजेक्शन डे 23 तापरे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी माने को दिन रे से को जगह रे हबो दैट वाज ऑलरेडी प्री डिजाइन्ड क्लियर lunar orbit insertion maneuver was performed on August 20 so July as I said कि मासे हैला 22nd July August 14 so almost मासे तक लागिला से अर्थ रु राउंड राउंड हैला अर्थ रो दूर दूर को गला अर्थ रो गोटे गोटे ऑर्बिट दूर को गला देन से गोटे ट्रैजेक्टरी धरला देन से मून रो ऑर्बिट को आसिला मून रो ऑर्बिट को अगेन से गोटे गोटे ऑर्बिट कम कम हेगी गला हैला एटी तुम देख परथो धीरे धीरे कमिला एंड इट वाज अवे फ्रॉम मून 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मून So, September 2nd timeline था मन रखो July August then September 2nd रे विक्रम separate हैला orbiter okay Vikram lander separated from the orbiter now this is called as your Vikram lander and आ नाटा कौन थिला ए रोवर रो ना कौन थिला प्रज्ञान रोवर हमर मेन एम थिला ये केमती चलिबो सो ए लैंडर रो ए रोवर टा बाहरिबो एंड से मून रो सरफेस ऊपर चलिबो सो सेप्टेम्बर 2nd रे ए विक्रम लैंडर सेपरेट हैला मून टू सॉरी ऑर्बिटर टू हैला एंड डीऑर्बिटिंग मैन्यूवर वाज परफॉर्म्ड टू रिड्यूस द ऑर्बिट टू 35 किलोमीटर बाय 101 किलोमीटर माने 101 किलोमीटर दूर रे थिला 100 किलोमीटर दूर थिला एबे देखो 35 किलोमीटर पाखु आसीबार थिला Vikram landing was attempted on 7th September. So 2nd September से detach हला 7th September रे land करिबार थिला and it followed the planned descent trajectory from its orbit of 35 km to around 2 km above the surface. हला तो माने 35 km रु से 2 km पर्यंत आसिला and 2 km रु तारो disturbance start हे गला माने इतने close था कि भी we lost. Communication with the lander and ground station was lost जेतबोले से 2 किलोमीटर दूर रे थिला से मून फॉर एग्जांपल एटा हमर मून विक्रम लैंडर आरो एमदी ट्रैजेक्टरी फॉलो करियार थिला बट ये 2 किलोमीटर दूर रे जेतबोले थिला सब सिग्नल लॉस्ट हे गला all the systems and sensors of the lander function excellently until this point माने 2 किलोमीटर दूर पर्यंत सब ठीक से परफॉर्म हेतिला but and proved many new technologies such as variable thrust proportional technology सब भलो भलो टेक्नोलॉजी यूज कराइतला बट टिके ग्लिच हे गला कम्युनिकेशन लॉस्ट हे गला स्पीड टा को कंट्रोल कर पाला नै जोथि पे कि से क्रैश लैंडिंग करला हाउएवर ऑर्बिटर टा जोटा रहिला 100 किलोमीटर दूर रे दैट वाज हेल्दी एंड ऑल द पेलोड्स आर ऑपरेशनल जोटा ऑर्बिटर रे थिला दैट इज ऑपरेशनल चंद्रयान 2 ऑर्बिटर इज करेंटली इन 100 किलोमीटर माने दूर रे अछि मून टू 8टा एक्सपेरिमेंट से
करी आछि माने टिल चंद्रयान 3 जेतेबेले पठाला सेतिकी भितरे ऑलरेडी से कंटिन्यू करथिला एक्सपेरिमेंट बिकॉज से बुलुथला ऑर्बिट रे ना बुझिपला से लैंड से ना करनथिला से बुलुथला ranging from surface geology composition of exospheric measurements that would continue to build upon the understanding of the previous lunar mission. Okay, now coming to the Chandrayaan 3 तार main objective कौन थिला obviously हमको से failure to ऊपर की आसियार थिला we had to be successful so we had to demonstrate safe and soft landing on the lunar surface. तो फेस हमर फर्स्ट टाइम या थिला कि जे एक्सपेरिमेंट करो कि न करो सेफ लैंडिंग भी कर देले हमें जीत जाइथान हैला व्हिच वी डिड चंद्रयान 3 रे आफ्टर 4 इयर्स ऑफ द फेलियर ऑफ द चंद्रयान 2 टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून एंड टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स माने सेही पर्टिकुलर साइट रे इन सिटू ऑन द साइट किछिटा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट केमते करा जाय परिबो ए तीनटा ऑब्जेक्टिव थिला चंद्रयान 3 रो सो एज यू कैन सी द होल टाइमलाइन इज मेंशनड ओवर हियर सो चंद्रयान 3 रे भी हमर कोन थिला हम कहले तुमको प्रोपल्शन मॉड्यूल पठा गला विक्रम लैंडर पठा गला प्रज्ञान रोवर पठा गला प्रोपल्शन मॉड्यूल कोन पे पठिलो बिकॉज़ ऑर्बिटर वाज ऑलरेडी प्रेजेंट तो बट किछिटा जिंस हमको नै कि जिबा को माने रोवर को आ लैंडर को पठिया पे गोटे हमको मॉड्यूल दरकार तो सेति पे प्रोपल्शन मॉड्यूल डिजाइन करा जायथिला एंड को लॉन्च व्हीकल यूज हेतिला चंद्रयान 3 पई GSLV मार्क 3 सेम जोटा चंद्रयान 2 पई यूज करा जायथिला से सेम लॉन्चिंग व्हीकल एथरे भी यूज करा गला हैला सो जुलाई 14 रे लॉन्च करा गला चंद्रयान 1 जुलाई 15 रे से अर्थ रो ऑर्बिट 15 टू 25 पर्यंत से ऑर्बिट तमे देखिलो अर्थ रो दूर दूर को गला ऑर्बिट्स बढ़े बढ़े चला डिस्टेंस एंड देन फाइनली अगस्त 1 रे से ट्रांसलूनर ऑर्बिट को एंटर कला हैला ट्रांसलूनर ऑर्बिट माने एटा जोटा कि तमरो अगेन मून रो ऑर्बिट को कनेक्ट करबो ए ट्रांसलूनर ऑर्बिट हैला जोटा केबे कला से अगस्त 1 रे अगस्त 6 रो 16 पर्यंत से ग्रेजुअली 170 किलो माने ऑलमोस्ट यू कैन से एतिक दूर रो से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर को जाई परिला हैला अगेन एज आई सेड कि दूर रो पाख को आसिला मून रो क्लियर एंड फाइनली 100 किलोमीटर दूर को आसिला मून रो तापरे कोन हैला इट एंटर द लूनर ऑर्बिट एग्जैक्टली जदि टू बी स्पेसिफिक अगस्त 5 रे सेंटर कला हैला लूनर ऑर्बिट रे तापरे प्रोपल्शन मॉड्यूल नाउ जेमति ऑर्बिटर तो अलगा हबार अछि तो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो वर्तमान अलगा हबार थिला तको तो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल तो अलगा हैला एंड से प्रोपल्शन मॉड्यूल टा रहिबो सेठी बहुत वर्ष पर्यंत एंड से भी तार किछि काम करिवो प्रोपल्शन मॉड्यूल सहित भी हमें किछिटा पेलोड पठैथिला ता विषय भी हमें पढिबा सो प्रोपल्शन मॉड्यूल रे भी हमें पेलोड पठैथिलो माने किछिटा इंस्ट्रूमेंट्स पठैथिलु रोवर सहित भी हमें किछिटा इंस्ट्रूमेंट्स पठैथिलु लैंडर सहित भी हमें किछिटा इंस्ट्रूमेंट्स पठैथिलु सो प्रोपल्शन मॉड्यूल रो से डिटैच हैला एतो में देखि पड़तबो प्रोपल्शन मॉड्यूल रो हमरो विक्रम लैंडर डिटैच हैला एंड फाइनली से सॉफ्ट लैंडिंग कला केबे अगस्त 23 रे हैला सॉफ्ट लैंडिंग कला परे एठी तमरो रोवर टा बाहरी की चलीला मून रो सरफेस ऊपर सो दिस वाज द एंटायर टाइमलाइन ऑफ द चंद्रयान 3 जुलाई 14 रे लॉन्च हैला एंड अगस्त 23 रे लैंड भी हे गला ओके सो दिस इज हाउ इट गॉट सेपरेटेड तो मैं देखि परथो एटा हैला हमरो लैंडर हैला अगस्त 17 रे लैंडर सेपरेट हैला प्रोपल्शन मॉड्यूल 2 एंड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड रिड्यूस करके से लैंड हे परला एंड जहाँ भी हमें फेलियर रो सिखी थिलु चंद्रयान 2 रो से सब एठी ता हिसाब रे डिजाइन करा गला तार लैंडिंग साइट बडा गला किसे सिटी डिसाइड करि परिबो ताको कोठी लैंड करियार अछि कोठी नै हैला अधिक फ्यूल भी हमें पठेलु चंद्रयान 3 रे सो दैट जदि ताको लैंडिंग रे किछ असुविधा हैला से देन रही थिबो सिटी लैंड हबनी जेतेबेले ताको कंफर्टेबल लागिबो से लैंड हबो से टाइप रो हमें डिजाइन करके पठाई थिलु क्लियर सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भीतर कोन अछि हमरो गोटे प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड हियर इज द
लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर रोवर टा लैंडर भितर थाए लैंड नाटा सेम ही विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर ओके सो दिस इज द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज माने मु तुमको बुझेली कि अर्थ रो ऑर्बिट्स अर्थ बाउंड मैन्युवर्स कला अर्थ रो ऑर्बिट रे रही की तापरे से लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी को गला एंड फाइनली से लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कला माने मून रो ऑर्बिट को एंटर कला ओके एंड हियर यू कैन सी again लैंडर propulsion module separation तो एठी लैंडर टा केमिति बाहरिला propulsion टू हला 100 किलोमीटर दूर पर्यंत गला propulsion सहित इंटीग्रेटेड मॉड्यूल पूरा गला 100 किलोमीटर पर्यंत 100 किलोमीटर रु 30 किलोमीटर डिस्टेंस रे एटा तमरो विक्रम लैंडर जाई कि धीरे धीरे सी साउथ पोल रे लैंड कला सॉफ्ट लैंडिंग करि परला क्लियर ओके सो एज आई सेड कौन कौन पेलोड पठा जाइथिला चंद्रयान 3 रे मार्च रे कौन कौन पेलोड पठा गला हमें देखिलु कौन समस्त फंक्शन अलगा थिला सिम विथ द चंद्रयान 3 सो रंभा चास्ते आईएलएसए एलआरए दिस 4 पेलोड्स पठा जाइथिला कहा सहित लैंडर पेलोड्स माने लैंडर सहित ए चारटा पेलोड पठा जाइथिला रोवर सहित दीटा एंड तमन प्रोपल्शन मॉड्यूल रे गोटे सो टोटल केते 4 2 1 केते 7टा पेलोड आमे पठैथिलु चंद्रयान 3 रे चंद्रयान 2 रे केतरा पेलोड पठा जाइथिला 11टा पेलोड पठे 11टा पेलोड ना आई होप आई एम करेक्ट आउथर देखि दबा इफ आई एम रॉन्ग 11टा पेलोड आई गेस अच्छा 11टा पेलोड आमे पठैथिलु चंद्रयान 1 रे चंद्रयान 2 रे आमे 13 पेलोड पठैथिलु चंद्रयान 3 रे आमे 7टा पेलोड पठैलु क्लियर So lander payload कौन कौन थिला रामभा रो मेन काम थिला to measure the near surface plasma density and its changes with time then पठा जाय थिला चास्ते विषय इन डिटेल हमें टिके पढिबा because recently news रे थिला चंद्र surface thermophysical experiment to carry out the measurements of the thermal properties of the moon surface near the polar region तापर पठा जाइथिला आईएलएसए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी हला माने इटा कोन मेजर करबो कि मून क्वेक होची कि मून क्वेक रो किछि हिस्ट्री अछि कि मून क्वेक होची कि जेमते हमर अर्थ क्वेक होची सिस्मिक एक्टिविटी माने अर्थ क्वेक तुम बुझि दबो बट से मून रो अर्थ क्वेक केम थबो मून रे मून क्वेक हबो राइट सो मून क्वेक होची कि ए सब जिंस स्टडी करबो कि इल्सा to measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle तो हमरो जो आमे जिम अर्थ रो स्ट्रक्चर गुडा को पढु छ मेंटल कोर ए सब थाए तो सेमती मून रो कोन अछि हला से सब जिंस भी स्टडी करबो इल्सा then we have the laser retro reflector array which is the LRA it is a passive experiment to understand the dynamics of the moon system and प्रज्ञान रोवर सहित आमे किछटा पेलोड पठैथिलु दीटा पेलोड पठैथिलु कोन कोन लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप आ अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सो आर ऑब्जेक्टिव कोन थिला एटा जो LIBS रो ऑब्जेक्टिव थिला क्वालिटेटिव and quantitative elemental analysis and to derive the chemical composition and infer mineralogical composition to further our understanding of the lunar surface so element kon kon present achi hela kete quantity re present achi kemit tangar quality rochi taku study karibo chemical composition study karibo mineral study karibo e sabu jinso karibo now this was different from chandrayaan 1 in the sense ki चंद्रयान 1 भी सब स्टडी करियार कैपेबिलिटीज थिला बट से ऑर्बिटर रे रही की स्टडी करियो विद द हेल्प ऑफ इमेजेस एंड ऑल बट एटा कोन रोवर टा मून सरफेस ऊपर वर्तमान अछि एंड सी ये सब जिंस स्टडी करिवो टू डिटरमाइन एंड व्हाट वाज द टाइमलाइन फॉर द रोवर कि रोवर केते दिन पर्यंत सेठी रही परिबो करि परिबो 14 अर्थ डेज भीतर ही ताको सब सारिबार थिला हला तो सेती भीतर ए दीटा जिंस निहाती से करिवो to determine the elemental composition of lunar soil and rocks around the lunar landing site तो ए जो elements गुडा को देखुछ ए मान को स्टडी करिवो
propulsion module जोटा कि orbiter सहित propulsion module बुलुथिबो ता सहित भी आमे किछिटा payload पठैतिलु किछिटा कोन गोटे payload पठैतिलु which is shape spectropolarimetry of habitable planet earth तो ता काम कोन to future discoveries of smaller planets in reflected light would allow us to probe into variety of exoplanets which would qualify for habitability है ना कि is presence of life चांद पे घर खरीदना ये सब जो हमें कथा हो जो लाइफ थिले ही हमें जाके सेठी सर्वाइव करि परबो ए सब जिंस ए पेलोड्स गुडा को स्टडी करिवे हैला से एटमॉस्फेयर ता केमिति बिकॉज़ से चंद्र माने मून रो ऑर्बिट रे तो रहउची बाकी ता आखो पाखर भी से स्टडी करिवो ना देखिबो कोन होची केमिति कोन होची ए सब जिंस हमें पठैतिलु as payload in the Chandrayaan 3 mission. Now, this was the news, recent news regarding Stutee. What is this Stutee? Ebe just hame padhilu. It was a payload जोटा हमें पठैतिलु लैंडर सहित विक्रम लैंडर सहित चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट सो कोन पे सेटा न्यूज रे थिला आसा देखिबा it revealed the moon surface temperature हैला मून रो सरफेस टेम्परेचर रिवील कला and it becomes the first mission to successfully penetrate the soil को penetrate कला को soil मून रो soil को से penetrate करिया पई सक्सेसफुल हेथिला of a celestial body जोटा का हमें कहू शिव शक्ति लैंडिंग साइट ऑफ द मून से पर्टिकुलर पॉइंट रे से सॉइल को पेनिट्रेट कला टू डिप्लॉय ए थर्मल प्रोब अगेन प्रोब वर्ड ता आछि माने से स्टडी करबो सेठी भीतर को जाय की Stutee was developed by Physical Research Lab Ahmedabad and the Space Physics Lab Vikram Sarabhai Space Center. Objective थिला Stutee रे कोन to measure the lunar surface temperature, thermal conductivity and the temperature gradient to a depth of 100 meter. हैला तो that means moon रो surface रू 100 meter depth पर्यंत probe को पठेई की सेठी ए सब जिंस से स्टडी करिवो टेम्परेचर ग्रेडिएंट माने सरफेस रू तळु को गला बेले टेम्परेचर बढ़ुची ना कमुची ए सब जिंस स्टडी करिवो जेमती आमे पढिबा को आदित्य L1 मिशन भी आमे पढिबा जोथरे की अर्थ सॉरी सन रो अलग अलग लेयर्स अछि तो सेठी केमती टेम्परेचर वेरी करे तो एठी सेमती टेम्परेचर केमती वेरी करची अलग अलग लेयर्स रो माने जदी सरफेस रे केते टेम्परेचर टिके तळु गलु जदी 100 mm तळु गलु सेठी केते टेम्परेचर हमर अर्थ रो भी सिंधी अछि एक्सोस्फियर ट्रोपोस्फियर रो टेम्परेचर अलगा मेसोस्फियर रो टेम्परेचर अलगा ए सब तमे पढिथिबो से सब जिंस हमर स्टडी करिया रे हेल्प करूची Stutee. The probe is fitted with 10 individual temperature sensors made of platinum हैला The findings of the study will provide a comprehensive understanding of the moon's thermophysics and its near surface and subsurface water ice distribution. So main तो थिला कि कहली तुमको फ्रोजन फॉर्म रे हमें वाटर पाइबो तो ताकू भी से स्टडी करिवो नियर सरफेस रे सब सरफेस रे केमिति कोठी वाटर अवेलेबल अछि पूरा थर्मोफिजिकल स्टडी से करिवो लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन and habitation strategies. So future ro chandra mane moon ro amar jaha bhi missions thebo taku ye help karibo with the help of mane understanding all these things a thermophysical concept mane jinsa guda bujhile hi ame further studies kichi kari pariba hela now why it was in news to be specific jodi ame kahiba ki kichita same mane em same experiment alga space agency bi karithile but तुमको ये कहा गला कि it becomes the first mission Chandrayaan Stutee becomes the first mission to successfully penetrate the soil on the moon हैला and on the co site खास करके शिव शक्ति लैंडिंग साइट रे फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल हेज सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी रो जो फिलाइल लैंडर थिला रोजेटा स्पेसक्राफ्ट रो एटा भी विक्रम लैंडर सहित पठैतिलु यूरोपियन स्पेस एजेंसी रो फिलाइल लैंडर थिला ता सहित से माने गोटे पठैतिले गोटे कोन पेलोड हैला रोजेटा स्पेसक्राफ्ट रे जोटा के लैंड करथिला
से छड़ ना गुड़ाक हम इंपोर्टेंट नहीं. इट्स मल्टीपर्पज सेंसर्स फॉर सरफेस एंड सबसरफेस साइंस instrument on board was designed to measure the temperature by digging into the terrain. However, scientists could not deploy it due to the awkward landing position. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी थरे ट्राई करथिला कि से डिग करिवो मून रो सरफेस को एंड टेम्परेचर स्टडी करिवो, टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करिवो. तो बट एटा वो अनसक्सेसफुल हेथिला. देन नासा थरे करथिला इनसाइट रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंड करथिला मार्च रे 2018 रे हैला. सो इट कैरिड अ टेम्परेचर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द हीट फ्लो एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. इट कंसिस्टेड ऑफ ए सेल्फ हैमरिंग नेल हैला, माने जेंति आमे कंटा बाडो तो गोटे कंटा से पठेइथिला, तार ना थिला द मोल सेल्फ हैमरिंग नेल, माने निजे निजे से कंटाटा बाडे हबो एंड से penetrate करिवो on any surface, माने at least 5 meter below the Mars surface penetrate करिवो. but से कौन करथिला, it could penetrate only up to 35 centimeter, so unable to get any temperature data. बुझिबो तो टेम्परेचर वेरिएशन मार्स रो यूजिंग दिस टेक्निक्स माने डिगिंग रे भी फेल हला, हमरो सेल्फ हैमरिंग नेल भी फेल हला. सो बोथ द इंप्रूवमेंट्स माने इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड ए हैमरिंग डिवाइस हला. तो एटा भी तमे जो देखिलो डिगिंग करिवो केमदे हैमर करके डिग करिवो ना, एटा भी तमे नेल यूज करके हैमर करिवो. तो दीटा जको तमरो ए जो म्यूपस हला तापर एटा तमरो HP3 हला, दे यूज्ड ए हैमरिंग डिवाइस. But Chaste probe was pushed into the soil by a rotating device. हला जेमते बोरिंग हमर हुए से हम हैमर यूज करू के रोटेट करी करी तमे देखिथिबो एमती ऑगर बोरिंग टाइप रो यूज करा जाय जिंस गुडा को हला, माने एमती बोरिंग टाइप रो जेमते हम बोरिंग करू हला ऑगर बोरिंग यूज करी तक हुआ जे. सो सेमिति सेल्फ से तारो rotating device use है कि it was pushed into the moon's soil हैला. and केते मीटर पर्यंत से केते mm पर्यंत से कैपेबल थिला, 100 mm पर्यंत से जाई पारला. whereas एमाने नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी से माने जाई पारि नथिले सेमती. तो नासा भी up to 35 centimeter जाई पारथिला मार्स रो सरफेस रे using some techniques like this हैला. so this was the uniqueness of the Chaste payload that we have sent with the Vikram lander. Okay. Okay, so now we have after all the important missions that we have read, जेमती कि हमें पढ़िलु चंद्रयान 1 2 3 मंगलयान विषय में पढ़ी सार राइट. तो ये सब किए डिजाइन करछन्ते, माने ये सब कहा द्वारा डेवलप एंड ऑल, इसरो. एपर्यंत आमे आउ कोनोसी स्पेस एजेंसी विषय कथा हे ना हो. एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो रे भी आमे इसरो रो ही विषय कथा हबा, माने इसरो रो कोन मेजर मिशंस, बिकॉज़ दैट इज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो राइट. तो इसरो विषय जो आमे कथा हो जो इसरो रो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टा भी हमको जानेबा निहाती दरकार. तो एतिकी जेतिकी भी मिशंस हलानी अपार्ट फ्रॉम इसरो, इसरो इज अ बॉडी, इसरो छड़ा भी अन्य किछिटा बॉडीज अछंती which are directly or indirectly they are helping ISRO for all these missions and satellites हैला. तो जेमिति कि तमे एठी देखि पारथबो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ इसरो. तो एठी प्रथम आसंती हमरो obviously सबु जिंसो अंडर द प्राइम मिनिस्टर अंडर रे वी हैव द स्पेस कमीशन एंड स्पेस कमीशन अंडर रे हमरो अछि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. Okay, and under this department of space we have InSpace and all of these bodies eta sab gote side re achi, and in this side we have Antariksh NSIL of ISRO council. तो main bodies जोटा हमको मन रखियार अछि InSpace कोन इन पढिबा हम नेक्स्ट स्लाइड रे. एंड मु एटा को काहे कि अलगा रखेली NSAI एंड अंतरिक्ष ए सब को काहे कि अलगा रखेली, because this is an autonomous body. InSpace गोटे autonomous body. okay, सेटा इसरो रो अंडर रे अछि कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर रे अछि तमे कहि परिबनी, बुझ परस. this InSpace is an autonomous body
जी इसरो सहित मिसिकी काम करे कौन तार काम सेटा हम निहार देखिबा नेक्स्ट किछि स्लाइड रे अंतरिक्ष NSIL ए सब हला गवर्नमेंट ओन बॉडीज सो अपार्ट फ्रॉम इसरो वी आल्सो हैव ऑल दिस बॉडीज एज वेल किंतु आमे सब क्रेडिट इसरो को दो बट जणे मनुष्य तो सब करि परिबनी तार जेमती गोटे कंपनी रे हेड जणे थाए डायरेक्टर जणे थाए किंतु तांको छडा भी अन्य एम्प्लॉइज थांती अलग अलग काम करिया तो सेमिति भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी ता अंडर रे थांती जार फंक्शंस अलग थिबो कि मार्केटिंग रे थिबो कि सेल्स रे थिबो कि प्रोडक्शन रे थिबो राइट तो सेम चारटा आरो भी हमके जानि थिबा दरकार ओके सब जिनस हमर आसंती कहा अंडर रे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर रे बट दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड एटा हमर हला गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज ओके एंड ए सब जिनस जो देखु छ VSSC LPSC SDSC ए सब कोन हला ए सब तमरो अलग अलग सेंटर्स था इसरो रो जेमते हमें जेतबेले GSLV PSLV ए सब पढिलु सब कोठु लॉन्च हुए सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर और सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन श्रीहरिकोटा तो एटा होला सेटा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैला PRL माने तमरो फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी NARL माने तमरो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी ओके IIST इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी नॉट साइंस टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हैला एमती गुड़ाए तुम SAC माने हला तुम स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ये सब they all come under the Department of Space and under the Space Commission. So केबे Space Commission हेतिला देखो इसरो रो फुल फॉर्म हमें सब जानि छ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1962 रे it was set up initially okay it was set up in 1962 सेतबेले under the suggestion based on the suggestion of Dr. Vikram Sarabhai it is set up हेतिला एंड ताको स्टार्टिंग रे इसरो कहा जाउ नथला ताको स्टार्टिंग रे कहा जाउथला इनकोस्पार माने 1962 रे जतबेले एटा सेटअप हैला विक्रम साराभाई को रिकमेंडेशन रे सेतबेले को कहा जाउथला इनकोस्पार माने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार टा को रिमॉडल करा गला इसरो रे 1969 रे हैला and settable it was working within the Department of Atomic Energy. Please remember this. After this 1972 re Government of India institutionalized space research activities in India by setting up the Space Commission. What is Space Commission ona gala 1972 re and the Department of Space rakha gala ta under re 1972 रे तो जब इसरो फर्स्ट सेटअप हेतिले सेतबेले ए किछि स्पेस कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ए सब किछि नथिला हैला तो एटा हैला तमरो 1972 रे देन इसरो को आमे माने रखिलो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर इट व्हिच एक्ट्स एज अ प्राइमरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सो इसरो होची गोटे कोन नेशनल स्पेस एजेंसी जारो मेन काम कोन हैला रिसर्च करबो and it is a developing arm under the Department of Space. Then ISRO has the primary role of performing tasks related to space-based operations, space exploration, international space cooperation and development of related technologies. Current chairperson of ISRO ki hai? Dr. V. Narayana. He is also the chairperson of the Space Commission and he is also the secretary of the Department of Space. So Department of Space रो secretary, Space Commission रो chairman, आउ ISRO रो chairman से गोटे लोको ये ISRO रो chairman हबो जे भी थिबो he is also the chairman of the Space Commission, he is also the secretary of the Department of Space. So currently who is the chairperson? Dr. V. Narayana. ठीक है so this was all about ISRO. Now coming to the InSpace कौन Indian National Space Promotion and Authorization Center. Remember as I said it is a single window independent nodal agency that functions as a autonomous agency. Okay, this is not under the government of India. It is an autonomous agency in the Department of Space. Okay.
So it is an autonomous agency in the Department of Space. Main kama dara kono, it facilitates private sector participation in the space sector. Now every sector re ame privatization kolone bartaman. Recently ame देखिथिलु कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे भी कंपनीज को आमे किछि दायित्व दउछु, आम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करूछु से केस रे हला प्राइवेटाइजेशन करूछु. सो एथरे भी काहे कि होबनी, तो एथरे भी बहुत प्राइवेट कंपनीज माने भी बहुत जिंस डेवलप करूछन. रूमी 1 होची गोटे प्राइवेट कंपनी डेवलप करछि. रूमी 1 कोन निजे रिसर्च करो सर, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस बट मु कहूछि हला. तो रियूजेबल रॉकेट रूमी 1 होची रियूजेबल रॉकेट जोटा गोटे प्राइवेट टेक्नोलॉजी और प्राइवेट कंपनी सेटा डेवलप करछि. तो सेमिति इन स्पेस कोन करबो, से इसरो रो जहा भी फैसिलिटीज अछि ताको प्राइवेट सेक्टर को पहुंचेबा को हेल्प करिवो. सो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड द इसरो. So main function jodi ame कहबा, it promotes, enable, authorize and supervise the building of launch vehicles and satellites and providing space based services, sharing of space infrastructure जहाँ भी इसरो रो infrastructure अछि ताको share करिबा कहा से, तो obviously private organization सहित से माने सेही facilities use करके निज जिंस डेवलप करि परिबे. Establishment of new infrastructure and facilities around the country. It will also serve as a link between ISRO and private sector companies, making efforts to make the best use of India's space resources and increase the space based activities. So जदि private sector काम करिबे ISRO फैसिलिटीज यूज करिकी, तो जहाँ भी छोटो मोटो सैटेलाइट्स की छोटो मोटो लॉन्चेस से सब प्राइवेट सेक्टर संभाली परिबो, एंड so that ISRO can focus on major missions. एमाने जदि प्राइवेट सेक्टर जदि माइनर मिशंस रे काम करिबे, ISRO can focus on major missions like गगनयान, जोटा कि हमें पढ़िया को जाउ छै किछ समय पर. ओके, अंतरिक्ष अंतरिक्ष हमें पढ़थिलो को पटे थिला, एपटे थिला. सो दिस इज नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी, इट इज ए government owned company that acts as a commercial and marketing arm of ISRO. So commercial purposes पाई जो हमरो कंसल्टेंसी सर्विसेज अछि, मार्केटिंग सर्विसेज अछि, से सब के करिवो अंतरिक्ष. It works under the administrative control of the Department of Science and तार major function हला, it is responsible for promoting ISRO's products, promotion करिवो ISRO रो प्रोडक्ट रो, सर्विसेज रो एंड टेक्नोलॉजीज रो. It also provides major technological or technical consultancy services and transfers technology to the industry. Okay, so in space privatization help करे, एटा commercialization रे एटा help करे. Even NSIL जोटा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड रो भी ऑलमोस्ट से कमर्शियल काम गुड़ा को ये भी हैंडल करिवो. अंतरिक्ष आ NSIL are the commercial arms of ISRO हमें कहि परिबा. Okay, so NSIL New Space India Limited was established in 2019, बहुत recently established ହେଇची. It is again a completely government owned undertaking. It is not a autonomous body, it is under the government undertaking. It is under the administrative control of the Department of Science, or sorry, Department of Space, to commercially exploit the research and development work of the ISRO. Hello, so this is the main task of the NSIL. तो NSIL हमारा commercial arm, अंतरिक्ष भी commercial arm हैला. तो जति भी consultancy services से सब किए करिवो अंतरिक्ष, promotion किए करिवो अंतरिक्ष, and in space कौन करिवो, it helps in it acts as a link between the private sector companies and ISRO. एटा ठीक है मन रखिबो. चलो, can you answer me now this question? Dash is India's first mission or first space based solar mission to study the sun. कौन sun को स्टडी करिया पे हमें कौन मिशन रखिछु, ता ना होची आदित्य L1. कौन आदित्य L1. ना L1 तार कौन पे ना दिया हिथिबो, आदित्य तो हमें जानिछु आम सूर्य भगवान करो आ गोटे ना हला आदित्य, राइट. सो आदित्य L1 कौन पे,
L1 because हमें पढ़ी थिलु Lagrange points, Lagrange 1 2 3 4 5 पांचटा Lagrange point विषय हमें पढ़ी थिलु, which are also called as the parking space of the space, right? So Aditya L1 कौन पे because ताको हमें रखी चे कोठी L1 point रे Lagrange point 1 point रे अच्छी सेथि पे तना हो जी Aditya L1. Okay, तो एठी तमे देखि पारथबो L1 टे केते दूर बाय द वे Earth रू L1 point is 1.5 kilometer, sorry 1.5 million kilometer हैला. तो एठी तमे देखि पारथबो तो Earth रो orbit ठू दूर दूर को गला and then से गोटे cruise phase नै कि L1 रो halo orbit रे एंटर करूची. halo orbit कोन पे गोटे normal elliptical orbit केमती थिबो, halo orbit माने it's almost like a type रो माने बुझी परछो exactly elliptical तो हम कहि परिबनी बट से भितरे भी तार मूवमेंट थिबो जो कोइ लचकीलापन थिबो that is in the halo orbit, so it is something like this हैला. ठीक है, कर्व्ड टाइप रो पाथ थाए तो क्रूज फेज रे जाई कि एंटर करे halo orbit of the L1 रे Aditya L1. So obviously Aditya ना रे पठाई छी to study about the sun. तो तारो मेन काम कौन थिबो से सन विषय रे पढिबो, तो सन रो कोन कोन पढिबो हमें देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे. बट जदि तुमको मन नै अगेन L1 L2 L3 L4 L5 पांचटा Lagrange point से भितरु Aditya L1 कोठी अछि 8 L1 point रे between the sun and the earth हैला. this is the earth moon, एटा हमरो sun, एठी Aditya L1, एठी हमरो earth. तो earth आउ sun मझे रे अछि, सो से sun को भी इजीली पढ़ी परिबो माने स्टडी करि परिबो sun ऊपरे. as well it can also study the earth atmosphere भी माने earth और sun भितरे जो atmosphere थिबो हैला सेटा को भी से स्टडी करि परिबो इजीली because of its location. Okay, so main काम हैला to understand the coronal heating and solar wind acceleration. कोरोना माने एक को कोरोना जो हमरो हेतिला डिजीज, is it talking about that corona? no. जेमिति हम अर्थ रो भी अलग अलग लेयर्स अछि, सन रो भी सेमति अलग अलग लेयर्स अछि हैला. सो अर्थ को जदि हम मझरु काटी दबा we have core, we have mantle, we have the crust. तो सन को जतबले हमें काटिबा एमति तार क्रॉस सेक्शन काटिबा तो we will also see a core inside the sun हैला. तो कोर हे गला, कोर परे तमरो रेडिएटिव जोन आसीबो, गोटे कन्वेक्शन जोन आसीबो, देन यू हैव द फोटोस्फीयर. दिस इज योर ये जो थिन लाइन रे देखुचो दैट इज फोटोस्फीयर. देन यू हैव द क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर. तार ऊपर आ गोटे लेयर जो आउटर लेयर तमे देखुचो पूरा इनविजिबल लेयर, दैट इज नथिंग बट द कोरोना. सो कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन. तो ताको खास करिकी स्टडी करिवो आदित्य L1, कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन. ऑल्सो आम अर्थ रो जेतबेला हमें देखु अलग अलग एटमॉस्फेयर वेरी करे, लाइक ट्रोपोस्फियर, वी हैव स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर ये सब अच्छी. तो टेम्परेचर भी वेरी होची बट ग्रेजुअली वेरी होची. टेम्परेचर इधर धीरे धीरे कमुची न धीरे धीरे बढ़ुची सेमती किछि गोटे होची ना. किंतु सन रो जो लेयर्स अच्छी फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, कोरोना, तो इतने ग्रेजुअली देयर इज नो होमोजेनियस वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर. माने को गोटे लेयर रे तमरो ठंडा बहुत ठंडा हे जे फिर आरो लेयर रे फिर गरम. एटा सन माने केते उत्तप्त हेथिबो भाबुचो, भाबी पड़छो राइट. सन माने केते गरम, तो तार लेयर रे भी हमें किछटा टेम्परेचर वेरिएशन पाओ. किछटा लेयर ठंडा थाए एज कंपेयर टू its previous layer. तो ताकू भी स्टडी करिवो किए आदित्य L1. so it will also study the temperature anisotropy. okay, that means temperature equal नहीं अलग अलग layers रे कोठी कमुची कोठी बढ़ुची, अगेन कमुची अगेन बढ़ुची. तो ए जिंसटा स्टडी करिवो आदित्य L1. apart from that it will also understand the initiation of coronal mass ejection, solar flares and near earth space weather. So that means as I said केटा अर्थ आउ सन मझे अछि, आदित्य L1 कोठी प्लेस अछि in between the earth and the sun.
तो ये पूरा एटमोस्फियर टाकू से पढ़िबो एटा तो पढ़िबो रिगार्डिंग द सन एंड ए एटमोस्फियर भी पढ़िबो राइट ता विषय भी स्टडी करिवो सो इट विल आल्सो रीड अबाउट द और स्टडी अबाउट द अर्थ स्पेस वेदर एज वेल ओके एंड जेमिति सब मिशन आम पर्यंत पढ़िलु जो थे कि पेलोड्स गुड़ाक पठा जाउथुला आदित्य L1 रे भी किछुटा पेलोड पठा जाइछि सो टू बी स्पेसिफिक केतेटा पेलोड पठा जाइछि 7 पेलोड्स हैला 7टा पेलोड्स पठा जाइछि कौन से गुड़ाक VLC SUIT सोलेक्स हिलियोस एस्पेक्स पापा मैक तो समस्त अलग अलग फंक्शन थाए तो आर भी सेमती अलग अलग सब फंक्शन अच्छी है सो जदि आम देखा VLC रो कौन फंक्शन टू स्टडी अबाउट द कोरोना आउटर लेयर को स्टडी करिवो SUIT कौन करिवो टू स्टडी द फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर दीटा अलग जो हमर लेयर्स थिला हैला क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर आपको स्टडी करिवो के SUIT सेमिति सोलेक्स गोटे स्पेक्ट्रोमीटर माने इट हैज ए सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियोस हैज ए हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैला स्पेक्ट्रोमीटर माने इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न्स अराउंड द सन एस्पेक्ट्स विल स्टडी द सोलर विंड पापा विल स्टडी द सोलर विंड इन सिटू मेजरमेंट माने सेही बट ऑन द साइट मेजरमेंट हबो एंड मैग विल स्टडी द और विल मेजर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सन तो ये सब जिन स्टडी करेंगे ये 7टा पेलोड सो यू कैन सी हियर दिस इज द आदित्य L1 एंड एपटे आमर किछिटा पेलोड्स अछंती एंड एपटे किछिटा पेलोड्स अछंती ओके तो बेसिकली टू स्टडी द electromagnetic effects between the sun and the earth and the temperature variation in the sun which will acha so these are some pictures from the taken from the suit माने हमर जो सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जे कि हमर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को स्टडी करिवो तो से किछटा फोटोस पठैथिला एंड दिस आर द फोटोस ऑफ द सन किते सुंदर देखा जाउछि ना चलो नेक्स्ट इज अ very important mission very important for exam perspective of view because it is the launch heini but it is on the verge of launch and it is the most aspiring mission of ISRO and of India as well okay and बहुत challenging भी हेलो तो गगनयान रे कोन हबो गगन माने स्पेस so space को किए जीवो human beings will go into the space okay it is India's first manned space flight program जो थरे human being को space को पठा जीवो undertaken by the ISRO so जल्दी गगनयान रे हमें सक्सेसफुल हे जाऊ जोटा कि हमर हबार अछि by next year or maximum by 2027 तो जल्दी हमें सिथिरे सक्सेसफुल हे जाऊ then we will be the fourth country to send human beings into the space first तीनटा कंट्री किए किए USA रशिया तो सबुथरे आगरे then China and आमे हे जिबा fourth country will be India okay which will be sending human being to the space okay so ए गगनयान रो मेन एम ही हला सेटा कि आमे ह्यूमन बीइंग को स्पेस को पठेबार कैपेबिलिटी रखिछु एंड तांको सेफली अर्थ को वापस भी आनी परिबो हला दैट इज ओनली द मेन एम ता छोड़ा किछि नै सेतिक भी तमे अचीव कर देलु इट विल माने बी ए वेरी बेस्ट माइलस्टोन ऑफ ISRO दैट वी आर गोइंग टू कैप्चर so the mission will demonstrate India's human space flight capability by launching astronauts to a low earth orbit you remember we read about different types of orbit low earth orbit medium earth orbit तो low earth orbit माने तमरो 200 रु अराउंड I guess 2000 किलोमीटर केते थिला कि 4000 किलोमीटर मते मन पड़नी एई वीडियो रे हमें देखिछु स्टार्टिंग रे राइट सो से रेंज 200 किलोमीटर रु 2000 किलोमीटर रेंज रे हमरो हला लो अर्थ ऑर्बिट तो लो अर्थ ऑर्बिट को एंड टू बी स्पेसिफिक 400 किलोमीटर दूर को
अर्थ रो सरफेस रो 400 किलोमीटर दूर को आमे पठेबू ह्यूमन बीइंग्स को इन ए spacecraft. Okay, so the mission will demonstrate India's human space flight capability by launching astronauts to a low Earth orbit above the Earth for a 3-day mission. पूरा 3 दिन रो मिशन रहबा 3 दिन से माने ए लो अर्थ ऑर्बिट रहिबे, then they will come back to the Earth. So after that they will be brought back to the Earth safely with a landing in Indian sea water. Okay, safely se mane kemti land karibe. Name Gaganyaan translates to skycraft in Sanskrit. Gaganyaan mane skycraft, and it is, as I said, it is the most ambitious program of ISRO, and it signifies India's intent to become a significant player in the field of human space exploration. Who was the first Indian to go into the space? Who was the first Indian to go into the space? Rakesh Sharma, है ना? And recently Subhanshu Shukla भी जाइथिले. But Rakesh Sharma जो जाइथिले से सोवियत यूनियन तरफ रु जाइथिले. Indian, he was an Indian, but से जो मिशन ପାଇଁ जाइथिले तो it was all entirely of the Soviet Union. And एबे जो Subhanshu Shukla गले, that was also a NASA's mission. ସେଥିରେ से जाइथिले, but specifically तांको ही कौन पे चूज करा गला, so that it will be helpful for the Gaganyaan mission, because Subhanshu Shukla will also be going in the Gaganyaan. हैला सेति पे so तांके pre-hand experience नहीं किया आसिले with the exam 4 mission. We will be also reading about the exam 4 mission here. चलो. So what are the objectives? As I said, the primary objective is to demonstrate India's capability to send humans. So India is capable of sending humans into the space and return them safely. चला तो बहुत डाटा तुम्हें पाइबो कि बहुत जन almost 600 प्लस लोको स्पेस को जाई के आसे सारले ने अलग अलग कंट्रीज रो, बट जाई के सेफली रिटर्न हे परिबे तो दैट इज द मेन थिंग हला. तो सेफली तांको हमको बैक आनियार अछि. सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, and demonstration of human space flight capabilities, development of critical technologies such as a human rated launch vehicle. तो जितने की भी launch vehicle हमें पढ़िलु PSLV GSLV, एथरे भी GSLV यूज हबो, but GSLV को टिके modify करके यूज करा जिवो, because we are not only sending the satellite here, we are also sending humans in under that spacecraft, right? तो human rated launch vehicle को भी टेस्ट करिवो ए मिशन टा, and establishing protocols for crew training, recovery and rehabilitation. So जेतेबेले Subhanshu Shukla came back from the exam 4 mission, तांको भी प्रॉपर से देखु तमे देखिथिबो वीडियो से प्रॉपर्ली चली पार नथिले, यू नो, बिकॉज़ सेथिकार एटमॉस्फेयर अलगा एटिकार एटमॉस्फेयर अलगा. तो दैट रिहैबिलिटेशन भी हमको करिया को पड़िबो एथिरे जो मन को हमें पठेबा. मिशन ड्यूरेशन इनिशियली 5 ରୁ 7 दिन थिला, बट वर्तमान को आउजी इट विल बी ए 3-day मिशन इन ए 400 किलोमीटर ऑर्बिट. एंड एज आई सेड एथिरे भी GSLV Mark 3 हमें यूज करबा एज ए लॉन्च व्हीकल, बट विथ सम मॉडिफिकेशन, हैला. आको बाहुबली रॉकेट भी कुआ जाय GSLV MK3, बट विथ सम मॉडिफिकेशन आको यूज करा जाय, बिकॉज़ वी आर सेंडिंग ह्यूमंस, so we have to be very careful about all this. Okay, this mission aims to establish a framework for long-term national and international collaborations in space travel and research. Okay, next, so this is the profile, mission profile of Gaganyaan. तो एठु आमे GSLV Mark 3 रु एमान को पठेलु. Mark 3 रु पठेला पर तमे एठी देखिथबो किछटा ए ब्राउन कलर रो ऑब्जेक्ट देखुथबो, हैला. तो ए ब्राउन कलर रो ऑब्जेक्ट्स कोन कोन, एटा होछि तमरो क्रू मॉड्यूल, ब्राउन कलर टा होछि तमरो क्रू मॉड्यूल, ए ग्रे कलर रे जोरा तमे देखुछो दैट इज नथिंग बट योर सर्विस मॉड्यूल. तो दीटा मॉड्यूल को कंबाइन करले ए एंटायरली ए जिंसटा को हमें कहिबा ऑर्बिटल मॉड्यूल. तो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल को हमें पठेबा कोथरे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल GSLV रही. सो GSLV Mark 3 derived human rated launch vehicles. GSLV Mark 3
को टिके मॉडिफाई कराई सो दैट आम ह्यूमन बीइंग्स को पठे परिबा सेतरे क्लियर सो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल इज कंप्राइज्ड ऑफ द क्रू मॉड्यूल जो थरे कि क्रू मेंबर्स रहिबे तो जो ह्यूमन बीइंग्स हमको पठेबा से माने रहिबे एंड देन देयर इज ए सर्विस मॉड्यूल so it is the heart of the Gaganyaan kon jancho the sophisticated engineering and technology hala this engineering and technology is the heart of the Gaganyaan program and it will consist of two parts as I said there will be a crew module and then there will be a service module which together will form the orbital module ताको एमिति डिजाइन करा जायछि कि से गोटे सेफ और हैबिटेबल एनवायरनमेंट से प्रोवाइड करिबो फॉर द क्रू इन स्पेस हैला तो एठी हमर रहिबे एस्ट्रोनॉट्स माने एटा तमर रहिला गोटे सर्विस मॉड्यूल हैला बडा एस्ट्रोनॉट्स माने ए पोर्शन रे ही रहिबे तो ए क्रू मॉड्यूल टा जतबेल आउथरे वापस आसीबा तो से क्रू मॉड्यूल टा सेपरेट हे जिवो सर्विस मॉड्यूल टू केमिति देखो सो जीएसएलवी रु से माने और ह्यूमन ग्रेडेड लॉन्च व्हीकल रु लॉन्च करा गला तांको 400 किलोमीटर ऑर्बिट रे लो अर्थ ऑर्बिट रे एंड एटा तमे देखि परथबो ऑर्बिटल मॉड्यूल हैला तो ए ऑर्बिटल मॉड्यूल किछि दिन से माने रहिले 3 दिन पर्यंत रहिले देन अगेन दे विल कम बैक टू द अर्थ तो जते बेले वापस आसीबे तमे एठी देखि परथबो एसएम टा अलगा हे जिवो एसएम माने सर्विस मॉड्यूल अलगा हे जिवो आ एठी तमरो सीएम मॉड्यूल अलगा हे जिवो क्रू मॉड्यूल अलगा हे जिवो एंड से क्रू मॉड्यूल रे किछटा जिंस थिबो व्हिच विल हेल्प to land them safely हैला and ता regarding किछिटा experiments और किछिटा pre tests इसरो कंडक्ट करि सरलानी ऑलरेडी सो गगनयान मिशन रे हमें फाइनली जो ह्यूमन बीइंग्स को पठेबा ता पूर्वरु बहुत गुडा टेस्ट हे सरलानी ऑलरेडी एंड ता पूर्वरु गुटे अनमैन्ड टेस्ट भी हबो हैला गुटे अनमैन्ड व्हीकल टेस्ट भी हबो व्हिच इज योर ये जो अनमैन टेस्ट हम जस्ट सेकेंड से पठा ये किए शी इज ए रोबोट नेम व्योम मित्रा व्योम माने हला स्काई हैला सो व्योम मित्रा एंड शी इज ए फीमेल हाफ humanoid robot half humanoid कौन पाए because she only has hands and no legs है ना so only एतिकी portion जो देखु छ सेतिकी ही visible सेतिकी अच्छे पूरा बना है छी there are no legs of Vyomitra also she can speak English and Hindi as well okay so she will be sent into the space first आमे आंगो पठे की टेस्ट करिबा whether everything is going all right or not and after this we'll finally launch the Gaganyaan with human beings हैला so जदि हमें stages देखिबा as I said बहुत गुडे टेस्ट हबो मु तुमको कहली राइट अच्छा बहुत गुडे टेस्ट हबो तो जते बेले से माने री एंट्री करिवे अर्थ रो एटमॉस्फेयर को एरो ब्रेकिंग सिस्टम यूज करके जो जिते वेलोसिटी रे से माने बुलुथले ना एते अधिक वेलोसिटी रे निहाती थिबो तो से वेलोसिटी टा को हमको डिक्रीज करियर अछि एंड हमको सेफली स्प्लैश डाउन करियर अछि सो ए जो क्रू मॉडल रे ही क्रू मेंबर्स थिबे से क्रू मॉडल टा आसीबो से क्रू मॉडल रो किछटा पैराशूट्स बारिबो एंड बहुत पैराशूट्स सेतिर थिबो अलगा अलगा फंक्शन से पैराशूट्स मान करो सेटा भी हमें देखिबा रिसेंटली तारो टेस्ट भी हेची गोटे हैला तो से पैराशूट डिप्लॉयमेंट हबो एंड देन सेफली दे विल बी स्प्लैश डाउन इन द इंडियन वाटर्स हैला पानी भीतर जेमती देखिथिबो तुम एग्जाम 4 रो पानी भीतर आसी से माने लैंड करले एटा भी सेमती पानी भीतर से माने लैंड करिवे एंड देन तांगर रिकवरी प्रोसेस से स्टार्ट हबो फिर एठु लोक जाईकी से मानको सेठु आनिवे this is the entire system so launch कोठी करा जिवो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रु aboard the human rated launch vehicle which is a variant of ISRO's reliable heavy lift launcher माने GSLV रो ही modified version हमें कही परिबा
The launch vehicle has been modified for crewed spaceflight, as I said, and it will be equipped with a crew escape system. What a crew escape system roiba. Which fellow normal GSLV रे हमर सेमती किछि crew escape system न थे because हमें को crew members को पठौनु सेतरे हमें satellites पठौ but during the launch or after the launch किछि भी problem देखा गला तो at least जो माने जाइथिबे से माने safely escape हे परिबे हैला सेति गोटे क्रू एस्केप सिस्टम डिजाइन हेची सी लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएलवी रे ओके सो दैट जदी लॉन्च बळे की लॉन्च रो जस्ट परे किछि असुविधा हला तो दे कैन बी सेफली इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर सेति गोटे क्रू एस्केप मिशन कराई कि यार सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हे जाइछि सो किछि भी जदी इमरजेंसी देखा गला ड्यूरिंग द असेंट फेज और ड्यूरिंग द लॉन्च then they can be escaped safely because the safety of human is first in Gaganyaan mission. Human रो life को हमें danger रे risk रे रखी कि किछि achieve करले किछि मिलबनी हम right next. So as I said there are different kind of tests that will be performed. तो recently हमें August 2025 रे हैला हमें देखिथिबु गोटे हेतिला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट दैट इज नथिंग बट द पैराशूट रिकवरी टेस्ट और पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट जोटा हमें ए फिगर रे तमे देखिला हैला कि केमिति से माने पैराशूट रो बाहरीबे पैराशूट रो फिर जो जेतबे लैंड हबो वेलोसिटी कमिबो कि नै विथ टाइम हैला एंड सेफली से मान को केमता हम इवैक्यूएट करि परिबो तो ए पैराशूट डिप्लॉयमेंट प्रॉपर्ली टेस्ट होबा दरकार तो दैट हैज बीन डन under the integrated airdrop test. Integrated airdrop test कौन पे because इटी गोटे parachute काम करूनी बहुत सारा parachute एक का संगर open हो बारची है ना so ए test भी ही सर्ची test vehicle जोड़ा में पठे बस सेटा भी तारो भी test ही सर्ची pad abort test ही सर्ची unmanned flight जो थरा में व्योम मित्र को पठे बा सेटा ए वर्ष एंड रे December 2025 रे सेटा प्लान हिच आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द अनमैन्ड फ्लाइट माने से जाय के उधर आसिला परे वी विल फाइनली लॉन्च द मैन्ड फ्लाइट इन 2026 to 27 माने मे बी ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 2026 और मे बी एट द अर्ली टाइम ऑफ द 2027 तो आपको शॉर्ट फॉर्म दिया है तमरो G1 हैला एंड आपको शॉर्ट फॉर्म तमरो दिया है G2 तो G1 माने अनमैन्ड फ्लाइट जो थरे व्योम मित्र जीवो G2 माने जो थरे ह्यूमन बीइंग्स जीवे क्लियर सो एज आई सेड कि क्रू एस्केप सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट ही सरतिला केबे अक्टोबर 2023 रे इसरो कंप्लीटेड ए सिमुलेशन टेस्ट टू अबॉर्ट द सिचुएशन फॉर द क्रू एस्केप सिस्टम ओके तो जो थरे की तमरो प्रॉपर्ली से माने एस्केप हे पारुछंती कि नहीं तो ऑब्वियसली रियल ह्यूमन बीइंग्स को तो पठा जाय नथिबा बट डमी मॉड्यूल्स यूज करके एटा करा जाय छी हैला सो क्रू मॉड्यूल को हमें केमती बाहर करि परिबा माने गोटे टेस्ट व्हीकल तमर एठी अछि हैला जोटा हमें लॉन्च व्हीकल यूज करिवो एंड दिस इज द क्रू मॉड्यूल तो क्रू मॉड्यूल इमरजेंसी टाइम रे क्रू मॉड्यूल तो सेपरेट हे पारुछि कि नै टेस्ट व्हीकल टू से सिमुलेशन टेस्ट ऑलरेडी हैज बीन परफॉर्म्ड इन October 2023 then we have the objectives of the TBD1 कौन थिला basically flight demonstration and evaluation of the test vehicle subsystems then flight demonstration evaluation of the crew escape system crew टा separate हे पारुछि कि नै माने जो crew escape system और crew module टा separate हे पारुछि कि नै crew module रो characteristics and तार deceleration system demonstrating at higher altitude and semanकर माने तारो recovery तो ए सब जिंस ऑलरेडी टेस्ट हे सारी छी अंडर द crew escape system TBD1 तो एटा हला बेसिकली TBD1 कोन पे Gaganyaan flight test vehicle abort mission test vehicle TB माने test vehicle और D1 हला ए जो crew escape system टा हला so this has been done then as I said August रे हमरो integrated airdrop test भी हे सर्च ISRO conducts airdrop test for the Gaganyaan okay तो इटी तमे देखि पारथबो
कि एका संगरे बहुत सारा पैराशूट खोलुची कि नहीं से सब टेस्ट हेतिला एंड से टेस्ट बेसिकली कौन हेतिला गोटे डमी क्रू कैप्सूल यूज करा जायतिला माने एक्चुअल लोक ऑब्वियसली नथिले गोटे डमी क्रू कैप्सूल यूज करा जायतिला एंड को हेलीकॉप्टर यूज करा जायतिला तांको रिलीज करिया पे पर्टिकुलर हाइट रे ताको नेबे एंड पर्टिकुलर हाइट रो ताको रिलीज करिवे एंड देन देखिबे पैराशूट गुडा को खोलुची कि नहीं तो एटी तमे देखि परतो गोटे हेलीकॉप्टर व्हिच हेलीकॉप्टर इज दिस चिनुक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स रो हमरो चिनुक हेलीकॉप्टर रो गोटे डमी मॉड्यूल यू नो छाड़िले केते हाइट रो छाड़िले 4 किलोमीटर हाइट रो 4 किलोमीटर हाइट रो क्रू मॉड्यूल रिलीज करा गला फ्रॉम द चिनुक हेलीकॉप्टर ओके डमी क्रू कैप्सूल रिलीज करा गला एंड तम एठी देखि परथबो गोटे पैराशूट नुहो there is a stabilizer parachute tapare gote apex covered separation then rock chute deployment then tinta pilot chute deployment and finally fully deployed main chutes ita tamar kono eta hala tamar crew module so then there will be proper landing in the Indian water okay so this is the entire process of the integrated airdrop test that has been done by ISRO recently to demonstrate the reliability and sequencing of the parachute को parachute केतबळे खोलिबो को टाइम रे खोलिबो खोलुची कि नाही री एंट्री कला बेले हला to ensure astronaut safety in descent phase and landing phases which is the riskiest part of human space flight जीवाटा बड़ कथा नो आसीबाटा जो सेफली पहुंचीबाटा बड़ कथा हला तो सेई जिंसटा हमरो टेस्ट सक्सेसफुल हे सारिची so now we are only left with the unmanned mission जोटा कि हमरो हबो December 2025 रे and एटा हला परे will be finally ready for sending human beings into the space किए के जिबे so ए 4 जण भितरु 3 जण जिबे हला आगुर मे भी प्लान थिला 4 जण को पठावा बट आई थिंक एबे 3 जण को ही प्लान अछि सो ए 4 जण को भितरु ही 3 जण जिबे एंड जणे तो कंफर्म वी नो इट Subhanshu Shukla he also went for the Axiom 4 mission okay and सेथर एक्सपीरियंस सेथरे निहाती यूज करबे सो एमाने जिबा पूर्व बहुत ट्रेनिंग्स भी एमान को दिया जायछि अलग अलग स्पेस सेंटर रे अलग अलग कंट्री रो प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जायछि बिकॉज़ यूएसए रशिया एमान ऑलरेडी जाई सारचंती तो तांकर हेल्प नै कि एमान को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जायछि एंड एमाने जो स्पेस सूट पिंदी के जिबे दैट विल बी आई थिंक also indigenously made hela so Prashant Nair Ajit Krishnan Angad Pratap and Subhanshu Shukla he is the wind commander and e tin jana amaro group captains so e 4 jana bitaru 3 jana to nihati jibe now coming to the Axiom 4 mission when you are talking about the Subhanshu Shukla then we have to understand the Axiom 4 mission because eta bi amaro exam ra asibara possibilities achi because it is successfully launched heichi not by ISRO but still our Indian person was involved in it se jai thile ette news re thile to kon pai asid no pare so Axiom 4 mission मन रखो it is often referred to as AX4 mission and kon pai Axiom तारो ना दिया गला because it was designed by this company it is a private company called Axiom Space so company रा ना हला Axiom Space and it is a leading private company in the space industry. The mission focuses on sending a global crew, including group captain Subhanshu Shukla, to the International Space Station. So, International Space Station is space re सेठी को एमान को पठा जाइथिला. Okay, for a period of 14 days. So, initially plan थिला कि 14 दिन जाए पठेबे. But I think सेमाने रही 18 days पर्यंत सेमाने रहिले कोठी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे सेमाने रहिले एंड सेठी रही कि सेमाने बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी करछंती ओके
the Axiom 4 mission will deploy a SpaceX Dragon spacecraft. को spacecraft use करा हेची Dragon spacecraft launch करा हेची कोथरे Falcon 9 rocket. ए गुडा काम को मन रखियार अछि हैला. तो Axiom 4 mission NASA रो थिला no doubt माने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को से माने पठाई थिले हैला. But the Axiom Space एटा को डिजाइन करथिला which is a private company and then कोथरे डिप्लॉय करा जायतिला तांको SpaceX रो से SpaceX कंपनी रो Dragon spacecraft रे and को रॉकेट रे Falcon 9 रॉकेट रे carrying professional astronauts, researchers and private individuals. Okay, so what was the mission duration? Mission duration जदि हमें देखिबा with an expected duration of 14 days से मान को पठा जायतिला which as I said 18 दिन हे गला हैला. तो से माने various experiments, technology demonstration ए सब जिंस सेठी करिवार प्लानिंग थिला करिकि भी आसिले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे. Axiom 4 is part of the Axiom space vision to establish the first commercial space station. हैला. तो ISS तो अच्छी ISS तो रहिबो 2030 पर्यंत बट गोटे कमर्शियलाइजेशन और कमर्शियल स्पेस स्टेशन एस्टाब्लिश करिया को जाउची Axiom 4 हैला. तो सेति पे ए मिशन टा करा जायथिला. तो जोथरे कि हमें will be seeing transitioning of operations from ISS to an independent orbital platform. Okay, so this was all about your Axiom 4. So कौन मन रखिबा basically Axiom space होची से कंपनी हैला जे कि एटा तमरो करिथिला सेति पे त नाटा हला Axiom 4 मिशन एंड कोठु लॉन्च करथिले बाय द वे एटा भी हमको मन रखिया रछि कोठु लॉन्च करा जायथिला Kennedy Space Center Florida to Axiom 4 mission टा लॉन्च करा जायथिला using co rocket Falcon 9 rocket and spacecraft रो ना कोन थिला Dragon spacecraft. Okay, clear. So what are the experiments they performed? के जाइथिले by the way शुभांशु शुक्ला, पेगी विटसन, अंक ना तो मु प्रोनाउंस करि परिबेनी निजे पढि दियो. It was Slavoj Uznansky something Poland ro and then there is Tibor Kapo. Okay, so space farming गुड आर्टिकल भी आसला शुभांशु शुक्ला स्पेस फार्मिंग सेठी करथिले. सो इंपैक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन 6 वेराइटीज ऑफ क्रॉप ए स्टडी भी सेठी हेथिला. फिजिकल एंड कॉग्निटिव इंपैक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन इन माइक्रोग्रेविटी हैला. बिहेवियर एंड रिस्पांस ऑफ tardigrades or water bears in space जो माने कि known to survive in very tough conditions and growth and cellular response in cyanobacteria in microalgae. ए सब एक्सपेरिमेंट्स हमरो Axiom 4 मिशन रे करा जायथिला हैला. तो Falcon 9 रॉकेट आउ Dragon spacecraft. ओके ए दुटा जिंस हमें मन रखिबा रिगार्डिंग द Axiom 4 मिशन. नाउ सो ए पर्यंत हमें कोन पढिलु आदित्य L1 विषय रे पढिलु जोथरे हमें सन को भी स्टडी करी सारलुनी हला. हमें मून को भी स्टडी कर सारलुनी यूजिंग द माने थ्रू द चंद्रयान सीरीज चंद्रयान 1 2 3 आउरी भी स्टडी अछि मून रो स्टडी सरीनी. बट there is one more important upcoming mission apart from the Gaganyaan which is nothing but your Shukrayan हैला. Shukrayan माने शुक्र ग्रह Venus विषय भी हमें स्टडी करियार मिशन अछि अपकमिंग. सो व्हाई Venus तो मेरे देखि परथुबो सन रो सबटु पाखो प्लैनेट कोटा मर्क्यूरी. तो ऑब्वियसली लॉजिकल कि एटा बहुत गरम थिबो मर्क्यूरी बहुत गरम हबा कथा. बट नो, actually Venus is the hottest planet in the entire solar system. पूरा solar system रे सबटु hottest planet कोटा जानछो Venus and not Mercury. तो Mercury Venus तापरे अर्थ आसे बट Venus सबटु hottest. तो ताकू स्टडी करिया तो बनता है. also आकू Venus को अर्थ रो ट्विन भी हमें कहू. It is also termed or named as Earth's twin. कौन पे? Because देखो साइज टा सेम लगुनी
अर्थ रो विनस रो साइज भी सेम, मास भी सेम, कंपोजिशन भी सेम, से आपको भी स्टडी करियाटा इंपोर्टेंट आम हो जाउची बिकॉज आगुरु आर भी किसी अलग माने जदि आम देखा आगुरु विनस किसी अलग थिला एबे अलग हो गलानी, अर्थ भी आमर आगुरु किसी अलग थिला एबे अलग हो गलानी है ना। तो आर केमिति बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल चेंजेस केमती कोन होउची सेटा भी स्टडी करिबा, तार एटमॉस्फेयर टा का डीपली स्टडी करिबा निहाती दरकार बिकॉज इट इज आल्सो नोन एज द अर्थ ट्विन। कोन पाए बिकॉज तार साइज, मास, डेंसिटी, तार कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थ है। किछटा डिफरेंस भी अच्छी एमती नको पूरा तार डुप्लिकेट अर्थ रो सेमती तो आम विनस रे थांतु बट एते गरम एंड तुम भावुच कि आ ऊपर जदि मु किछि पठेबी जेहेतु इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो जेमती आम मून ऊपर लैंड कलु तो वेनस ऊपर जदि आम किछि स्पेस क्राफ्ट पठेबु वेनस ऊपर को देन से जली पोड़ी पाउंस हो बिकज से एते गरम। तो हार्डली 2 घंटा जाहि सर्वाइव करि परिबो जदि किछि स्पेस क्राफ्ट आम जेमती आम विक्रम लैंडर को पठेलु रोवर सेठू बाहरिला मून रे आ ऊपर जदि आम किछि पठेबु गला है से सांगे सांगे जली पोड़ी पाउंस हो। So we have also studied Mars till now. First interplanetary mission amaro thila Mangalyaan and second interplanetary mission is going to be the Shukrayan, which is also known as the Venus orbiter mission. Why orbiter mission? Mars ta भी हमें कहथिलु कोन Mars orbiter mission MOM, and this is also WOM because it will be a orbiting around the Venus and not landing on the Venus. Okay, so it will be a orbiter mission and its scientific payloads currently include a high resolution synthetic aperture radar and a ground penetrating radar. So dita radar ame पठेबु SAR and ground penetrating radar. तो ये दीटा radar कौन करिवे? SAR और examine Venus रो surface, Venus रो surface को examine करिवे despite the clouds around the planet. तो आमो clouds रे कौन पानी थाए वर्षा हेले बादल फाटे वर्ष माने बादल फाटले वर्षा हुए पानी पड़े, बट Venus रो cloud रे सल्फ्यूरिक एसिड थाए and it is very dense. तो ता भितर गोटे जिंस पेनिट्रेट करिके गोटे जिंस स्टडी करियाटा एते इजी नुह बिकॉज बहुत डेंस क्लाउड्स कवर करके रखी विनस रो एटमॉस्फेयर को। तो से जिनसटा स्टडी करिया पे हमको सेमतिया रेडार सिस्टम दरकार सो दैट ए जो सिंथेटिक एपर्चर रेडार ता से काम करिवो क्लाउड को पेनिट्रेट करके स्टडी करिवो। इट रिफर्स टू ए टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस because of the precision the radar can penetrate clouds and darkness, which means that it can collect data day and night and any weather जे कौन से भी weather हो दिन हो राति हो दिन राति कौन पे कहूँ ऑर्बिटल पीरियड पढ़ी आम मन अच्छी तुमको। तो Venus रो ऑर्बिटल पीरियड केते थिला कहल, अर्थ रो ऑर्बिटल पीरियड आम जानलु जानिछो आई गेस ओके। सो Venus रो ऑर्बिटल पीरियड केते ताकू माइंड रखे कि जानो। दिस मिशन इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी Venus geological and volcanic activity, emissions on the ground, wind speed, cloud cover and other planetary characteristics from an elliptical orbit. Shukrayan will be launched on either GSLV MK2 or MK3. So जितबले लॉन्चिंग पाखरे पाखरे आसीबो आफ्टर गगनयान ही एटा हबो तो देन जना पड़िबो कि GSLV Mark 2 यूज करबा कि Mark 3 यूज करबा। ऑब्वियसली Mark 3 यूज करले हमें अधिका इंस्ट्रूमेंट्स नेकी जाई परिबा ओके। So what are the objectives of the Shukrayan mission? To investigate the surface process and shallow subsurface stratigraphy. Until now, no prior observation of the subsurface of Venus has been done. Venus रो subsurface को एपर्यंत की स्टडी करि नांती। आउट ऑब्जेक्टिव हला टू स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डायनामिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर माने Venus रो एटमॉस्फेयर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोलर विंड इंटरैक्शन एंड द Venusian ionosphere. So what is the significance? ए सब कले हमको कोन मिलिबो? As I said, because it is an earth twins,
So it will help to learn how the earth like planets, earth bhale अन्य सब planets अछंती से माने केमिति इवॉल्व हे चंती सेठी कोन कोन कंडीशंस अछि हैला what conditions exist on the earth sized planets that orbit a star other than our sun हैला it will help in modeling earth climate and serve as a cautionary tale on how dramatically a planet climate can change. It scientists have discovered phosphine. So recently phosphine मिली Venus रो cloud रे, which could be an indicator of microbial life in the planet's cooler higher altitude regions. So जेहेतु it is the hottest planet तो life केमती possible सेठी, but Venus रो clouds रे phosphine मिली and phosphine means there is some indicator of microbial life in the planet रो किछि तो cooler reason कोठी तो थिपा. This discovery has sparked hope and people's curiosity about the possibility of life beyond Earth. So this is a Earth-like planet, Earth रो twin भी आपको कहा जाउची. So पूरा history हमें जे गोटे evolve केमिति हेची planet ता विषय तो जानिबा सेठी तारो conditions कोन, is life possible on Venus ए सब study करिबो शुक्रयान. Okay. Now SPADEX कोन, I do not know whether you have heard about this or not and why I included this in this lecture, because it is जानिबा हम पे बहुत important. कौन पे चंद्रयान 1 2 3 हमें पढ़िलु तो चंद्रयान 1 2 3 रे ही हमें रहि जिबे कि नो हमर आहुरी भी प्लान्स अछि, चंद्रयान 4 अछि, चंद्रयान 5 अछि हैला एंड सेटा करिया पे चंद्रयान 4 पे खास करी कि हमको गोटे सिस्टम दरकार स्पेस रे कोन ना स्पेस रे हैंडशेक, स्पेस रे हैंडशेक, स्पेस रे हैंडशेक माने हैंडशेक माने एमती भी कर जेमिति भी तमे तो इ जो डॉकिंग माने कोन एटा हला डॉकिंग. तो डॉकिंग कोन पे हम पे यूजफुल हबो भाबु परछ एते सारा सैटेलाइट्स अछंती हमरो सोलर सिस्टम रे we have 17,000 satellites. तो जो गोटे सैटेलाइट खराब हैला माने हमको आउ थरे फ्रेश सैटेलाइट लॉन्च करिया को पडुची. तो सेमिति न करिया को पडु, गोटे सैटेलाइट अछि ता सहित जदि आउटे सैटेलाइट जे कि मैग्नेट पळे लागि जीवो सेमिति भी तो करि हबो. सेमिति ऑलरेडी हैला. ISRO has successfully done the SPADEX mission. SPADEX ISRO creates history, successfully docks 2 satellite in space. तो तमे एटी देखि परथबो एटा गोटे सैटेलाइट and this is the docking mechanism ए माने जाई कि हैंडशेक करि परिबे स्पेस रे. And how beneficial it will be for us, that we are going to study now. So India becomes the 4th country to successfully conduct space docking experiment after the US, Russia and China. ISRO launched the space docking experiment satellite by PSLV C60. हैला PSLV C60 launcher यूज करके आमे दीटा सैटेलाइट डॉकिंग पे दीटा सैटेलाइट दरकार तो आमे दीटा सैटेलाइट पठेथिलु. It involves precise connection. Now जेतो बळे एटा बहुत केयरफुली करिया को पड़िबो because दीटा सैटेलाइट को हमको डॉक करियार अछि तो देयर इज चांसेस के दीटा जगह ब्लास्ट हे जेबे. तो सेति पे बहुत केयरफुली एटा को डिजाइन करिया को पड़िबो एंड एग्जीक्यूट करिया को पड़िबो जोटा कि सक्सेसफुली ISRO करिछि. Okay, so it involves precise connection of 2 spacecraft, either manned हो कि unmanned हो. तमे मनुष्य पठाओ कि न पठाओ, manned spacecraft हो कि unmanned mission हो, दीटा spacecraft for precise connection so that it will allow those to operate as a single unit. तो से एटा गोटे single unit हिसाब रे काम करिबो for critical task जेमिति कि refueling, repair and crew exchange. हैला. तो we also have one more plan to set up our भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमर प्लान अछि by 2035 I guess. हाँ तो ठीक हाँ तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमको सेटअप करियार अछि. तो सेठी आमे गोटे जिंस बिल्डिंग बनेबार अछि तो भारत माने जाई कि सेठी बनेबा ना एठो किछिटा पार्ट्स नै कि सेठी रखिबा. तो दीटा पार्ट्स को खाली रखि देले तो हबनी, ताको जोड़ीबार भी अछि. तो दैट से जोड़ीबाटा केमती हबो by the help of this docking. बुझि पालो
ऑल्सो एबे जेमती भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रे गोटे मनीष अच्छी ताकू हमको आनियार अच्छी एंड ता बदल आउ जन को पठेबार अच्छी तो ताकू हम आनिबू गोटे स्पेस क्राफ्ट रे फिर आउ जन को पठेबू आउ गोटे स्पेस क्राफ्ट रे केते खर्च आसी जीवो गोटे सैटेलाइट लॉन्च करिया पे केते कोटी खर्च हुए बुझ पारछ तो से सब जिंस को डील करिवो जो डॉकिंग स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हला तो सो दैट पैसेंजर एक्सचेंज हे परिबे क्रू मैंने गोटे सैटेलाइट ऑलरेडी अच्छी आ गोटे सैटेलाइट गला डॉक हला पर दे विल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट नाउ एठी जो पैसेंजर अछंती और क्रू अछंती दे विल कम इनसाइड दिस एंड देन इट विल रिटर्न बैक अनडॉक हेकी पळे आसीबो ऑल्सो जदि कहार गोटे फ्यूल सरी गला गोटे सैटेलाइट रो फ्यूल सरी गला तो अगेन आ गोटे सैटेलाइट हम पठेबा ताको डॉक करबो ताको फ्यूल करबो हे गला काम रिपेयर गोटे सैटेलाइट खराब हे गला तो अगेन आ गोटे सैटेलाइट डॉक करके ताको रिपेयर करके आस परिबो so these are the benefits of the docking which has been successfully performed by ISRO so it enables the construction of cutting edge facilities like the International Space Station in orbit and advancing space exploration. Some spacecraft dock with the ISS and other berths with the station. In docking, the spacecraft can maneuver and attach to the station by itself. Our berthing mane, the astronaut uses the station's robotic arm to capture the spacecraft. So, these process achi. Docking, berthing. Docking रे कौन हबो spacecraft निजे निजे तारो रास्ता खोजी की स्टेशन सहित निजे जाइए अटैच करदब बर्थिंग रे कौन करिवो एस्ट्रोनॉट तारो स्टेशन रो रोबोटिक आर्म यूज करिकी स्पेस क्राफ्ट को कैप्चर करिवो देन मिशन कंट्रोल टेक्स कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड एंड डायरेक्ट्स द आर्म टू मैन्यूवर द स्पेस क्राफ्ट टू द अटैचमेंट साइट तो दीटा जो सैटेलाइट थिबो आर गोटे पर्टिकुलर स्पीड थिबो आर गोटे पर्टिकुलर स्पीड थिबो एंड से पर्टिकुलर स्पीड रे गोटे कम थिबो गोटे जनकर स्पीड टिके कम थिबो एंड से माने जाइके प्रॉपर्ली डॉक करि परिबे यूजिंग दिस टू मेकानिजम्स either by docking or by berthing next so ISRO SPADEX is a technology demonstration experiment aimed at mastering autonomous docking जोटा कि हमें ऑलरेडी पढ़िलु कि यूएस रशिया चाइना पर हमें फोर्थ कंट्री हे जिबा और हे सारलोनी ऑलरेडी एंड एथिरे दीटा सैटेलाइट पठा जाइथिला कोन कोन चेजर जनक ना थिला चेजर आ जनक ना थिला टारगेट जो दीटा कि हमें डॉक कलु केते हाइट रे 700 किलोमीटर अल्टीट्यूड रे एमान को डॉक करा गला दैट मींस लो अर्थ ऑर्बिट रे एमान को डॉक करा गला एंड दिस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर स्पेस एम्बिशंस such as sample return from moon जोटा कि हमरो चंद्रयान 4 रे हमको करियर अछि चंद्रयान 4 रे हमको मून रो सैंपल्स आनिवार अछि बैक टू द अर्थ हला सो दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद द डॉकिंग एक्सपेरिमेंट माने डॉकिंग फैसिलिटी यूज करके हमें आनी परिबा तो सेथरे भी हेल्पफुल हबो आल्सो इट विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द building and operation of the Bharatiya Antariksh Station. These satellites will perform complex maneuvers including autonomous rendezvous and docking, formation flying, and remote operation. This mission will experiment with controlling one spacecraft using the altitude control system of the other. Additionally, it will also explore the use of robotic arm technologies for in-space manipulation and servicing okay so एटा जेतबले सक्सेसफुल हे गला हमर रास्ता वर्तमान खुली गला टुवर्ड्स चंद्रयान 4 बट एटा जो लॉन्च हला चेजर आ टारगेट को पठा गला PSLV C60 रे से टाइम रे आउट जिंस भी पठा जाइथिला PSLV C60 रे व्हिच इज द ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जाको के पोएम बेले कहा जाय हला PSLV Orbital Experimental Module एटा भी रिसेंटली न्यूज रे थिला सो दैट माने सेति पे एटा हमर एग्जाम टाइम भी इंपोर्टेंट हे जाउछि सो कोन एटा इट हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड विद द PSLV C60 जे कि हमर चेजर आउ टारगेट को लॉन्च करले एंड ए दीटा तो तमरो डॉकिंग हे गले चेजर आउ टारगेट तो डॉक हे गले माने से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हे गला तो एटा को ए जे पर्टिकुलर गोटे अलग जिंस हमें पठैथिलु एटा कोन करिवो
इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डेब्रिस जो लास्ट स्टेज तमर अच्छी है ये जो लास्ट स्टेजटा रहा आर फोर्थ मॉड्यूल माने पीएसएलवी रो चारटा स्टेज अच्छी राइट सो लास्ट स्टेजटा स्पेस रे पहुँचब अर्थ एटमॉस्फेयर रो बाहर की स्पेस रे पहुँचब स्पेस रे पहुँच के कौन होतला कि से माने डेब्रिस हे की मिसी जाउथले हैला स्पेस रो एटमॉस्फेयर रे से माने डेब्रिस हे की मिसी जाउथले बट एबे से डेब्रिस हबा पूर्वरु से 6 मास से स्पेस रे रहिबो किछटा एक्सपेरिमेंट करिवो तो एक तीर से दो निशाने गोटे निशान रे आमे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कलु आ एटा गोटे आमे कलु कि सेटा वेस्ट हे थांता से वेस्ट कोन पे करिया गोटे मॉड्यूल आमे पठेबा एमती जोटा कि 6 मास जे स्पेस रे रहिबो किछटा एक्सपेरिमेंट करिवो देन सी बर्न आउट हे जाऊ हैला फर्स्ट 3 stages of the rocket fall and burn out in the earth atmosphere और लास्ट स्टेज टा तमरो 6 मास जे एक्टिव हबो आ गोटे एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म हिसाब रे काम करिवो दैट इज द पोएम मॉड्यूल हैला सो इट विल प्रोवाइड ए कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर ऑन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट माने हमें आ गोटे सैटेलाइट लॉन्च करिया को पड़िबनी से गोटे रे ही हमें कर देलु हैला तीनटा काम कर देलु माने दीटा काम करलु टू बी स्पेसिफिक डॉकिंग भी करलु आ आकू एक्सपेरिमेंट हिसाब रे भी रखिलु so far launching proprietary system into space has been traditionally prohibitively expensive smaller entities को पे इटा expensive थेला but सेटा भी इसरो करी देखेला and it reduces the entry barriers for startups and promotes space technology innovation in India so जदि इसरो किछि फ्यूचर रे एमती पठेबो सैटेलाइट ता सहित किछि प्राइवेट एजेंसी माने एमतिया किछि मॉड्यूल पठे परिबे हैला तो फर्स्ट दीटा मॉड्यूल तमरो तांका काम कला एंड लास्ट का तमरो किछोडा एक्सपेरिमेंट करि कि आसीबो हैला तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करि कि आसीबो माने तार डाटा तो हमहु मिलि परिबो सेठरो बुझ पालो ओके So as I said, docking experiment हमर कोठी रे हेल्पफुल हबो टू ब्रिंगिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द मून जोडा के हमें केबे करिबा चंद्रयान 4 सेति पे ही प्लान करा जाई छी सो इट इज ए प्लान्ड लूनर सैंपल रिटर्न मिशन जोथरे के हमें सैंपल आनिबा एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्चिंग अराउंड 2027 obviously इसरो रो ही इनिशिएटिव एटा and it will be the fourth iteration in the Chandrayaan lunar series 1 2 3 bisar ame already padi sarichu our aim kono majorly to collect samples from the moon surface and bring them back to the earth kichita sample ame moon ru earth ko aniba कोठी माने कोठी लैंड करिवो देन ड्रिलिंग करिवो ना तो एथरे भी किछरा जिंस पठा हबो जेतेबेले लॉन्च हबो ता विषय इन डिटेल पढिबा सो को साइट रो ना हो शिव शक्ति साइट रो शिव शक्ति साइट हमें कहा को कहूचु द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 3 सो साउथ पोल रे जोडी सक्सेसफुली हमें सॉफ्ट लैंडिंग करि पारथिलु ताको ना दिया है शिव शक्ति स्टेशन तो सेटो ही हमें से पर्टिकुलर पोर्शन रो किछिटा माटी आनिबो तमरो चंद्रयान 4 हैला नियर द साउथ पोल रीजन देन ताको फिर स्टडी करा जिवो अर्थ रे हैला सो आर प्लानिंग वर्तमान हमें देखिबा कोन अछि तो एथरे तमरो दीटा स्टैक रहइबो एटा हला तमरो स्टैक 1 जोथरे यू हैव द असेंडर मॉड्यूल एंड द डिसेंडर मॉड्यूल एंड एटा हला तमरो स्टैक 2 व्हिच इज द ट्रांसफर मॉड्यूल दीटा अलग अलग अछि नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ द स्पेडेक्स मिशन दीटा सैटेलाइट को स्पेस रे जाई की जॉइन करिबा तो एटा भी सेमती हबो हैला ताको अलग अलग लॉन्च करा जिवो दीटा को अलग अलग लॉन्च करा जिवो ए propulsion module इट तमन propulsion module अछि बाय द वे एंड इट तमन री एंट्री मॉड्यूल अछि तो आको अलगा लॉन्च करा जिवो एंड ए माने जाय की डॉक करिवे स्पेस रे हैला सो द स्पेसक्राफ्ट वुड कंप्राइज 5 मॉड्यूल्स अक्रॉस 2 सेपरेट लॉन्चेस तो इट तमे देखि परथबो एरी तीनटा मॉड्यूल हैला ट्रांसफर मॉड्यूल री एंट्री मॉड्यूल propulsion मॉड्यूल व्हिच इज
under the stack 2 stack 1 रे हमरो ए दीटा मॉड्यूल रहले सो टोटल 5टा मॉड्यूल दीटा सेपरेट लॉन्च व्हीकल रे लॉन्च करा जिवो हला एंड असेंडर मॉड्यूल डिसेंडर मॉड्यूल गोटे लॉन्च रे करा जिवो आ बाकी तमरो री एंट्री मॉड्यूल ट्रांसफर मॉड्यूल एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल सेकंड लॉन्च रे जिवो आफ्टर द टू लॉन्चेस the stacks will be docked together in elliptical earth orbit to form an integrated stack तो माने स्पेस रे जाय की ए दीटा stack join हेबे so this is what Chandrayaan 4 is and सेति पे हम पे एटा important हे जाउची हला डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ता सेति पे हम पे important so subsequent to docking हला पर कोन हबो integrated stack माने दीटा जक मिसि गला परे they will perform the first set of earth bound maneuvers हला तो earth bound माने earth रो orbit रो घुरिबे then जेमिति आमे चंद्रयान 1 2 3 रे पढिथिलु they will go into the lunar orbit in the final lunar orbit dm plus am dm am कोन descender module और ascender module से माने separate हे जिबे tm और rm2 tm rm कोन ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल हला तो ए माने सेपरेट हे जिबे तापरे dm plus am will undergo powered descent to achieve soft landing तो जेमते हम चंद्रयान 3 रे विक्रम लैंडर को यूज करथिलु सेटु फिर रोवर बाहर थिला तो एठी dm am एक माने स्टैक करी की पटा फर्स्ट तो हमें छाड़ी देलु अलग अलग लॉन्च कलु अलग लॉन्च कला पर तांगे डॉकिंग कला पर अगेन एटा अलग तमर हला एटा अलग हला एटा जो अलग हला फर्स्ट पोर्शन ता से जाय के लैंड करबो तमर सॉफ्ट लैंडिंग करबो आफ्टर लूनर लैंडिंग गोटे रोबोटिक आर्म बाहरिबो जे कि स्कूप करबो अराउंड 2 to 3 kg ऑफ सैंपल 3 kg रो सैंपल से माने मून रो नेकी आसीबे लैंडिंग साइट रो एडिशनली गोटे ड्रिलिंग मेकानिज्म भी हमें पठेबा हला चास्ते मन अछि वी रेड इन चंद्रयान 3 चास्ते कोन करथिला ड्रिलिंग करथिला माने गोटे रोटेशन करी के किछटा तार से कैपेबिलिटी थिला सो एडिशनली ए ड्रिलिंग मेकानिज्म विल कलेक्ट subsurface samples and the samples will be sealed and brought back to the earth हला इंटरेस्टिंग देन जेतेबेले सैंपल कलेक्शन सरीला तो ये जो एम थिला ना it would ascend to the lunar orbit को जिबो एंड जो हम TMRM मन अछि TMRM तो अलगा हेगी ascending module और descending module जाइथिले हला तो एबे कोन करिवे से आउ थरे TMRM पार्क हेकी थिबे तांको सहित माने अटैच हो जिवे एंड नाउ सैंपल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम AM to RM हला आफ्टर सैंपल ट्रांसफर TM and RM will be undocked from AM आउ थरे अनडॉक हे जिवे सैंपल ट्रांसफर हे गला फिर अगेन अलगा हे गले लेटर the TM plus RM will perform maneuvers to return to the earth हला सो AM और DM सेठी रहिले TM RM नेकी आसिले सैंपल टाको अर्थ को बुझिलो so at a suitable entry corridor RM would get separated from TM and perform ballistic re-entry into earth atmosphere and finally land into earth along with the lunar sample hela okay I hope बुझिलो से कोन पे डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इंपोर्टेंट जेतबेले चंद्रयान 4 फाइनली लॉन्च हबो इन डिटेल हमें पढिबा ही स्टिल मैं गोटे ओवरऑल आइडिया दे देली कोन एंटायरली the process is going to be okay so challenging तो निहाती रहइबो because successful docking capacity न हेले किछि सब पूरा ही फेल हे जिवो so already आमे गोटे करी कि देखि छु एबे successful docking experiment तो हे सारछि SPADEX हला but एते थरो डॉकिंग अनडॉकिंग ता हे परिबो कि नै that is a question and successfully re-entry into the earth atmosphere okay intense heat और pressure को संभाली कि से आउथरे re-entry हे परिबो तो that is a question preserving the lunar samples in an uncontaminated state जो माटीटा हमें आनिबा जो सैंपल टा आनिबा से कंटामिनेट हे गला माने गला तो ताको पूरा केयरफुली आनिया पड़बो एंड हमें लोको को पठो आनिया को हमें गोटे मशीन ऊपर डिपेंडेंट अछि आनिया पे तो सेटा को अनकंटामिनेटेड स्टेट रे रखिबाटा भी गोटे चैलेंज सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द मिशन but if it is get successful then it will be
The mission will validate critical process such as docking and undocking, precise landing technique, and safe return of spacecraft from the Earth atmosphere through Earth atmosphere. By mastering these technologies, Chandrayaan will be directly contributing to the development of systems required for India's planned crewed lunar landing in 2040. 2040 we have planning to send human beings into the moon. चांद पे इंसान को भेजने का कार्यक्रम भी हमने प्लान किया हुआ है 2040 डे राइट तो ता पाई भी एटा हेल्पफुल हे परिबो बिकॉज़ डॉकिंग अनडॉकिंग हैला माने हम बहुत जिंस सेठी क्लियर आउट हे जिवो ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट योर Chandrayaan 4 we also have a Chandrayaan 5 mission in future okay Chandrayaan 5 mission को हमें entirely ISRO करूने सेटा it is also in collaboration with the JAXA Japan ro space सहित हमें collaborate करके करूछु and तार ना to be specific LUPEX भी कुहा जाए LUPEX माने lunar polar exploration okay lunar polar exploration it is a joint lunar mission by ISRO and JAXA which is scheduled for 2027 and it will be launched on Japan ro H3 rocket use करा जिवो हैला Japan रो H3 rocket use करा जिवो and सातटा scientific instruments से नेकी जिवो including a mass spectrometer by the European Space Agency and a neutron spectrometer from the NASA हैला तो NASA रो भी spectrometer जिवो जेमती हम चंद्रयान 1 रे हिथिला ऑर्बिटल मिशन जोटा हिथिला तो सेथरे बहुत सारा पेलोड्स जाइथिला तो एथरे भी किछरा पेलोड जीवो नासा रो किछि रहबो यूरोपियन स्पेस एजेंसी रो किछि रहबो एंड रॉकेट हम यूज करबो जापान रे हला एंड इसरो और जापान रो कोलैबोरेशन रे चंद्रयान 5 हबा को जाउची हला टाइम अछि एबे भी तो आर मेन ऑब्जेक्टिव हला लूनर रो माने मून रो वाटर प्रेजेंस टा को मैप करबा कोठी कोठी वाटर अछि कोन से जिंस देखिबो ड्रिलिंग करिवो ये भी लूनर रेगोलिथ to analyze the water content quality and composition हैला वाटर रो कंटेंट केते परसेंट वाटर अछि कोन अछि को फॉर्म रे अछि तार क्वालिटी केमते अछि तार कंपोजिशन कोन अछि it will also be performing some in situ scientific observations using spectrometers and sensors and it is a proposed 100 days mission माने 3.5 मासर मिशन एटा with possible extension to a year so initially it is planned for a 100-day mission which can be extended to a year and an attempt to explore the moon's far side okay so this is all about your LUPEX mission which is also called as the Chandrayaan 5 mission which is scheduled for 2027-28 in collaboration with JAXA clear अच्छा now NISAR recently news re thila so anything related to technology and in news becomes important for us in exam right the exam point of view ru हम पे एटा important हे जाई छी तो टिके पढी देबा NISAR mission टा कोन और NISAR satellite टा कोन दीटा न्यूज पेपर एटा हमर स्क्रीनशॉट्स हला NISAR satellite mounted on GSLV for launch NISAR's 2 eyes on earth so it I think July last aduku एटा तमरा लॉन्च हेथिला NISAR satellite and NISAR रो हमें कोन बुझुछु NISAR रो फुल फॉर्म कोन N for NASA I for ISRO synthetic aperture radar हैला सो जेमती LUPEX मिशन हमें जापान सहित कोलैबोरेट करी की प्लान अछि NISAR ऑलरेडी लॉन्च हे सरछि NISAR satellite and it is a collaboration project of NASA and ISRO as well and it is the first project combined project or collaborative project of NASA and ISRO हैला so ISRO launched the NASA ISRO
synthetic aperture radar satellite from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh, and it is the first joint mission, as I said, of NASA and ISRO. 2392 kg NISAR satellite will be carried into the orbit by the GSLV. Okay, GSLV रे लॉन्च होबो बिकॉज़ एते हेवी अछि 2300 केजी पाखा पाखी अछि तो ताको हमर बाहुबली ही नै कि जाई परिबो GSLV and to be specific GSLV F16 is carrying the NISAR over here, you can see. Okay, so why it is important or why it is becomes an important satellite for us, let us see. So प्रथमे तो तार यूनिक टेक्नोलॉजी से कोन कोन यूज करी छी dual frequency synthetic aperture radar हला SAR माने synthetic aperture radar सेटा यूज करूची first satellite globally to use such a technology whole world रे this is the first satellite जे कि ए टेक्नोलॉजी यूज करूची कोन dual frequency synthetic aperture radar and दीटा radar से नै कि जाउची दीटा radar नोची सेति पई एथि तार तमे पढुथबो NISAR's 2 eyes on earth दीटा आखि तार कोन कोन दीटा आखि हला एटा गोटे हला तमरो L band radar आ गोटे होची तमरो S band radar L band radar ता NASA डेवलप करिछि S band radar ता तमरो ISRO डेवलप करिछि हला so this dual frequency approach allows NISAR to penetrate through the clouds and vegetation providing continuous all weather data day and night data as well हला दिन हो राति हो वर्षा हो खरा हो शीत हो डाटा अर्थ रो डाटा हमकु ए सैटेलाइट माने पठेबे हला सैटेलाइट माने तो नु ए गोटे सैटेलाइट व्हिच इज यूजिंग दिस टू सिस्टम्स हला और दीटा रडार्स सो एल बैंड रडार जोटा कि नासा डेवलप करिछि इट विल स्टडी द लॉन्ग टर्म चेंजेस रे कोन कोन आसीबो ग्राउंड डिफॉर्मेशन हला caused by earthquake volcanic activity landslide जेतिकी भी हमरो अर्थक्वेक अर्थ रे हबो हला वोल्केनिक एक्टिविटी लैंडस्लाइड सबु पाई ग्राउंड रे किछि डिफॉर्मेशन हबो तो सेटा को स्टडी करिवो कि एल बैंड रडार स्टडी करिवो एंड आल्सो इट विल पेनिट्रेट फॉरेस्ट कैनोपीज टू स्टडी द बायोमास ए दीटा काम कोन कहारो एल बैंड रडार रो सो एस बैंड रडार रो काम कोन इट इज आइडियल फॉर मॉनिटरिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स forest cover and surface water bodies okay particularly sensitive to changes in the soil moisture and vegetation तो L band रो काम हला जति कि भी हमरो कोन कहबा हमें earthquake volcanic activities ए सब स्टडी करिवो L band radar ता जोगु जो ग्राउंड डिफॉर्मेशन हबो सेटा स्टडी करिवो इट विल आल्सो पेनिट्रेट फॉरेस्ट कैनोपी बायोमास को स्टडी करिया पे एस बैंड रो मेन काम हला एग्रीकल्चर रिलेटेड काम तारो एग्रीकल्चर क्रॉप को से मॉनिटर करिवो फॉरेस्ट कवर को मॉनिटर करिवो सरफेस वाटर बॉडी को मॉनिटर करिवो ए सब जिंस एस बैंड रडार करिवो हला व्हिच इज डेवलप्ड बाय ISRO सो ए सब डाटा कहा पे बेनिफिशियल हमको समस्त में बेनिफिशियल हला किछि जदी हम सेमती से वर्ड टा मन पड़ने मत कोन हुए बन्या बाते हले कोन हुए नाटा मन पड़ने यार माने ए वोल्केनिक अर्थक्वेक छोड़ो सो किछि भी हबा आगुरु सेमती हबा आगुरु हमको इन्फॉर्मेशन मिल जिवो हला प्रॉपर डाटा मिल जिवो also a technology छोड़ा भी it is also using a SWIPSAR technology which allows to image a wide region with high resolution माने 200 किलोमीटर पर्यंत से फोटो उठे पारिबो बुझबलो वाइड एंगल कैमरा हम यूज करछु कोन पे मोबाइल रे गोटे वाइडर एरिया रे हम फोटो उठे पे राइट तो सेम जिंस ए SWIPSAR टेक्नोलॉजी करि पारिबो गोटे वाइडर एरिया रो फोटो नै पारिबो दैट टू हाई रेजोल्यूशन रे हला एंड इट कैन इमेज द एंटायर अर्थ एवरी 2 days प्रति सॉरी एवरी 12 days एवरी 12 दिन रे से पूरा अर्थ को अर्थ रो फोटो नै चलेबो तो कोठी कोन होउची प्रॉपर डाटा हमको मिलेबो व्हिच विल हेल्पफुल फॉर अस ऑब्वियसली देन वी हैव द as I said GSLV F16 यूज करा जायची
Mark II, specifically the GSLV F-16 is the rocket that carried NISAR. And gotte point mano rakhibo, it is the first time a GSLV launched a satellite into the sun synchronous orbit. Sun synchronous orbit को पठेया पई first time GSLV use करा जाइछि. Otherwise GSLV तो हमरो geosynchronous orbit को पठेया पई use करू हमें, but first time sun synchronous orbit को पठा जाइछि using the GSLV. Okay, so this was all about your NISAR. NISAR orbits Earth at an altitude of 747 km. माने अर्थ रु 747 km दूर रे पूरा ऑर्बिट करिवो. को ऑर्बिट रे? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रे. दिस ऑर्बिट ensures the satellite passes over specific location at roughly the same local time, which is crucial for consistent data collection. हैला local time सहित align करिकि से हमको डाटा दबो. अदरवाइज काली रो डाटा आज मिलले हमको किछि फरक पड़िबनी. 4 घंटा रो डाटा एबे माने 4 घंटा पूर्व रो डाटा 4 घंटा परे मिलले किछि काम को हबनी. हैला तो से सब हां एबे मते वर्ड मन पड़ला डिजास्टर किछि डिजास्टर हबा पूर्वरु हमको इन्फॉर्मेशन मिली जिबारो कैपेबिलिटीज अछि. एंड एटा केते टाइम पई मिशन रहिबो सैटेलाइट सिटी प्लान करा हेछि 5 वर्ष जाय प्लान करिछि कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रे से रहि कि हमको डाटा प्रोवाइड करिवो. ओके हाँ ये लिखा भी है से वर्ड यार. डिजास्टर मैनेजमेंट को हेल्प करिवो ऑब्वियसली बाय डिटेक्टिंग स्मॉल शिफ्ट्स इन द अर्थ सरफेस. सो जो हमरो एल बैंड रडार थिला राइट जोटा हमें नासा जोटा हमरो डिजाइन करथिला एल बैंड रडार से हमरो ग्राउंड डिफॉर्मेशन को स्टडी करिवो कहितली. सो जदि ग्राउंड डिफॉर्मेशन को स्टडी करिवो तो किछि भी शिफ्ट होछि अर्थ सरफेस रे सेटा भी से डिटेक्ट करि परिवो. एंड निसार कैन प्रोवाइड अर्ली वार्निंग for potential earthquake, landslide, helping relief agencies to know where to send the aid. चलो तो recently हमें देखु छु के एते फ्लैश फ्लड्स होची, क्लाउड बर्स्ट होची, लैंडस्लाइड होची, सब जगह रे फ्लड्स होची. तो एटा हबा पूर्वरु अर्थक्वेक होची. कामचटका अर्थक्वेक रिसेंटली इतला रशिया रे बहुत हाई मैग्नीट्यूड रो. तो एटा हबा पूर्वरु हमको टिके डाटा मिल जिवो हैला सो दैट रिलीफ हमें पठे परिबा और इवाक्यूएशन पे भी हेल्प हे परिबो. क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग निसार ट्रैक्स हाउ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स आर मूविंग एंड मेल्टिंग. केमिति ग्लेशियर केमिति मूव होचंदी केमिति मेल्ट होचंदी. सो ये सब जानले हमर कोन एंड से माने केमिति हमर सी लेवल को इंपैक्ट करचंती. ये सब जानले हमें क्लाइमेट चेंज टा को मॉनिटर करि परिबा. इट आल्सो मॉनिटर चेंजेस इन द फॉरेस्ट and other plant life, helping to understand the carbon cycle and how well ecosystems are doing. Okay, resource mapping and management, information related to soil moisture, surface water resources, ये सब information को radar provide करिवो. S band radar which is developed by ISRO. तो ए माने S band radar जो ये सब information provide करिवो, so it will help कहाँ को, it will help the farmers to make better decisions about irrigation and crop planning, right? And all this data from NISAR will be freely available. हैला सब डाटा हम पे freely available हबो 1 to 2 days after observation and within hours in case of emergency. emergency हला कि natural disaster हबार अछि किछि घंटा भितरे हमको सब डाटा freely available रहिबो हैला. otherwise 1 to 2 days रे सब डाटा मिलुथबो regular intervals. Clear? So it is a very beneficial satellite. Can you answer this question now? Since we have read about NISAR, can you answer this question now? It is a joint Earth observation mission between India and Russia. चलो ये ठीक भूल गया. India and USA, ISRO and NASA रो collaborative project data. The data collected by NISAR will be freely available globally. This is right. As एबेही हमें just पढ़िलु कि से डाटा हम पे freely available अछि हैला. So एटा तो भूल गेला. Only 2 is the correct answer. Okay. Now can you tell me when is the National Space Day celebrated? If you know, if you do not know, एटी लिखा है जी. National Space Day is celebrated in August
2023. Okay, 2025 in 2025 कौन पे मैं लिखिली because एटा सेकंड नेशनल स्पेस डे इंडिया रो 2024 रु आमे एटा मनेबा स्टार्ट करलु आगुर केबे भी मनौ नथिलु सो आफ्टर द चंद्रयान 3 आमे नेशनल ताको कमेमोरेट करिया पे ताको रिमेंबर करिया पे आमे अगस्त 23 रे आमे नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करूछु to honor the milestone achievement of Chandrayaan 3's successful soft landing on the moon's south pole on August 23, 2023. So August 2023, 23rd August 2023 रे proper आमे soft landing करी पारथिलु Chandrayaan 3 रे तो ताको honor करिया पे आमे से डे रे नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करू एंड एटा स्टार्ट हेछि केबे 2024 रु तो ए वर्ष हमें सेलिब्रेट कलु द सेकंड नेशनल स्पेस डे एंड ए वर्ष रो तमरो थीम थिला एटा आर्यभट्ट टू गगनयान ancient wisdom to infinite possibilities. So in this entire lecture series we have learnt about starting from Aryabhatta our first satellite and Aryabhatta pare out gote satellite tamara asthila Rohini. I think I missed it. Rohini रे कोन हेतला आर्यभट्ट रे आमे देखिथिलु कि सोवियत यूनियन रो सेठू आमे लॉन्च करथिलु बट इसरो रो आमे आई थिंक फर्स्ट रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च करथिलु सो आर्यभट्ट टू रोहिणी टू भास्कर 1 भास्कर 2 जेति की भी इनसार सैटेलाइट देन वी मंगलयान चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 आदित्य L1 गगनयान everything we have completed in this entire lecture series. Okay, series तो कहि परबिनी तीनटा पार्ट्स रे मु रेकॉर्ड करली बट इट इज नाउ अवेलेबल टू यू इन वन पार्ट तो आम तुमको आ कोठी भी जीवा को पड़िबनी फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी और फॉर द इंपोर्टेंट मिशंस ऑफ इसरो हैला तो बेसिक रो में स्टार्ट करलु ऑर्बिट विषय रे पढिलु सैटेलाइट विषय रे पढिलु जीएसएलवी विषय रे पढिलु पीएसएलवी विषय रे पढिलु एंड इवेंचुअली वी कवर्ड ऑल द इंपोर्टेंट मिशंस ऑफ इसरो ओके सो आई होप and that is what the theme says Aryabhatta to Gaganyaan in India's infinite possibilities. So we also covered Aryabhatta to Gaganyaan सब जिनसा हमें cover up कलु एक गोटे lecture रे. Okay, so कोठु start हेतला इसरो कौन केमिति everything is covered in this lecture. I hope you enjoyed the series or series in you enjoyed this marathon video हैला लंबा तो हेथिबो वीडियो निहाती तो आपको फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखिलो सेति पय थैंक यू एंड प्लीज लाइक करिवो शेयर करिवो जो माने भी प्रिपेयर करू छथि तमरो जे कोनोसी एग्जाम रे जोथरे कि एमतिया क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी सेतरे अछि सेमान को पयटा निहाती बेनिफिशियल हबो ओके बिकॉज़ आई हैव ट्राइड टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट फॉर यू सो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and nihati share to karibo jahaku darkar ta okay thank you and we will meet in the next video thank you